Assalamu alaikum everyone. So let us start. आज हमारा जो सिलसिला है वो ये है कि हम तकरीबन सारा सिलेबस कवर करेंगे और जहाँ जहाँ पर जितना पॉसिबल है हम लोग जो है वो उसके पास पेपर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं, द सिलेबस दैट वी आर गोइंग टू कवर। So basically, there are 6 chapters that we are going to cover. देखें, हमारा आज है पेपर 1। ठीक है, आपके पास जो ड्यूरेशन होगी पेपर की वो होगी 1 hour 45 minutes। और इसकी जो वेटेज है आपके पूरे उसमें पेपर में वो दैट इज 50%। सो द पेपर विल बी ऑफ 75 मार्क्स। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होंगे और शॉर्ट आंसर्स होंगे। मतलब हमारे पास डिटेल्ड आंसर्स यहाँ पर नहीं है। और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि हमारे पास ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस, टिक करने वाले क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस, इस तरह के चॉइसेस, मल्टीपल चॉइसेस, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। और क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन टॉपिक 1 to 6 of the subject content. That means that it will be from chapter 1 to 6. All right, and you would have no choice. There will be no calculators permitted और externally assessed का मतलब ये है कि आपका पेपर जो है वो इंग्लैंड में चेक होगा। Now calculators permitted नहीं है। चैप्टर 1 में हमारे पास कैलकुलेशंस हैं, फाइल साइज कैलकुलेशंस हैं और इस तरीके से दूसरी कैलकुलेशंस भी हमारे पास होंगी। सो यू वुड हैव टू अंडरस्टैंड दिस थॉरली कि बगैर कैलकुलेटर के आपको जीबीज तक, 2-3 जीबीज तक कैलकुलेट करना होगा। ऑलराइट, सो मेंटली इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएं। So let us start from chapter 1, डेटा रिप्रेजेंटेशन। अच्छा देखें, डेटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि डेटा की जितनी भी फॉर्म्स हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास जो है वो साउंड की फॉर्म में भी डाटा है, हमारे पास जो है वो इमेज की फॉर्म में भी डाटा है, हमारे पास टेक्स्ट फाइल की फॉर्म में भी डाटा है, नंबर्स की फॉर्म में भी डाटा है। वट एवर द फॉर्म ऑफ डाटा दैट might be there is included in this chapter. Okay, and I think that a good part, about 15 to 20% of the paper will be from this one chapter because this is the largest chapter. Okay, so first part is number systems. So yeah, understand how and why many computers use binary to represent all forms of data. This is very important question. सिंपली तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जो भी कंप्यूटर्स हैं दे आर मेड अप ऑफ लॉजिक सर्किट्स। ओके, जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर होता है वो बना हुआ होता है लॉजिक सर्किट से और उसको हम कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSIC। Integrated circuits का मतलब क्या है कि there are thousands and millions of circuits which are combined to form this IC, and then from this IC we have large scale integration, means there will be an enormous number of ICs which are basically there,
and they combinedly form the microprocessor. So that is very large scale integrated circuit. So it is a circuit. Circuit is made up of gates, and gates can only take zeros and ones as their input. So since only 0 and 1 is the input, it means that whatever that you like your computer to do for you should be in the form of zeros and ones, and that said it is binary. So you should understand that whatever the data that computer is processing, no matter how it seems to you, how it appears to you, what sort of data is that, internally it is in binary form. Okay? Internally it is in binary form. So it says any form of data needs to be converted to binary to be processed by a computer. Data is processed using logic gates and stored in registers. All right. So what are registers? ये हम chapter 3 में पढ़ेंगे hardware के अंदर. लेकिन registers are internal storages inside the computer, microprocessor. Okay. Now, understand the denary, binary, and hexadecimal number systems. Denary is base 10 number system, binary base 2 number system, hexadecimal is base 16 number system. So let's build upon it. इसको समझने की कोशिश करते हैं. अच्छा देखें, यहाँ पर हमारी एक बिल्कुल थॉरो अंडरस्टैंडिंग है कि हम जो है वो यहाँ पे पहली बार पढ़ने नहीं जा रहे, हम यहाँ पर जो है वो रिवाइज करने जा रहे हैं. ठीक है. सो इसके लिए ध्यान में रखिएगा, डू नॉट एक्सपेक्ट मी टू स्पून फीड यू. हमारा यहाँ पे पर्पस जो है कि वो ये है कि हम एग्जाम से पहले जो रिविजन्स करते हैं वो सारी की सारी रिविजन्स हम जो है वो मिल के कर लें. ठीक है ना. हम यहाँ पे पहली बार पढ़ने नहीं जा रहे. All right.
Okay. Now, so binary representation of data. Computers use binary base 2 to represent all forms of data because they rely on electrical signals which can have only two states, 1 for on and 0 for off. Data is being processed using logic gates and stored in the registers. Okay. Now, what we are going to do about it, we will learn that how to turn every sort of data basically into binary form. Okay. So denary, base 10 number system, base 2 number system, binary, base 16 number system, hex, ये हम जो है वो कन्वर्ट करने जा रहे हैं, लर्न भी करेंगे इनको हम. So basically आप देखें बेस 10 ये ह्यूमंस का नंबर सिस्टम है. बेस 10 का क्या मतलब है? यूनिक representations for any number system digits. तो हमारे पास जो यूनिक representations हैं वो ये हैं. अगर हम इनका टोटल काउंट देखें तो ये बेसिकली हमारे पास बनेगा व्हाट? हमारे पास ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. That is why we call it base 10. All right. So base 10 means that whatever that we are going to treat would have this base 10 into it. अब आप देखें आपके पास कोई भी नंबर है, लेट्स से आपके पास नंबर है 2536. ये जो चारों डिजिट्स हैं 1 2 3 4, ये चारों के चारों आउट ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशंस आए हैं हमारे पास. ठीक हो गया? ये हमारे पास चारों के चारों इस रिप्रेजेंटेशंस के अंदर से आए. अब ये भी बेस 10 है. ये भी बेस 10 है, ये भी बेस 10 है, ये भी बेस 10 है. अब बेसिकली होता क्या है कि राइट से लेफ्ट हम लोग यहां पर इनकी पोजीशंस अप्लाई करते हैं. अच्छा आप देख लें, क्योंकि बेस 10 स्टार्ट 0 से ही होता है और दुनिया का हर नंबर सिस्टम अगर हम कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो 0 से ही स्टार्ट होता है. लेकिन हम being human, when we start counting, we count from 1. So there will always remain a confusion as computer science student. Initially वो होता क्या है कि जब तक हम लोग जो है वो आदी नहीं होते हैं वो कंफ्यूज ही रहते हैं. तो जब हम कंप्यूटर के अंदर काउंटिंग शुरू करेंगे एरे की पोजीशंस की या इस तरीके से हमारे पास जो डिजिट की पोजीशंस है उनकी, तो हम 0 से ही करेंगे, लेकिन उसको मानेंगे पहला. यानी कि ये 4 डिजिट हैं, लेकिन ये कौन सा डिजिट है? डिजिट 0, डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 3 है 4. जब हम काउंट बताते हैं तो काउंट हम एक्चुअल टर्म्स, ह्यूमन टर्म्स में बताते हैं, लेकिन जब काउंट का मतलब हो गया टोटल काउंट, लेकिन जब हम काउंट करते हैं तो हम जो है वो फिर उसको बताते हैं 0 से, 0 1 2 3. अब अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो इट विल गेट रिजॉल्व टू एनीथिंग टू पावर 0 इज 1. ये 10 पे रिजॉल्व होगा. ये हम इसको इवेल्युएट कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं इसको. ये 100 पे होगा और ये 1000 पे होगा. तो अब बेसिकली होता क्या है कि हर डिजिट
अपने जो रिजॉल्व होने के बाद वैल्यू आ रही है उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो बेसिकली हम इसको कहेंगे कि ये हमारा डिजिट है, इसको हम कहेंगे ये हमारी पोजीशन है उस डिजिट की, ये हम कहेंगे कि ये हमारी बेस है, और ये जो वैल्यूज बन रही हैं इसको हम कहेंगे ये हमारी वर्थ है। तो बेसिकली हर डिजिट अपनी वर्थ के साथ मल्टीप्लाई होता है। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 2 इंटू 1000 होगा, 5 इंटू 100 होगा, 3 इंटू 10 होगा, 6 इंटू 1 होगा, और इनके जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपस में ऐड हो जाएंगे। इनके जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपस में ऐड हो जाएंगे, एंड दैट विल बी अगेन 2 5 3 6। तो अब हमें यहाँ पे दो चार चीजें ऑब्जर्व करनी है, क्योंकि हमारी इनपुट नंबर सिस्टम डेनरी था तो इसलिए आउटपुट भी डेनरी में ही आई है। जो हमको हमारे सिलेबस में पढ़ाते हैं ना, वो इसलिए पढ़ाते हैं कि हम हर चीज को कन्वर्ट कर सके ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, यानी कि हम हर चीज को कन्वर्ट कर सकें डेनरी में। तो हम कुछ भी कन्वर्ट पढ़ रहे होंगे हम उसको कन्वर्ट डेनरी में ही करेंगे। यानी कि हर कन्वर्जन का जो रिजल्ट होगा वो डेनरी में आएगा। अच्छा जी, अब ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमने ये क्यों पढ़ा? हमने ये इसलिए पढ़ा कि यही बेसिक्स हैं, ये हर नंबर सिस्टम पे अप्लाई होती हैं। तो आपके पास अगर एक नंबर है 35,349, तो इसका मतलब ये जो यूनिट है वो इसलिए यूनिट है कि ये वर्थ इसकी 1 है, ये 10 इसलिए कि इसकी वर्थ 10 है, इसकी वर्थ 100 है, इसकी वर्थ 1000 है, इसकी वर्थ 10,000 है। ये वर्थ कैसे डिवाइस हुई? बिकॉज ऑफ द बेस 10, बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ इट। सो अगर ये बेस 10 है और इसकी पोजीशन राइट से लेफ्ट लेके चलें तो ये 10 टू पावर 0 होगा, 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 4। सो यूनिट 10, 100, 1000 एंड 10,000, और फिर ये आपस में सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे हर डिजिट उसके साथ। तो अब यहाँ पे आपने ये तो समझ लिया इसका स्ट्रक्चर। अब इसको एक चीज आपको और जहन में रखनी है, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम बात करते हैं ना नंबर की, तो नंबर की जब हम बात करते हैं तो नंबर एक सिंगल डिजिट भी हो सकता है। क्योंकि नंबर अगर मैं बोलूं भाई ये छोटा सा बच्चा है, इसकी उम्र क्या है, कोई कहता है 6 साल, तो इसका मतलब वो 6 सिंगल डिजिट नंबर है। लेकिन अगर कोई एक बड़ा सा बच्चा है आप लोगों के जैसा, इसकी उम्र क्या है, कोई कहता है कि इसकी उम्र है 17 साल, 16 साल, 15 साल, तो इसका मतलब ये है मल्टीपल डिजिट से भी हो सकता है। तो नंबर इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिंगल डिजिट और मल्टीपल डिजिट, ठीक है। और डिजिट itself इज ऑलवेज अ सिंगल डिजिट, ठीक हो गया। अच्छा, जब हम डेनरी नंबर सिस्टम में डिजिट की बात करते हैं तो हमारे पास ये सारे के सारे डिजिट्स हैं, याद रखिएगा, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं बेस 2 पे। बेस 2 ह्यूमंस का नंबर नहीं है, ये बेस 2 जो है ये हमारे पास कंप्यूटर्स का नंबर है। ये क्यों कंप्यूटर्स का नंबर है? ये इसलिए कंप्यूटर्स का नंबर है कि basically computers are made up of logic circuits. Logic circuits are made up of gates, and gates are taking input in the form of zeros and ones. That is why it is computers number system. So what you have to do is to learn how to convert everything from every shape to binary and represent to humans the way they understand it. यानी कि वापस उसको फिर उसी शक्ल में लेकर के आना पड़ेगा। Alright, तो अब हम आ जाते हैं, अब यहां पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, you need to understand कि base 2 is the heart, इसको हम कहते हैं बाइनरी।
जिस तरह हम इसको कहते हैं ना डेनरी, डेनरी 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 मीन्स 10, बेस 10 के ऊपर। इसी तरीके से बाइनरी, बाय मीन्स 2, बेस 2 के ऊपर। ये एट द हार्ट है। इसी बेस 2 से हम बेस 10 में जाएंगे और इसी बेस 2 से हम बेस 16 में जाएंगे। आप डायरेक्ट बेस 10 से बेस 16 में भी जा सकते हैं, दैट्स नॉट द बिग डील, बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग। सो इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट डजंट मैटर, बट हम यहाँ पे उसको डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं। नो मेथड इज रॉन्ग मेथड, every method is correct method, everyone conceives things differently, people are comfortable with different ways. So I believe, because of my experience, that if you are able to put this base 2 binary in the middle, तो फिर आपको ये फायदा हो जाता है कि आपकी कन्वर्जन्स का जो रेट है इन टर्म्स ऑफ स्पीड रेट वो बढ़ जाता है। ठीक है, आपके पास जो कन्वर्जन का रेट होगा वो बेहतर हो जाएगा, तेज हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब शुरू करते हैं। अच्छा, अब देखें पहली लिमिटेशन, क्योंकि देखें जब हम ह्यूमन फॉर्म से निकलते हैं ना, ह्यूमन फॉर्म की हिस्ट्री बड़ी लंबी चौड़ी है। नंबर्स इवॉल्व हुए हैं, अपने अपने तरीके से बने हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स से ह्यूमंस मौजूद हैं। ठीक है ना, तो ये इवॉल्व होता रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, सो वी अंडरस्टैंड इट थॉरली। लेकिन कंप्यूटर साइंस के अंदर ना अभी चीजें इतनी पुरानी नहीं है, तो लिमिटेशंस हैं। ठीक है, ये आपके पास आपके सिलेबस में लिमिटेशन रखी गई है कि जो भी बाइनरी नंबर होगा दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड आइदर इन 8 बिट्स और मल्टीपल्स ऑफ 8 बिट्स। यानी कि आप हर नंबर को 8 बिट्स में, 16 बिट्स में, 24 बिट्स में, ठीक है, या 32 बिट्स में दिखाएंगे। आप 6 बिट्स में, 12 बिट्स में, 9 बिट्स में, खासतौर पे जब हम एडिशंस वगैरह कर रहे होंगे उस वक्त आपके पास ये लिमिटेशन अप्लाई होनी जरूरी है। ठीक हो गया। क्योंकि इन लिमिटेशंस को एक्सरसाइज करना जरूरी होता है, तो इट इज एक्चुअली नेसेसरी कि हम उनको याद रखें। तो याद रखने के लिए इन लिमिटेशंस के साइजेस को या लिमिटेशंस को नाम दे दिया गया है। जैसे जो पहली बेसिक नीड है बाइनरी की, वो ये है कि एवरी बाइनरी नंबर शुड बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट्स। सो अब पहले हम बात कर लेते हैं बेस 2 पे। बेस 2 का मतलब क्या हुआ? बेस 2 का मतलब हो गया कि हम बात कर रहे हैं बाइनरी, BINARY। तो बाय मीन्स व्हाट? 2। व्हाट 2? 2 डिजिट्स, ओनली 2 डिजिट्स।
तो इन 2 डिजिट्स को हम कहते हैं बाइनरी डिजिट्स। जब सिर्फ डिजिट्स होता है तो इसका मतलब होता है बाइनरी। तो जब हम बाइनरी डिजिट्स में से BI यहां से और T यहां से निकालते हैं तो वो बन जाता है बिट। तो बिट एन एब्रिविएशन ऑफ अ सिंगल बेस 2 बाइनरी डिजिट, इसको हम कहते हैं बिट। ठीक हो गया? अच्छा अच्छा, अब ये जो बिट है 0 1, ये हर दुनिया की चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। दुनिया के हर शेप को, हर डेटा को, हर फॉर्म ऑफ इनपुट को, हर फॉर्म ऑफ आउटपुट को, प्रोसेसिंग को, प्रोग्राम्स को, हर चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, पहले तो आप इसको समझें यहां पर। अब आप देखें आपके पास ये जो एक ये पोजीशन है 5 की, इस पोजीशन पे आपके पास 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है। यानी कि हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 10 पॉसिबिलिटीज। 10 पॉसिबिलिटीज हो गई। क्या मतलब हुआ इन 10 पॉसिबिलिटीज का? इन 10 पॉसिबिलिटीज का मतलब ये हुआ कि आपके पास हर पोजीशन पे, हर डिजिट पे एक नंबर के अंदर 10 पॉसिबिलिटीज। क्यों 10 पॉसिबिलिटीज हैं? क्योंकि आपके पास यहाँ पे 10 डिजिट्स हैं। तो इस पोजीशन पे, जो कि पोजीशन नंबर 3 है राइट साइड से, इसमें आप 0 से 9 तक कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज हैं? हमारे पास सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं हर पोजीशन पे, और नंबर ऑफ पोजीशंस भी हमारी मिनिमम 8 है जिनमें हमें इनको रिप्रेजेंट करना है। तो अब फर्ज करें आपके पास एक नंबर है, ये नंबर है। आपके पास इस जगह पे क्या, कितनी पोजीशंस होंगी? 0 या 1। आपके पास 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसको आप जहन में रखिएगा कि आपके पास सिर्फ यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है, 0 या 1। यही इस पूरे सिस्टम का जो इसकी सिंप्लिसिटी है, टू ब्रिंग एवरीथिंग डाउन टू 0 1, इज बेसिकली हेल्पिंग अस टू इम्प्रूव कंप्यूटर टू दिस लेवल। अब ये जाके खत्म होगा जब हमारे पास जो है वो एक और किस्म की कंप्यूटर साइंस जो है वो आएगी, जो कि आना शुरू हो गई, अभी मेन स्ट्रीम में नहीं है ना वो डेवलपमेंट में। उसको हम कहते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग। उसमें फिर ये 0 1 तो रहेंगे, लेकिन इनकी जो 2 पॉसिबिलिटीज हैं वो चेंज हो जाएंगी मजीद 2 पॉसिबिलिटीज के साथ। तो हमारे पास फिर वहां क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर ये पॉसिबिलिटीज जो है वो 2 से बढ़ के 4 हो सकती हैं, और वो भी प्री डिसाइडेड नहीं होती। तो वो एक डिफरेंट बॉल गेम है। उस पे फिर हो सकता है कि आप लोग तो नहीं, लेकिन शायद आपके बच्चे वो पढ़ रहे होंगे। एनीवेज, अब हमारे पास हर पोजीशन पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं। जिस तरह यहां पर हमने 10 लिखा था, तो वहां पर 10 पॉसिबिलिटीज थी, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है? अच्छा, इन 2 पॉसिबिलिटीज की फिर पोजीशनिंग तो वैसे ही होगी। ठीक हो गया? तो पोजीशनिंग आपकी वैसे ही होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7। और जब आप इसके साथ इसको रिजॉल्व करेंगे, इसको इवैल्यूएट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सो यहाँ पे आपको फिर मिलेगा यूनिट 2 4 8 16 32 64 एंड 128। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पर बेस 10 थी, तो ये तो एनीथिंग टू पावर 0 तो होता है हमेशा 1। तो 1 इंटू 10 हुआ 10, फिर 10 इंटू 10 हुआ 100, फिर 100 इंटू 10 हुआ 1000। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी 2 टू पावर 0 इज 1, लेकिन क्योंकि बेस 2 है तो 1 इंटू 2, 2 इंटू
2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16 16 इंटू 2 32। आप जिस तरीके से भी याद रखें, लेकिन क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि 1 2 4 8 16 32 64 128 इज लाइक यूनिट 100 यूनिट 10 100,000 10,000 in denary. And number two, that you should basically you must be able to revise these 1 2 4 8 16 32 64 128 anytime in any condition. Even if you are sleeping, someone asks you, you should answer that way. उसको भूलना नहीं है. अच्छा, अब आ गए आपके पास 1 2 4 8 16 32 64 128. अच्छा, अब दोबारा हम उस पॉसिबिलिटीज पे बात करते हैं. अब हमारे पास यहाँ पे देखें 0 to 9 इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं. ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो 100 की वर्थ है ये 0 से लेके 9 तक किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई हो सकती है. तो 0 से तो मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी, 1 से होगी तो 100 होगी, 2 से होगी तो 200 होगी, 3 से होगी तो 300 होगी. यानी कि इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर जो इसका फाइनल रिजल्ट बनने जा रहा है उसके अंदर 10 पॉसिबिलिटीज हैं. यहाँ पे ऑन कंट्ररी अगर आप देखें तो हर एक डिजिट की पोजीशन पे क्योंकि सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, तो उस वो डिजिट जब अपनी वर्थ के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास अब सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हैं. एक कि वो डिजिट खत्म हो जाएगा क्योंकि वहां पे 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है. दो, वो डिजिट क्योंकि वो वर्थ 1 होगा डिजिट तो वो उस अपनी वर्थ को मेंटेन कर लेगा. यानी कि 0 पे रखे हुए जितने भी वर्थ हैं सब खत्म हो जाएंगे 0 से मल्टीप्लाई होकर, और 1 पे रखे हुए जितने भी वर्थ हैं वो रिटेन कर जाएंगे. तो इसका मतलब ये है कि इस लेवल से नीचे आपके पास सिर्फ यहाँ पे 16 आएगा और 4 आएगा, और बाकी जो होंगे वो 0 की वजह से कैंसिल आउट या व्हाटएवर अपनी वर्थ, अपनी पोजिशनल वर्थ को खो देंगे, खत्म हो जाएगा. 1 वाले रिटेन कर जाएंगे. अब आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका ये फाइनल रिजल्ट आएगा. ये जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये है, और ये रिजल्ट आपका है डेनरी में. यानी कि अगर हम देखें बाइनरी तो हम उसको जहन में डेनरी की तरह ही ट्रीट कर रहे होंगे. ठीक है, अब फर्क क्या हुआ कि वहां पे जो डेनरी था ये बेस 10 है. बेस 10 ऐसे लिखते हैं. अब ये ब्रैकेट लगे ना लगे लेकिन ये बेस ऐसे सब स्क्रिप्ट के तौर पे ही आती है. तो ये जो होगा ये बाइनरी में इस तरह से शो होगा. ठीक हो गया. तो ये अब आपको यहाँ पे क्या समझना है, देखें ये दो अलग अलग सिस्टम है. ये 20 बेस 10 में है और ये 20 बेस 2 में है. दोनों की शक्लें अलग अलग हैं लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है. सो यहां से you need to understand कि value remains same, shape changes. All right. So to every number system, whatever the value that remains same और shape इसकी change हो जाती है. ठीक हो गया. तो अब अगर आप देखें आप कोई सा भी नंबर ले लें उसकी अब आपको दो चीजें सीखनी है यहाँ पर. नंबर 1, how to convert base 2 to base 10 and how to convert base 10 to base 2. तो हम बेसिकली base 2 से base 10 की कन्वर्जन और base 10 से base 2 की कन्वर्जन पर आते हैं. पहले हम आ जाते हैं base 2 से base 10 की कन्वर्जन. अब आपके पास यहां पर वर्थ लगा लेते हैं हम सबसे पहले. यूनिट 2 4 8 16 32 64 128. ठीक हो गया. और इस साइड पे हम बनाते हैं डेनरी नंबर्स.
और इस साइड पे हम बनाएंगे आगे चल के हेक्साडेसिमल नंबर्स। बीच में क्योंकि हमने ये रूल यहाँ पे डिसाइड कर लिया था कि हम बीच के अंदर जो है वो बेस 2 रखेंगे और बेस 10 और बेस 16 उससे डेवलप करेंगे। तो अगर हमें डेनरी से हेक्साडेसिमल में भी आना है तो डेनरी से हम बेस 2 में जाएंगे और बेस 2 से हम हेक्साडेसिमल में चले जाएंगे। तो डेनरी इज बेसिकली बेस 10, ये बेस 2 हो गया बाइनरी, और यहाँ पे हमारे पास बेस 16 हो गया हेक्साडेसिमल। सो आ जाए अब हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जो कि हमें गिवन होंगे, तो वो नंबर्स को हम पिक कर लेते हैं। अच्छा, अब कन्वर्जन की कुछ बातें हैं जो हमें समझ लेनी है। देखें, कन्वर्जन इज द पार्ट ऑफ एवरी डील, कन्वर्जन इज ऑलवेज अपियरिंग, कन्वर्जन ने कहीं नहीं जाना। तो हम बेस 2 से बेस 10 में पहले हम देख रहे हैं, हमने बेस 2 के यहाँ पे नंबर्स देखे कितने सारे लिखे, इसको हम बेस 10 में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो आप देखें कैसे कन्वर्ट होता है। अब आपको सिंपली ये करना है कि पहले आप ये वाला नंबर ले लें। अब आपको मैं बता चुका हूं कि हर वर्थ 0 पे कैंसिल हो जाती है और 1 पे रिटेन करती है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू all this hassle, all you have to do is to add up those words which have 1 underneath them. Okay, so 64 plus 32, 96 plus 4, 100. So this is denary 100. Okay, this is denary 100. अच्छा जी, अब आप इधर आ जाए। 32 plus 16, 48 plus 2, this is 50. अब आप इधर आ जाए। 128 plus 64, 192 plus 8, 200. ऑलराइट। अच्छा, अब देखें यहां पर इस पर्टिकुलर केस में अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। Either you add 32, 16, 48 plus 856 plus 464 plus 266 plus 1 62 plus 163। आप या तो इस तरह कर लें, ठीक है ना, 32, 16, 48, 56, 60, 62, 63 ऐसे कर लें। या दूसरा तरीका इसका ये है कि अब जब आप ये देखें कि सारे वंस जो हैं वो राइट से क्लब हुए हुए हैं, राइट से क्लब हुए हुए मतलब इनके बीच में कोई जीरो नहीं है, तो राइट से आप देखें तो जो भी नेक्स्ट वर्थ आ रही होगी जहां से जीरो स्टार्ट हो रहा है वो 64 है ना, तो ये होगा आंसर इसका -1, 63। सो व्हेन ऑल द वंस आर क्लब्ड फ्रॉम द राइट, देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे चल के दसियों बार इस्तेमाल करेंगे। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो व्हेन ऑल द वंस आर क्लब्ड फ्रॉम द राइट, so whatever the next worth after the end of ones, whatever the next worth, subtract 1 from it, and there we go. So this is basically 63 and this is basically 15। देखें अगली वर्थ कौन सी है, 16 minus 1, 15 हो गया। अब आप उसको खुद भी चेक कर सकते हैं, 8 and 4, 12 and 2, 14 and 1, 15। So this is basically 63, this is basically 15। all right, and the last thing, if you see, अगर हम सारे वंस ले लें,
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम, अब आप देखें सारे वंस हैं, हम फिक्टिशियसली अगर यहाँ पे 128 से ऊपर जाएंगे तो क्या बनेगा 256। अब ये सारे वन जो हैं वो राइट से क्लब हुए हुए हैं, और 128 के बाद अगली वर्थ कौन सी आ रही है, 128 2 आर 256, तो 256 माइनस 1 क्या बना 255, तो ये नंबर हो गया 255. So this number is basically the highest number that you can save. So अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो ऐड करना शुरू कर देंगे 128 प्लस 64 192 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1, दिस इज 245, इस तरह आप कर ले। या दूसरा तरीका ये है कि आप जहन में ही सोचें यार अगर ये सारे वंस होते तो ये 255 होता, तो इसका मतलब है 8 और 2 पे 0 है, इसका मतलब 255 माइनस 10 है ये 8 and 2 is what 10, 255 minus 10, so this is 245. So when you have got more ones and less zeros, means a few zeros, means couple of zeros or maybe 3. So in that case, instead of adding all the ones, what you do, you add all the zeros words and subtract that from 255. So it's up to you. How would you do that? Now, let's talk about converting from denary to binary. ये तो अभी तक जो कुछ भी हम discuss कर रहे थे, that was basically binary to denary. अब हम denary to binary पे चले जाते हैं। अब देखें डेनरी टू बाइनरी पे हम चले जाते हैं। लेट्स से हमारे पास पहले है 75, फिर हमारे पास है 150, फिर हमारे पास है 125। ये किस तरह होगा? अब इसका आसान सा तरीका ये है कि आप जो हैं वो सिंपली लेफ्ट से राइट जाएं, लेफ्ट से राइट जाएं, और अगर ये वर्थ जो है वो आपके रिक्वायर्ड नंबर से छोटी या बराबर है तो इसको इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते चले जाएं। अब ऑब्वियसली 128 इज ग्रेटर देन 75, तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब 64 नहीं है तो हम क्या करेंगे कि 75 में से 64 को माइनस कर देंगे बाय हैविंग इट। अब 64 को हमने माइनस कर दिया, बाकी रह गए हमारे पास 11। तो 32 is greater than 11, 16 is greater than 11, 8 is less than or equal to 11. So we have taken up 8. अब what we are left with 3. So 4 is greater than 3, 2 is not greater than 3. So हमने 3 में से 2 निकाल दिया, अब हमारे पास 1 रह गया, फिर हमने 1 में से 1 निकाल दिया। अगर आप इसको क्रॉस चेक करें तो दिस इज बेसिकली 64 प्लस 8, 72 प्लस 2 प्लस 1, तो ये देखें 75 बन रहा है, ठीक है। अब यही हम दोबारा अप्लाई करते हैं। सो वी हैव गॉट 150, so 128 is less than or equal to 150, so 150 minus 128 आपने किया, you are left with 22. 64 is bigger than 22, so cancel it out. 32 is bigger than 32, then cancel it out, and then we have got what 16. So 16 is less than 22, तो हमने 16 को माइनस कर दिया, we are left with 6. 8 is greater than 6, 4 is not, तो हमने 6 में से 4 को माइनस कर दिया, we are left with 2. 2 minus 2 is now 0, and there we go. तो अब देखें, अब हम इसको ऐड करके देख लेते हैं। 150 प्लस 16, 166 प्लस 4 प्लस 2, sorry, 128 plus 16 plus 4 or plus 2, 150. Okay, 128 plus 16 is 144. 144 plus 4 is 148 plus 2 is 150. Okay, so next 125. 128 is bigger than 125, so cancel it out. 64 is not,
So 125 minus 64 is 61, minus 32, 125 minus 64 is 61, minus 32 is 29, minus 16 is 13, minus 8 is 5, minus 4 is 1. So 2 is greater than 4, so sorry 1, तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया और फिर हमारे पास यहाँ पे आ गया 1. Now let's cross check it. 64 plus 32, 64 plus 32, 96, plus 16, 112, plus 8, 120, plus 4, 124, plus 1 is 125. Okay, so this is 125. So this is a way of doing from denary to binary. Yeah, I know that people are using that method where we have got then we use 2 to divide it and we keep leftover thing, or there is another way, putting it another way, and let's say that 125 हमने 2 से divide किया. So इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, but this is not desirable way. This is basically a जुगाड़, a trick that eventually would misfire, because whatever that we have just learned will fit in every other topic which requires binary conversion later. Okay, so अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं range की. What is range? देखें, अब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं रेंज का, दिस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू अंडरस्टूड वेल. रेंज को हम आगे चल के बार बार इस्तेमाल करेंगे. रेंज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. रेंज मींस हाईएस्ट particularly and lowest number that can be accommodated in the given number of bit places. All right. What does that mean? It means that if you have got 4 bits available, what is the largest number that you can save? अच्छा, small number तो आपको पता है कि lowest number जो है वो smallest number जो है वो हमेशा 0 ही होगा. फिलहाल जब तक हम नेगेटिव नंबर्स नहीं पढ़ते. तो अब आप देखें ये आपके पास 4 बिट्स हैं. तो 4 बिट्स का मतलब क्या हुआ? 4 बिट्स का मतलब हो गया 2 की पावर 4. 2 is the base, 4 is the number of bits. तो 2 की पावर 4 क्या बनेगी? 16. 2 की पावर 4 का मतलब है 2 into 2, 4, 2 is 8, 2 is 16. But 16 is the total number of numbers that you would be accommodating. So the lowest number will be 0. The highest number will be 15. Mind it. All right, 16 is the total number of number that you can accommodate. Lowest number जो worth में आप डाल सकते हैं वो 0 है और highest number क्या है? 15. So 0 to 15 become 16. Similarly, अगर हमारे पास 7 हो, सही है ना? 7 हो, अभी 7 बिट्स हैं. 7 बिट्स का क्या मतलब हुआ? 2 into 2, 4 into 2, 8 into 2, 16 into 2, 32 into 2, 64. Sorry. Into 2 is 128. So it is 128.
अब इसका क्या मतलब हुआ कि द स्मॉलेस्ट नंबर इज 0 एंड द हाईएस्ट नंबर दैट यू कैन अकोमोडेट इज 127. ऑलराइट, सो 2 into, सही है ना? तो the highest number that you can accommodate is basically 127. 128 होता है ना टोटल, तो 128. अब ये आपको जहन में रखना है. सिमिलरली यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूं, अगर हमारे पास यहाँ पर सारे वंस हों तो उसका मतलब ये है कि 8 बिट्स में हमारे पास जो टोटल लिमिट बनती है वो बनती है 255. यानी कि 2 to power 8 is basically 2 to power 8 is basically what? 2 की power 8 is 256. So the smallest number is 0, the highest number is 255. So you see, जब आपके पास 8 bits थे, आपने सारे ones उसमें enter कर दिए, तो आपके पास highest number क्या आया? 255. So there we go, 255. So mind it. All right. So this is range. Range आपको ना on and off challenge करती रहेगी range. तो don't forget about it. अच्छा जी, अब आ जाए आपसे हमने ये दोनों डिस्कस कर लिए कि हमारे पास जो है वो बेस 10 से बेस 2 और बेस 2 से बेस 10. अब हम आ जाते हैं हेक्स पे. अच्छा, अब देखें हेक्स बेसिकली क्या है. हेक्स एक और नंबर सिस्टम है. हुआ ये है कि कंप्यूटर साइंटिस्ट जो होते हैं ना, इन्होंने एक नंबर सिस्टम देखा हुआ था, बाइनरी हर जगह इस्तेमाल होना है, तो वो उसको इस्तेमाल करते रहते थे. हुआ ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम शेप्स और डेटा जो हम प्रोसेस करते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो बाइनरी नंबर बहुत बड़े बड़े और बहुत ज्यादा बनने लगे. तो पीपल केम अप विद डिफरेंट आइडियाज. तो एक आइडिया उसमें ये भी था कि इंस्टेड ऑफ बाइनरी हम कंप्यूटर को हेक्साडेसिमल से कंट्रोल करें. अब हेक्साडेसिमल से कंप्यूटर को कंट्रोल करना इसलिए मुमकिन नहीं है कि कंप्यूटर तो बना हुआ है, आईसी से आईसी बनी हुई है, सर्किट से सर्किट बने हुए हैं, गेट से, और गेट्स तो सिर्फ 0 और 1 को लेते हैं, तो कोई और नंबर सिस्टम तो बनेगा ही नहीं. लेकिन उसमें यह हुआ कि इन्होंने ऐसे कंप्यूटर्स बना दिए कि बजाय बाइनरी के हम उसको डेनरी डायरेक्ट दे दें तो भी चलता है, क्योंकि सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसको इंटरनली खुद ही कन्वर्ट कर लेता है. या हेक्साडेसिमल देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज के लिए डेनरी नंबर भी काफी लंबा चौड़ा हो सकता है, लेकिन हेक्साडेसिमल में वो जो उसकी लंबाई चौड़ाई है वो फिर भी कम हो सकती है. तो व्हाट इज हेक्साडेसिमल? हेक्साडेसिमल के अंदर 0 to 9 का सिस्टम जो है ना वो तो रहेगा सेम, यानी कि ये है डेनरी. और हेक्सा का मतलब क्या है कि वी नीड अनदर 6 वैल्यूज, सो दैट इज A to F. तो अब क्या हुआ, यहां पे 6 और यहां पे 10, तो ये मिला के बन गए 16. ये हो गया बेस 16. अब इस 16 को रिप्रेजेंट कैसे करें? मैंने आपको शुरू में बताया था कि किसी भी नंबर सिस्टम में जो उसके अंदर शेप्स होती हैं, यूनिक शेप्स, यूनिक रिप्रेजेंटेशंस, उनको हम कहते हैं डिजिट्स. बाइनरी में आगे ये कहलाते हैं बाइनरी डिजिट्स, और हेक्स में आगे क्या कहलाते हैं? या तो हेक्स या फिर हेक्सा डिजिट्स, हेक्स डिजिट्स. ठीक है. सो बेस 16. अब बेस 16 में हमारे पास 16 यानी कि 0 to 15 डिजिट्स होंगे. अब देखें इसमें क्योंकि डेनरी प्रिजर्व किया गया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तो आ गया. और इसके आगे अब हम क्योंकि डबल डिजिट्स नहीं ले सकते, किसी भी नंबर सिस्टम में जो बेस होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट पर बेस करती है. जो बेस होती है वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल यूनिक डिजिट्स पर बेस करती है. तो अब हमने अल्फाबेट्स में से
shapes borrow कर ली, but those are not alphabets. Those shapes are basically just digits here. ठीक है? So this is not A, this is 10, 11, 12, 13, 14, 15. तो हम जब पढ़ रहे होते हैं ना शुरू से, तो एक हमारा जहन बन जाता है 0 1 2 3 ऐसे ही होंगे, लेकिन आपको ये चीज समझनी है कि ये जो शेप्स हैं दे ऑलवेज चेंज व्हेन वी स्टडी क्रॉस number systems. The shapes always change, but the value remains the same. Value never changes. Only what changes? Shape changes. So hexadecimal में हमारे पास 0 to 15 है. So this basically, this is the largest digit of the hexadecimal, which is 15. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा बेस 10 का 15 है, वो 15 बेस 16 में आके अपनी शेप को इस तरह चेंज कर लेता है। और अगर इसी 15 को हम बाइनरी में लिखें तो इस तरह हो जाता है, यानी कि 4 बिट्स लेता है। तो 15 of base 10 or 15 of base 16 can be accommodated in at least 4 bits. Okay, they can be accommodated in 4 bits. It means a byte, which is 8 bits, can accommodate 2 hex digits. Yes, we are going to call it hex digits. तो a byte which is 8 bits can accommodate 2 hex digits. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बाइनरी में 0 को लिखूंगा तो 4 zeros लिखूंगा, सही है ना? तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक बाइनरी का नंबर है जो कि 8 बिट्स यानी कि एक बाइट में रखा हुआ है, तो उसके आप 4 बिट्स अलग कर लें तो वो हेक्स बन जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? अगर आपके पास एक हेक्साडेसिमल डिजिट है, सॉरी नंबर है 1C, इसका मतलब है 1 के लिए भी आपको 4 बिट्स चाहिए होंगे और C के लिए भी आपको 4 बिट्स चाहिए होंगे, मिला के तो ये 8 बिट्स ही बनेंगे। लेकिन C इज व्हाट? C इज 12। तो अगर हम यहाँ पे कोने में छुपके से लिख लें, सही है ना? तो A जो है वो 10 है, अब C 12 है। 12 का मतलब क्या हुआ? 8 and 4 12। 1 का मतलब क्या हो गया? ये 1 हो गया। तो अब आप देखें इन दोनों को आप मिला दें, ये बन गया 0 0 0 1 1 1 0 0। तो ये हो गया बाइनरी की शेप, ये हो गई हेक्स की शेप। अब इसको आप ओवरऑल मिला दें पूरा, यहां से लेके यहां तक। तो ये देखिए 1 2 4 8 16, 16 and 8 24 and 4 is basically 24 and 4 28। तो इसका मतलब है ये 1C बेसिकली डेनरी का क्या है? 28। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना? तो एक एक हेक्स के डिजिट को हम 4 बिट्स में रख सकते हैं, तो हम 4 बिट्स में ही रखेंगे। एक बाइट में 2 4 बिट्स की कॉम्बिनेशंस होती हैं, तो हम उसको ये समझेंगे कि एक बाइट में हमारे पास 2 ही जो है वो हेक्साडेसिमल डिजिट्स आ सकते हैं। तो इसका मतलब है एक बाइट 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हम 8 बिट से कम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो अगर एक हेक्साडेसिमल डिजिट है तो हमें लेफ्ट पर उसके 0 लगाना ही पड़ेगा। अच्छा जी, चलें अब हेक्स में कन्वर्ट करते हैं। जब हम हेक्स में कन्वर्ट करते हैं तो होता क्या है
कि हम जो है वो फिर इसको एज ए होल बाइट नहीं देखते, फिर हम इसको देखते हैं एज व्हाट, बेसिकली हम इसको फिर देखते हैं एज 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। तो अब हम इसको ऐसे देखेंगे, 1 2 4 8 एक हेक्साडेसिमल डिजिट, 1 2 4 8 दूसरा हेक्साडेसिमल डिजिट, ठीक है। और होगा तो नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको वर्चुअली डिवाइड कर देंगे दो पार्ट्स में। तो ये एक हेक्स डिजिट हो जाएगा जिसको हम 4 बिट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दूसरा हेक्स डिजिट हो जाएगा जिसको हम 4 बिट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये इस तरह हो गया, 2 हेक्स डिजिट हो गए, ठीक हो गया। अब आप देखें, अब आप पहले वाले को लें, यानी कि आप इसको लें, तो ये आप देखें यहाँ पे, अब हमें ना ये ब्लू को नहीं देखना, अब हमें सिर्फ येलो को देखना है। हम बेसिकली जो है वो येलो को देखेंगे बस, ठीक हो गया। तो अब आप इसको देखें, 4 and 2 6, तो लेफ्ट पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 4, क्योंकि बाकी सब पे तो 0 है, तो ये हो गया 6 and 4। तो ये हम इसको 6 and 4 नहीं बोलेंगे, हम इसको 100 बोलेंगे। तो देखें क्यों हमें 100 बोलना है, हमें इसलिए 100 बोलना है कि ये 6 and 4 जो है बाइनरी फॉर्म में ये होता है और डेनरी फॉर्म में ये होता है। तो दिस इज बेसिकली 100 इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, हेक्साडेसिमल। ऑलराइट, सो नाउ 50 विल बी, लेफ्ट पर हमारे पास यहाँ पर, लेफ्ट पर हमारे पास यहाँ पे 2 + 1 3 है, और यहाँ पे हमारे पास 2 है, सो दिस इज 3 and 2। अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो 8 + 4 is 12। तो 12 का तो मैंने आपको अभी बताया था कि 12 is what, 12 is C। So 8 and 4 is 12, 8 and 4 is 12, and over here it is 8, so C8। अब यहाँ पे हमारे पास आप देखें 1 and 2 3 हो गया, and this is basically 15, 8 and 4 12 and 2 14 and 1 15, so this is 3 and F। Afterwards this is 0 and F, afterwards it is F and 5, afterwards it is F and F since it is 255, afterwards it is 4 and 8 and 2 10 and 1 11, so 11 is what, 11 is B, 4B, afterwards it is 8 and 1 9 and 4 and 2 6, 9 6, so basically we are not going to call it 96 or whatever, this is still 150. So shape changes, value never changes, representation changes, value remains same. All right, so last one is basically 4 + 2 6 + 1 7 on the left, and on the right it is 8 + 4 12 and 1 13, so 13 is what, 13 is D, so this is 7D. All right, so if we are converting vice versa, so in that case what we do, let's say I just remove one single number and I put my own there. All right, so let me do it in red. So let's say I've got A3, I've got this base 16 number A3, so how would I come up with 3? So this is 2 + 1 3, A is 10, so 8 + 2 is 10. All right, so this is A is 10, so 8 + 2 is 10, and this is 3, 2 + 1 3. So this is literal binary conversion of a hex number A3. अब हमें क्या करना है कि we will take all these together, and instead of
येलो, नाउ वी कंसीडर ब्लू। जब हम इसको ब्लू वाला कंसीडर करेंगे, यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 64 128, तो ये जो नंबर होगा ये बेसिकली हमारा कन्वर्ट हो जाएगा डेनरी में। सो आप देखें यहाँ पे आपके पास है 128, यहाँ पे आपके पास है 32, so this makes it 160 plus 2, 162 plus 1, 163. So this A3 is basically 163. So बहुत सिंपल है। आपको अगर हेक्स मिले तो आप हेक्स के लेफ्ट डिजिट को एक बाइट के लेफ्ट साइड पे 4 बिट्स में कन्वर्ट कर दें, फिर हेक्स के दूसरे डिजिट को राइट साइड में कन्वर्ट कर दें, और फिर इन सारों को 1 2 4 8 16 32 64 128 करके आप इससे क्रिएट कर लें डेनरी नंबर। अगर आपको डेनरी नंबर मिलता है तो आप डेनरी नंबर से बाइनरी बनाएं, फिर बाइनरी को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, ट्रीट देम विद 1248 एंड कन्वर्ट देम टू बेस 16. So this is how it will work. Okay, so this was the conversion between the three. Let's get back to your syllabus and see what it says further. अब देखें ये आपसे क्या कहता है। ये आपसे कहता है आपका सिलेबस कि अंडरस्टैंड द डेनरी बाइनरी इन हेक्स सिस्टम। तो ये हमने अच्छी तरीके से, वैल्यूज विल बी इंटीजर्स ओनली। इंटीजर्स का मतलब ये है कि आपको पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं मिलेंगी, सिर्फ आपको बगैर पॉइंट वाली। अब हमें कन्वर्जन करनी है पार्ट 2 के अंदर। तो पॉजिटिव डेनरी एंड पॉजिटिव बाइनरी, ये हमने कन्वर्जन इन बोथ डायरेक्शन, डेनरी टू बाइनरी एंड बाइनरी डेनरी हमने कर ली। पॉजिटिव डेनरी एंड पॉजिटिव हेक्साडेसिमल, तो ये भी हमने कर लिया। पॉजिटिव हेक्साडेसिमल एंड पॉजिटिव बाइनरी, ये भी हमने कर लिया। मैक्सिमम बाइनरी नंबर लेंथ ऑफ 16 बिट्स। तो अब हमारे पास जो कन्वर्जन्स आएंगी वो 8 बिट्स की नहीं आएंगी, वो रादर 8 बिट्स की भी आएंगी और 16 बिट्स की भी आएंगी। तो मैक्सिमम हमारे पास 16 बिट्स। अभी हमारे पास 16 बिट्स की कुछ एग्जांपल्स आएंगी पास पेपर के, कभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम इनको निपटा देंगे। ठीक है, अच्छा। Understand how and why hexadecimal is used as a beneficial method of data representation. All right, so ये अब आप देखें ये हम क्यों हमें इस्तेमाल करते हैं, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर जो है वो हमें क्या चाहिए होता है। इसमें आप देखें, एरियाज विद इन कंप्यूटर साइंस दैट हेक्साडेसिमल इज यूज्ड शुड बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो अब हमें जो है वो इसका आंसर बताना है। ठीक हो गया। और हमें इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशंस करनी है, लेकिन उसमें उसने हमें बोला है कि आप जो हैं वो इन 2 एरियाज में डिस्कशन करेंगे। एरियाज विद इन कंप्यूटर साइंस दैट हेक्साडेसिमल, basically areas within computer science that hexadecimal is used should be identified. Hexadecimal is easier for humans to understand than binary as it is shorter representation of the binary. तो इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बाद में हमें जो है वो इसके ऊपर आंसर्स भी देने होंगे। तो अब हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। So hexadecimal is a numbering system that represents, we are discussing this 3 part, all right? That represents values using a base 16 as opposed to the more common denary base 10 and binary systems, okay? All right, in hexadecimal, digits range from 0 to 15 represented by the number 0 to 9 and letters A to F. It has become a widely used method of data representation in computer science due to its
efficiency, and case of use. Now we are discussing the benefits of hexadecimal and areas in computer science where it is utilized, as it says over here. Compactness, benefits of hexadecimal, compactness. Okay, hexadecimal is more compact representation of binary data. Since one hexadecimal digit can represent 4 binary digits, it allows for shorter and more readable representation of binary numbers. This makes it easier for humans to read, understand, and work with binary data. Second one is easier to manipulate the data, easier data manipulation. Hexadecimal makes it simpler to perform operations such as bitwise manipulation. We are going to do that. It is part of our syllabus in the form of left shift and right shift. As one hexadecimal digit directly correspond to 4 bits in the binary. This is particularly helpful when working with memory addresses or when debugging low-level software. यह भी हमें पढ़ना uses of hexadecimal में. Efficient data storage and transmission. Using hexadecimal representation can lead to more efficient storage and transmission of data, as it requires fewer characters to represent the same value compared to binary. This can be crucial in applications where memory and bandwidth are limited. Areas where hexadecimal is used in computer science, memory addresses. Hexadecimal is often used to represent memory addresses in computer science since, hold on for a second. I'm going to share something in your group. All right. In your revise and rise wala group. I will keep sharing. जो जहाँ पे ये theory वाला matter आएगा ना, ये मैं आपसे share करता रहूँगा. Okay? तो देखिए मैंने आपको share किया है. ये आप देख सकते हैं उसमें. So we were actually discussing the areas where we are actually going to use hexadecimal numbers. So memory addresses. Hexadecimal is often used to represent memory addresses in computer science. Since memory addresses are typically represented as binary numbers, using hexadecimal allows for more concise and human readable representations. Color coding. In web development and graphic design, colors are commonly represented using hexadecimal notations. Each color is specified using a 6-digit code with each pair of digits representing red, green, and blue. So it becomes very easy. Machine language and assembly. In low-level programming languages like machine language and assembly often use hexadecimal notation to represent instructions, memory addresses, and data. Debugging. Hexadecimal is often used in debugging and reverse engineering tools representing the binary data. But then there are file formats and data encoding. In conclusion, hexadecimal is a beneficial method of data representation in computer science because it offers more compact, human readable, and efficient way to work with binary data. It is widely used in various areas, including memory addresses, color codes, low-level programming, debugging, and data encoding. Okay, so I have sent the text in your group, revise and rise group. Okay, now move on. Part number 4. Add 2 positive 8 bits binary integers, understand the concept of overflow and why it occurs in binary addition. And overflow occurs if whatever a computer or device has a predefined limit. We just discussed about it. We, instead of calling it limit, we called it range. It can represent or store, for example, 16 bits,
An overflow occurs when the value outside the limit should be returned. All right, so let's do this part number 4. Okay. बाइनरी एडिशन। अच्छा, अब एक चीज आपको ना जहन में पक्की पक्की रखनी है, पता है वो क्या है? बाइनरी एडिशन जो है ना, वो कंप्यूटर के अंदर एएलयू में सिर्फ एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं होती। ऑलराइट। अच्छा, आपके सिलेबस में तो सिर्फ बाइनरी एडिशन है, इसलिए नो वरीज। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन भी होती है ना, तो आगे चल के हम अभी एक चीज पढ़ेंगे, टूस कॉम्प्लीमेंट। वो सिस्टम बना के ना, टूस कॉम्प्लीमेंट नंबर, उसको फिर वो जो है ऐड करता है। कहने का मकसद ये है, वट एवर द ऑपरेशन दैट इज रिक्वायर्ड इंटरनली, सिस्टम इज अ सिंपल थिंग दैट जस्ट एड्स। सो माइंड दैट, सही है ना? सो एड टू पॉजिटिव 8-bit integers, understand the concept of overflow and why it occurs. अच्छा, अब देखें, सबसे पहले आपको मैं ये समझाऊंगा 4 बिट्स में। ओके, तो अब देखें, बाइनरी एडिशन है। लेट्स से मैं ऐड करना चाहता हूं 2 + 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। अब 2 को बाइनरी में मैं 4 बिट्स में, अभी आपको मैं सिर्फ 4 बिट्स में सिखाऊंगा। सो 1 2 4 8, सही है, 1 2 4 8। तो अब हमें जो है दो 8 बिट्स को, सॉरी, दो नंबर्स को जो कि 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनको 8 बिट बाइनरी के अंदर करना है, लेकिन हम उसको पहले कर रहे हैं सिर्फ 4 में, ताकि हम उसका आइडिया समझ लें। अच्छा, सबसे पहले तो आपको लिमिट या रेंज समझनी है, लिमिट या रेंज। अब क्योंकि 4 बिट्स हैं, इसका मतलब हुआ कि आपके पास टोटल जो है ना, वो है 16 नंबर्स की रेंज। जो सबसे छोटा नंबर 0 होगा और सबसे बड़ा नंबर होगा 15। तो आप 15 से बड़ा नंबर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 4 बिट्स में। अब आपके पास आ गए 4 बिट्स, ये आ गए आपके पास 4 बिट्स। अब आप पहले इसमें 2 बनाएं, ये आपने 2 बना लिया बाइनरी के अंदर, ठीक है। फिर आपने बनाया 4, ये आपने 4 बना लिया बाइनरी के अंदर। ऑलराइट, ठीक है। अब इनको ऐड करना है, अब हम इनको ऐड करने जा रहे हैं। अच्छा, ऐड करने से पहले आपको एक पूरा अंदाजा सिस्टम का समझना पड़ेगा। देखें, अब आप 0 + 0 ये होता है 0, ठीक है। 0 + 1 ये होता है 1, ठीक है। 1 + 0 ये होता है 1। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये मैं बाइनरी में कर रहा हूं। 1 + 1 ये होता है 2, 2 बिट की बाइनरी है। और इसी तरीके से 1 + 1 + 1 जो होता है वो होता है 3। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझ लें। अब आपके पास 2 बिट की बाइनरी है, 1 और 2, 2 बिट की बाइनरी है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अगर आप 0 लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, 1 लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, 2 लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, 3 लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे। 4 इसमें आ नहीं सकता, क्योंकि आपके पास 2 बिट के अंदर सबसे बड़ा नंबर 4 आता है, 0 से 3 तक। ऑलराइट, तो इसीलिए अब आप देखें कि ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, इसी तरीके से ये 3 है। देखा आपने? तो ये बाइनरी में 2 और 3 है। अच्छा,
ये हो गई एक चीज। अब एक कॉन्सेप्ट है कैरी, कैरी का। आपने अगर डेनरी में आपके पास है 19 + 7, तो 9 और 7 16 होता है। आपने यहाँ पे 6 लगाया, यहाँ पे 1 लगाया, तो ये जो 1 है इसको हम क्या बोलते हैं, कैरी। सही है। फिर 1 + 1 करेंगे 2। अच्छा, अब हम 2 पे नहीं जा रहे, हम 2 पे नहीं जा रहे, हम अभी 6 तक महदूद हैं। इस 6 को क्या बोलेंगे, इस 6 को हम बोलेंगे सम। तो ये 1 क्या है, कैरी, और ये 6 क्या है, सम। अब ये सम बड़ा होता रहेगा हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बाइनरी में भी यही होता है कि जो 2 बिट्स हैं इनमें एक कैरी होता है, एक सम होता है। ये 2 बिट्स, आंसर हमेशा 2 बिट्स में आता है। ये सम और ये कैरी, ये सम, ये कैरी, ये सम। अच्छा, अब देखें जब एक एक बिट ऐड हो रहा है 0 1 और हमारे पास सम तो है, कैरी नहीं है, तो कंप्यूटर उस जगह को ह्यूमंस की तरह आगे पीछे तो नहीं कर सकता कि अगर कैरी होगा तो दिखाएंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। कंप्यूटर वहां पे 0 डाल देता है। तो ये जो कैरीज हैं ये यहाँ पर 0 होते हैं। तो इस चीज को आपको समझना है, इस चीज को आपको समझना है कि जब भी हम बिट्स को ऐड करते हैं तो उनमें सम और कैरी आते हैं, बाइनरी फॉर्म में बिट्स होते हैं। तो अब आ जाए, इनको ऐड करते हैं जो आपके पास यहाँ है। तो 0 + 0 0, राइट से लेफ्ट एडिशन होती है और इसलिए हम इसको बिट बाय बिट करते हैं। तो हम इसको कहते हैं बिट वाइज। अब इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, बिट वाइज एडिशन। बिटवाइज का मतलब है गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉर ऑल द बिट्स। 0 + 0 0, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 0। अब अगर आप इस आंसर को देखेंगे तो इसमें आप देखें 4 और 2 पे 1 लगा हुआ है। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये 6 बनेगा। सो बेसिकली ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। अच्छा, अब आप ये मत कीजिएगा बेवकूफी कि आप जो है वो डायरेक्ट आंसर लिख दें, क्योंकि फिर आप कैरीज नहीं निकाल सकेंगे। अब इसी चीज को हम जरा एक बड़े नंबर की तरफ जाते हैं और करके देखते हैं। अब आप देखें, आपके पास एक नंबर है 11 और एक नंबर है 7। अब आप 4 बिट्स में कर रहे हैं, तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं 18। अच्छा, अब जब आप 4 बिट्स में काम करते हैं तो 4 बिट्स में आपको पता है कि 4 बिट्स की जो रेंज है वो है 2 की पावर 4 16, यानी कि 0 से 15 तक, और जो रिजल्ट है ये ग्रेटर देन 15 है। तो इसको देखें हम किस तरह ऑब्जर्व करते हैं। अब 11 आप कैसे बनाएंगे, 1 2 4 और 8, 8 × 12 and 1 11। और इसके बाद 7 बनाएंगे, 1 2 4, 4 + 2 6 + 1 7। इनको आप ऐड कर दें। ऑलराइट, इनको आप ऐड कर दें। 1 + 1 2 बना। 2 का अब आपको पता है कि 2 जो है वो 0 को हम ऐसे लिखेंगे, 1 को हम ऐसे लिखेंगे, 2 को हम ऐसे लिखेंगे और 3 को हम ऐसे लिखेंगे। तो ये 1 और 1 2 बना। जब 2 बना तो 0 हमने नीचे रखा, ये सम होगा, ये कैरी होगा, तो कैरी ऊपर लग गया। अब हमारे पास आ गया 1 + 1 + 1 3। अब ये 3 है तो 3 में नीचे सम, ऊपर कैरी। फिर 1 + 1 2 हुआ तो नीचे सम, ऊपर कैरी। और फिर 1 + 1 2 हुआ। अच्छा, अब आप देखें कि बेसिकली ये जो ये वाला 1 है, ये इट फेल आउट ऑफ 4 बिट्स। तो इसको हम इस तरह शो करते हैं। ये एग्जाम में भी आपको ऐसे ही शो करना है, ऐसे थोड़ी सी लाइन लगाएंगे जो कि तिरछी होगी। सही है ना, तिरछी, स्लांट, लाइक अ स्लैश। सो दिस बिट इज सेड टू बी ओवरफ्लो। It fell out of the 4 bits storage area, so this is overflow. अब ये एक कॉमन क्वेश्चन आपके पास आएगा कि भाई बताओ, 2 नंबर्स ऐड करो और बताओ कि क्या ओवरफ्लो हुआ है या नहीं हुआ। अब इस ओवरफ्लो को हम कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं, व्हाट इज ओवरफ्लो।
सही है ना? What is overflow in binary addition? What is overflow in binary addition? So overflow in binary addition is basically occur when the result of an addition operation exceeds the maximum value that can be represented using a fixed number of bits. In binary arithmetics, numbers are represented using a fixed number of bits. For example, for 8 bits, 16 bits, 32 bits, etc. Each bit can either be 0, 1, and the maximum value that can be represented depends on the number of bits available, as we have discussed. When two binary numbers are added and the result is too large to be represented with the given number of bits, an overflow occurs. In this situation, the most significant bit, ये जो हमारा most, ये जो वाला bit जो होता है, इसको हम कहते हैं most significant bit of the result is discarded or overflows, causing the result to wrap around to a smaller value. अब हमारा जो ये जो बाकी का बचता है ये smaller value हो जाती है. So it wraps around smaller value. सही है, which may lead to incorrect calculation. Obviously incorrect हो जाती है calculation. All right. So overflow is an important concept to consider in computer science, as it may lead to unexpected results and potential issues in calculation, especially when working with fixed width binary representation, जो कि आपके syllabus का हिस्सा है. To handle overflow, programmers can use techniques such as checking for overflow condition before performing the arithmetic operation, or using larger data types to accommodate. Data type मतलब हमारे पास larger storage to accommodate the result of operation. Now let's see how to overcome this issue. Instead of 4 bits, we are going to use 8 bits now. So 11, 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Now I have taken 8 bits. Instead of 4 bits, I have taken what? 8 bits. अब इसके साथ में I'll be adding up what? 7, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 120. अब देखें मैंने ना रेंज बढ़ा दी. अब मेरी जो रेंज हो गई वो हो गई 2 की पावर 8. 2 की पावर 8 इज 256. तो 0 से 255 तक मैं अकोमोडेट कर सकता हूँ. और मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट तो सिर्फ और सिर्फ 18 है. तो अब मेरे पास इश्यूज नहीं आएंगे. 1 and 1 2 1 carry, 1 and 1 and 1 3 1 carry, 2 1 carry, 2 1 carry, 1. अब देखें ये 1 ओवरफ्लो नहीं हुआ, ये अंदर ही रह गया. अब आपका रिजल्ट सही हो गया. तो ओवरफ्लो को ओवरकम करने का एक ही तरीका है. To handle overflow, programmers can use techniques such as checking for overflow conditions before performing arithmetic operations, or using larger data storage units to accommodate the result of the operation. Okay, so this is it for additions. Now get back to the syllabus. All right, overflow occurs when value outside the limit should be returned. Returned का मतलब है जब ये आंसर आता है. Now, number 5. Perform logical binary shift on a positive 8 bits binary integer and understand the effect of it has over the positive binary number. Perform logical left shift, perform logical right shift, perform multiple shift. Bit shifted from the end of the register are lost and zeros are shifted in the position at the end of the register. The positive binary integer is multiplied or divided according to the shift performed. The most significant bits or least significant bits are lost. Okay. अब इस पूरी चीज को समझने के लिए we have to get back to basically our iPad.
तो हमें लेफ्ट शिफ्ट करनी है, राइट शिफ्ट करनी है, मल्टीपल शिफ्ट करनी है, और हमारे पास अगर बिट्स वो हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, तो वो हमें यहाँ पर देखने हैं। ठीक है, आ जाएं जी। अच्छा, so basically bit shifting is a technical thing but not that difficult. A logical binary shift is an operation performed on binary numbers that shift the bits either to the left or the right, effectively modifying the original value. In computer science, in computer systems, these operations are commonly used for bit manipulation, data encoding, and arithmetic calculation. So purposes are bit manipulation, data encoding. Data encoding means any data, when it is being converted to binary form, what form it will take is data encoding. And arithmetic calculations. All right. This detailed explanation that I'm going to give you now will cover the different types of logical binary shifts, their effects on positive 8-bit binary integers. Your syllabus just says that to do it until 8 bits only, and results and the resulting consequences. ठीक है? So logical left shift हम सबसे पहले करेंगे logical left shift. Logical left shift moves all the bits in a binary number to the left by a specified number of positions. Zeros are shifted into the least significant bit. Achha, now you need to understand what is least significant and most significant bit. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, and 128. अब आप देखें अगर एक बाइट आपके पास है, so this is most significant bit. कौन सा वाला? ये वाला. और ये वाला is least significant bit. अच्छा, आप देखें ये least क्यों है? क्योंकि इसकी worth least है. इसकी वर्थ लीस्ट है. और ये जो है ये वाला मोस्ट क्यों है? क्योंकि इसकी वर्थ मोस्ट है. ठीक है, इसकी वर्थ मोस्ट है. होल्ड कीजिएगा. ऑलराइट, तो अब zeros are shifted into the least significant position. What does that mean? It means कि let's say अगर हमारे पास ओरिजिनल नंबर जो है हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है लेट्स से वो है 0 0 1 0
एंड 1101। अब हमने इसको लेफ्ट शिफ्ट किया, तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, देखें ये नंबर जो है वो बेसिकली 8 बिट्स में रखा हुआ है। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। जब हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, जब हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जो भी बिट मोस्ट सिग्निफिकेंट में है वो बाहर चला जाता है, ओवरफ्लो करके बाहर गिर जाता है, और एक नया बिट जो है वो शिफ्ट इन करता है। ऑलराइट, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है वो बाहर चला जाता है और नया बिट जो है वो शिफ्ट इन करता है। अ लेफ्ट शिफ्ट zeros आर शिफ्टेड इन, तो ये दिस इज शिफ्टिंग इन। ऑलराइट, सो दिस इज शिफ्टिंग इन into the least significant bit position, while the most significant bits are lost. So these are being lost. All right, as they shifted out, इसको हम क्या बोलेंगे, shifting in, ये क्या हो गया, shift out होगा ये, और lose हो गए, shift out हो गए और lose हो गए। तो अब हमें क्या करना है, अब आप देखें, अब हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। जब हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये वाला जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये शिफ्ट आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 1 0 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 0 1। अब हमारे पास यहाँ पे एक जगह खाली छूट जाएगी, तो हम उस जगह पे क्या करेंगे, उस जगह पे हम यहाँ पे जो शिफ्ट इन करेंगे वो हमेशा 0 होगा। तो शिफ्टिंग इन ओनली जीरोस, सही है। तो क्या हुआ कि ये वाला जो बिट है ये बाहर जाके जाय हो गया, और ये वाला जो बिट है ये अंदर आ गया। ठीक है, तो ये वाला बिट जो है वो खत्म हो जाता है और दूसरा वाला बिट जो है वो अंदर आ जाता है। ठीक है, होल्ड कीजिएगा जरा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि आपने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। अब अगर इसकी हम नंबर की वैल्यू देखें, तो ये वाला जो नंबर था ये था 1 1 2 4 8 16 32, तो 32 प्लस 8 40 प्लस 4 44 45, so this was basically 45। अब जब हमने इसको लेफ्ट शिफ्ट किया तो ये हो गया 32 प्लस 16 48 प्लस 8 56 और 2 58, नहीं सॉरी ये 64 हो गया ना, 64 प्लस 16 80 88 90। ऑलराइट, तो हुआ क्या है यहाँ पर, जब आपने लेफ्ट शिफ्ट किया है, अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। देखें, फर्स्ट करें, मैं इसको पहले आपको 4 बिट्स में समझा दूं ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब मेरे पास है 1 2 4 और 8, मैं लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास नंबर था 3, 2 प्लस 1 3, ये ओरिजिनल नंबर था। मैंने एक बार लेफ्ट शिफ्ट किया तो ये जो लेफ्ट वाला जीरो है ये खत्म हो गया, ये 1 और 1 यहाँ आ गया और एक नया जीरो शिफ्ट इन कर गया। फिर मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया, ये इनटू 1 टाइम किया, फिर मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया तो ये वाला जीरो फिर खत्म हो गया, ये 1 1 इधर आ गए और यहाँ पे एक, तो ये इनटू 2 टाइम किया मैंने शिफ्ट। ठीक है, अब अगर इसकी हम डेनरी देखें तो दिस वाज 3, दिस वाज 6, दिस वाज 12। ऑलराइट,
So what is basically happening that 3 is being multiplied by 2 and 6 is being multiplied by 2. यहाँ पे ये हो रहा है, या दूसरे तरीके से आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो आप जैसे जैसे लेफ्ट शिफ्ट करते हैं वो आपको जो है डबल होता चला जा रहा है नंबर, ठीक है ना? Alright, so the original value is multiplied by 2 and resulting in a new value, ठीक है ना? तो ये क्या हो रहा है, 3 into 2 6 हो गया, 6 into 2 12 हो गया. Alright, so इसको आपको देखना है, तो यहां से लेफ्ट स्टेप गिरेगा. अब आपके पास यहाँ पे क्योंकि 4 बिट्स की जो लिमिट है वो है 16, 0 से 15. अब अगर आप मजीद इसको करेंगे into 3 तो अब आपके पास से ये 1 भी गिर जाएगा. तो ये 1 यहाँ पर ड्रॉप हो गया, तो यहां से 0 आ गया. तो होना क्या चाहिए था, ये 24 होना चाहिए था, लेकिन 24 के बजाय ये क्या बन गया, 8. नाउ दिस इज इनकंसिस्टेंट, रॉन्ग रिजल्ट हो गया. क्यों रॉन्ग रिजल्ट हो गया? बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी, द लिमिट or the range. So if we keep shifting bits towards the left until the maximum of those available bits is there, we can shift left. But if we try to accommodate more than it is available, then in that case number becomes jumbled, they become wrong, they become inconsistent. So logical shifting left पर number को double करती है. Okay, अच्छा अब आ जाए थोड़ा सा right shift की तरफ. A logical right shift, all right, a logical right shift. Logical right shift moves all the bits in the binary number to the right by a specified number of positions. Zeros are shifted into the most significant bit positions, while the least significant positions are lost as they are shifted out. Now, least significant, अगर फर्ज करें कि आपके पास 8 बिट्स हैं, तो यहां पे शिफ्ट इन होगी और यहां से क्या होगा, शिफ्ट आउट होंगे. ऑलराइट, शिफ्ट इन होगी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से आपके पास शिफ्ट आउट होगा, क्योंकि अब ये हो रही है राइट शिफ्ट. ऑलराइट, अब ये हो रही है हमारे पास राइट शिफ्ट. ठीक हो गया, ये राइट शिफ्ट हो रही है. तो अब हम इसको देख लेते हैं. लॉजिकल शिफ्ट मूव्स ऑल द बिट्स इन द बाइनरी नंबर to the right by a specified number of positions. Zeros are shifted into the most significant bit positions, while the least significant bits are lost as they are shifted out of the register. A right shift effectively divides, अब यहाँ पे divide हो रहा है, the original value by 2 raised to the power of number of positions. All right, shifted. A right shift effectively divides the original value by 2 raised to the power of number of positions shifted towards the right. What does it mean? Let's see. अच्छा, you see, basically let's say हमारे पास एक नंबर है, हम उसको लेते हैं 50. So 1 2 4 8 16 32 64 120. 16 32 48 plus 2 is
50. So this is basically 50. अब हमने इसको राइट शिफ्ट किया, राइट शिफ्ट किया तो ये हो गया 1 0 0 1 1 0 0 0. All right. So 1 2 4 8 16, 16 and 8 24 and 1. This has become what? 25. Now there is something that you need to understand, that 50 is basically an even number. All right, and 25 is an odd number. If you shift an even number towards the right, it will be divided by 2. All right, it will be divided by 2. Exactly. But if you shift an odd number towards the right, odd number, when it is divided by 2, it effectively produces a 0.5 thing into it. 25 का जो half होगा, that will be 12.5. So 12.5 यहाँ पे स्टोर नहीं होता क्योंकि ये इंटीजर नंबर सिस्टम है. इसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप ऑड नंबर को राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें से 0.5 जो होगा वो लूज हो जाएगा, वो आप स्टोर नहीं कर सकते. तो अब जब आप राइट शिफ्ट करेंगे तो ये 1 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 0 0 1 1 0 0 0 और एक 0 शिफ्ट इन कर जाएगा. तो we were looking at 12.5, but there is no way we could accommodate 0.5. So 0.5 is lost. So the number has become 12. Now 12 is an even number. Acha, 12 is an even number. So when we shift it right, we would not have any trouble. So 0 1 1 0 0 0 0 0, it has become 6. 6 is again an even number. So if we would not have any problem shifting it right. So this will become 3, but 3 is an odd number and 1 will be lost. So we are left with 1. So instead of 1.5, we are left with 1. अच्छा, अब आपको यहाँ पर एक चीज समझनी है. अगर आप बहुत सारे लेफ्ट या बहुत सारे राइट शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा? बहुत सारे लेफ्ट या बहुत सारे राइट शिफ्ट करने से ये होता है कि नंबर इवेंचुअली 0 हो जाता है, क्योंकि सारे वंस तो लेफ्ट से या राइट से गिर जाते हैं. ठीक है ना, तो शिफ्ट आउट हो जाते हैं. जब शिफ्ट आउट होते हैं तो खत्म हो जाते हैं. दूसरी आपको एक बहुत मेजर चीज यहाँ पे समझनी है कि ये जो आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, अगर इसमें 0 है तो इसका मतलब है कि ये नंबर इवन है, और अगर इसमें 1 है तो इसका मतलब है कि ये नंबर ऑड है. ठीक है, अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में आपके पास 0 होगा तो अब आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि दिस इज इवन नंबर, दिस इज ऑड नंबर, दिस इज इवन नंबर, दिस इज इवन नंबर, दिस इज ऑड नंबर, और ये 1 भी ऑड नंबर है. इसको भी जहन में रखिएगा कि जब इवन नंबर हम राइट शिफ्ट करते हैं तो वो परफेक्टली हाफ हो जाता है, अगर ऑड नंबर राइट शिफ्ट करते हैं तो परफेक्टली हाफ नहीं होता है. अब आ जाए परफॉर्मिंग मल्टीपल शिफ्ट, जो हमने यहाँ पे देख लिया है. मल्टीपल शिफ्ट्स कैन बी परफॉर्म्ड ऑन बाइनरी नंबर्स बाय एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल shifts operations in sequence. The effect of multiple shift is compounded multiplication or division of the original value depending on the direction of the shifts. सही है? So the bits which are shifted from the end of the register is basically the allocated number of bits. और ये सारा ऑपरेशन क्योंकि प्रोसेसर के अंदर होता है तो प्रोसेसर के अंदर की जो मेमोरी होती है उसको हम ये रजिस्टर्स ही कहते हैं, जहाँ पे सिस्टम रख कर ये सारी शिफ्टिंग करता है. ड्यूरिंग द शिफ्ट ऑपरेशन बिट्स आर शिफ्टेड आउट ऑफ द रजिस्टर्स. मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट फॉर लेफ्ट शिफ्ट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट फॉर राइट शिफ्ट्स आर लॉस्ट, एंड zeros are shifted in at the position of on the opposite side end of the register. ठीक है. और फिर जो आखिरी चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है, द पॉजिटिव बाइनरी शिफ्ट the positive binary integer is multiplied or divided according to the shift performed. So as discussed in the example, logical left shift multiply
the original value by a power of 2, while the logical right shift divide the original value by a power of 2. All right. So in summary, logical shifting on positive 8-bit binary integers are operations that either multiply or divide the original value by a power of 2, depending. ठीक हो गया. अब मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा एक राइट अप भेजता हूँ आपके ग्रुप में. एक ब्रेक ले लें नमाज का 5:30 to 5:45 and then we get back. Okay.
All right. So let us start. Now, the sixth part for number systems. Use two's complement to represent positive and negative 8 bits binary integers. Convert a positive binary or denary integer into two's complement 8-bit integer and vice versa. Convert a negative binary or denary integer into a two's complement 8 bits integer and vice versa. Now, what is two's complement? Okay. इसको अभी हम जरा डिस्कस करते हैं. Whose complement is basically अभी तक जो कुछ आप पढ़ रहे थे that was integer positive integer means इसमें हमारे पास साइन नहीं था और वो अनसाइंड था. जो कुछ भी अभी हम पढ़ रहे थे that was unsigned. अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो साइंड है. साइंड का मतलब टूस कॉम्प्लीमेंट होता है. देखें, एक जनरल रॉन्ग परसेप्शन ये है कि टूस कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव नंबर्स को हम कहते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. सो two's complement. Two's complement numbers. So basically, two's complement is a widely used method for representing both positive and negative numbers. So अगर आप देखें आपके पास इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है 35, तो ये अनसाइंड है. अनसाइंड इंटीजर है. इंटीजर ये इस वजह से है कि बेसिकली इसमें कोई डेसिमल कोई पॉइंट वाला पार्ट नहीं है. लेकिन अगर मैं इसको लिखूंगा +35 तो ये साइंड इंटीजर हो जाएगा. ऑलराइट, अगर मैं लिखूंगा -14 तो ये भी साइंड इंटीजर हो जाएगा. ठीक है. तो जो अगर हम इसको कन्वर्ट करें बाइनरी में, अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो जो इसकी फॉर्मेट बनेगी, जो एनकोडिंग बनेगी, उसको हम कहेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट format. All right. So mind it, it's not just negative number, it is positive number as well. Basically, two's complement are signed numbers. Okay, two's complement are signed numbers. Okay. Now, अच्छा, अब क्या होता है कि टूस कॉम्प्लीमेंट इज अ वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव binary integers in computer systems. It simplifies arithmetic operations and allow for effective use of binary in hardware.
We are going to cover the process of converting positive and negative binary or denary integers to 8 bits to complement representation and vice versa. Okay, so basically what happens, जो आपके पास वर्थ होती है ना 1 2 4 8 16 32 64 और 128, इसमें से जो 128 होता है ना, इसको हम कर देते हैं नेगेटिव और बाकी सब पॉजिटिव होते हैं। तो अगर आप यहां से यहां तक इनको ऐड करें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गए प्लस 127, सही है ना? 64 32 96 16 12 1 and 12 and 8 120 plus 4 124 124 plus 2 126 plus 1 127 और माइनस 128। तो सबसे पहला जो फर्क आपके पास आ रहा है वो आपके पास आ रहा है रेंज में और लिमिट में। क्या फर्क आ रहा है कि जो आपकी अनसाइंड नंबर्स थे उनकी जो रेंज थी 2 की पावर 8 में वो थी 256, 0 से शुरू हो रही थी और 255 तक जा रही थी। अब अगर साइन में आप आ जाते हैं तो साइन नंबर्स में 8 बिट्स के अंदर आप -128 से +127 तक जा सकते हैं। ऑलराइट, सो ये सबसे पहली चीज है जो आपको पता होना चाहिए कि आप -128 से +127 तक जा सकते हैं। ऑलराइट, अब हम कन्वर्ट कैसे करते हैं? कन्वर्ट हम इस तरह करते हैं कि इसको जो है समझने का एक तरीका मुश्किल है और एक तरीका आसान है। 1 2 4 8 16 32 64 -128। अगर मुझे बनाना है प्लस का 25 तो दैट इज वेरी इजी। -128 को हमने किल कर दिया 0 लगा के। जब हमने इसको किल कर दिया तो बस 16 और 8 24 और 1 25। तो आप देखें साइंड पॉजिटिव नंबर्स और अनसाइंड पॉजिटिव नंबर में आपको कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। अगर मैं इसको अनसाइंड भी कर दूं तो 25 ऐसे ही नजर आएगा। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव नंबर्स, दैट इज व्हाई बेसिकली पीपल डोंट think, mostly people misthink, they get confused about it since the negative number has a different shape in 2's complement, basically 2's complement is only negative। ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। 2's complement जो है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अगर हमें -25 पे आऊं तो वो क्या बनेगा? वो ये बन जाएगा। अब आप देखें, मैं अगर इन नंबर्स को ऐड करूं तो ये क्या बनेंगे? ये बनेंगे बेसिकली 127 -24, ये बनेंगे +103। ठीक है, और ये नंबर क्या है? ये -128 है। सो -128, तो ये क्या बन जाएगा? -25। सो -128 +103 is -25। You can check it। तो what I am trying to tell you कि आप यहाँ पे देखें हमने क्या किया कि ये नेगेटिव का 20 वो है -25, नेगेटिव का 25 है, सॉरी। सो -128 को हमने लिया और +123। तो हमें यहाँ पर जब नेगेटिव नंबर होता है ना तो -128 तो लेना ही पड़ता है। -28 तो पक्का पक्का लेना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम उसमें क्या ऐड करें कि हमारा रिजल्ट बन जाए। अब अगर आप देखें, मुझे नेगेटिव का 5 बनाना है। पहले मैं अगर देखूं पॉजिटिव का 5 आप कैसे बनाएंगे? 4 + 1 5। अब मुझे नेगेटिव का 5 बनाना है, तो नेगेटिव का 5 मैं कैसे बनाऊंगा? मैं लिखूंगा -128 + 123, तो ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 प्लस का 5।
सॉरी नेगेटिव का 5, सही है ना? तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि हमारे पास ये आ गया प्लस का 123, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, और ये आ गया माइनस का 128। तो आप देख लेंगे क्या बनता है, ये बन जाएगा -128 प्लस 123, हमारे पास ये बन जाएगा -5। ओके, सो ये -5 बन जाएगा। So this is basically -5. You need to understand this. Okay, there is an easier way. अगर आपको लेट्स से माइनस का 50 बनाना है तो आप पहले प्लस का 50 बनाएं। 32 and 16 is 48 plus 2 50। ये हमने 50 बनाया पॉजिटिव का। अब राइट से फर्स्ट वन तक सेम रखें और बाकी सबको उल्टा कर दें, तो ये नेगेटिव का 50 बन जाएगा। दोबारा सुने, positive numbers in 2's complement remain same in binary form as unsigned numbers. Negative numbers look different. Negative numbers look different in binary form. Okay? Negative numbers look different in binary form. Okay, so they look different in binary form. Acha. So to convert a negative binary number, negative ternary number to binary 2's complement, start from the right to the first one keep all digits the same and toggle invert rest towards left. For example, positive 100 is 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Negative 100 will be from the right to the first one, we keep it same and we will inverse the rest. All right. So this is basically -128 and this is basically 1, 2, 4, 8, 16. 16 and 1, 2, 4, 8, 16, 16 and 8, 24 and 4, 28.
plus 28. So this becomes what? Minus 100. So this is a proven method. This is 2's complement method, mind it. So positive numbers in 2's complement are basically appearing the same. So 2's complement is a widely used method for representing both sorry, 2's complement is a widely used method for representing both positive and negative binary integers in computer system. It simplifies arithmetic operations and allows for efficient use of binary hardware. Okay, in this discussion, we are covering the process of converting positive and negative binary or denary integers to 8 bits 2's complement representation and vice versa. Positive binary or denary integers to 8 bits 2's complement integer. The 2's complement representation is the same as the unsigned binary representation. To convert a positive binary or denary integer into 8-bit 2's complement integer, we are going to cover these steps. A, convert the denary integer to binary if not already in the binary form. सही है, ठीक है, and keep it the same. All right. If the number of bits is not 8, put leading zeros there. Okay. Okay. Now negative binary or denary, how would we basically convert them? To convert negative binary or denary to basically an 8-bit 2's complement integer, जो steps हमें चाहिए. Convert the denary integer to binary, ignoring the negative sign. All right. Complete the byte by putting leading zeros to it. Invert. अब हम ये भी कर सकते हैं कि हम from the right to the first one, keep this keep the bit same or invert the rest. Okay. और एक और तरीका लोग कहते हैं कि उसमें जो है वो ये होता है कि आप सारे जो बिट्स हैं उनको आप वो कर दें, इन्वर्स कर दें, टॉगल कर दें और फिर उसमें 1 ऐड कर दें. ठीक है. सही हो गया. तो ये तरीका मैं आपको जो है वो अभी भेज भी देता हूँ. ठीक है. तो इट्स अप टू यू कि विच मेथड यू बेसिकली adopt. It's up to you totally. मेरा ख्याल है कि the method that I have described is the best. ठीक है. ये मैंने आपसे शेयर किया है. इसमें मैंने मेथड बता दिया. यहाँ पे मैंने जो आपसे शेयर किया इसमें मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट वाला मेथड बताया, यानी कि पहले आप सबको रिवर्स करें और रिवर्स करने के बाद जो है आप उनको 1 ऐड कर लें तो आंसर बन जाता है. ठीक है. Let's get back to our syllabus. So this completes number system. Okay, चलें अब नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया. अब थोड़ा सा इसके जो है वो पास पेपर्स के क्वेश्चंस को देख लेते हैं.
होल्ड कीजिएगा। अच्छा, अब देखिए हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो हम सिंपली जो है वो कुछ 2-3 सालों के क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम तो है नहीं, जो भी हम कर सकते हैं वो हम कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए, तो अब हम सबसे जो लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, 2-3 सालों के। सो denary is a number system that is used by programmers. Tick one box to show whether denary is base 2, base 10. So this is base simply base 10. Hexadecimal values can be used to represent denary values. Convert these 4 hexadecimals: 0, 5. So 0 is 0, 5 is 1, 2, 4. Okay, so this is 2, 1, 2, and then 0. 1a, this is 1, a is 10, 8 and 2, 10. A and B, so 8 and 2, A, and 8 and 2 and 1B. Okay, so A is 10 and B is 11. So we have converted
these. Hexadecimal values can be converted to binary values. Hexadecimal 25. Tick the box to show the correct 8-bit binary value for each. So this is basically 9. This is basically 1. So this is 1 and 9. This is basically 3. And this is 2. So this is 23. This is basically 1. And this is basically 1, 2, 4, 8A. All right. So now in denary, this is 1, 2, 4, 8, 16. So 16 and 8, 4, and this is 25. This is hexadecimal. And this is denary. This is 25. This is 1, 2, 4, 3, 8, 16, 32. 32 and 3, 36. This is 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 32 and 128 is basically 160. This is 161. So our answer is this. Okay. So hexadecimal value 1B. So hex में अगर हम इसको निकालें, so this is basically 8 and 2, 10 and 1, 11. So this is B and this is 1. So this is 1B. This is basically 1 and this is again B1. This is 1A and this is 1. So 1A. So 1B is this one. Give one way the hexadecimal is used in website development. For colors, give one way hexadecimal is used in low-level programming language. For memory addressing. All right. Now, May, June 2021 P11. Okay. Benedict has a computer that is assigned an IP address. The IP address is this 198.167.214.0. The IP address is represented as denary value. So what is 167? So what you have to do is 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. All right. So again, अब आपको क्या करना है? आपको 167, 128 is less than 167. So 167 minus 128, this is 39. 64 is bigger than 39, but you will basically be subtracting 32 from 37. So we are left with 7. So 16 is bigger, 8 is bigger, 4 is not. So 7 minus 4 is 3. 3 minus 2 is 1. 1 minus 1 is 1. So this is 167. So let's add this up. 128 plus 32 is 160, plus 4 plus 2 plus 1 plus 7 is basically 167. So there we go. 214. 214 minus 128 is 86. 86 minus 64 is 22. 32 is bigger than 22. 16 is not. So minus 16. 22 minus 16 is 6. 8 is bigger than 6. 6 minus 4 is 2. 2 minus 1. 2 minus 2 is 0. So this is it. So let's check it. So 128 plus 64 is 192 plus 16. It is 208 plus 6. So this is 214. So this is done. Okay. All right. A denary value can be converted into hexadecimal and binary. Complete the table to show the hexadecimal and binary. So 49 का binary अगर हमें निकालना है, तो 49 का binary हमें निकालने के लिए जो है वो 49 का हमने binary निकाला, तो ये बन गया 0011 000 1. All right.
So this is 48 and 149. अब हमने इसको करना है hex में. So this will be 3 and 1. 123 का हमें निकालना है. So 123 का निकलेगा 011111011. ओके, तो इसका जो हेक्स निकलेगा वो निकलेगा 7 और B is 11. Okay, so now 200. So 200 का निकलेगा 1100 or 1000. So 128 plus 64 is 192 plus 8. All right. So this will become C and B. C and 8. Okay. So this is C8. So very simple, very straightforward. So give two benefits to user of converting values to hexadecimal. The size of the number shortens, the chances of errors are reduced. Okay, and on a screen and on paper, number takes less space, easy to remember. Okay, hexadecimal is used to represent HTML colors, codes in computer science, identify other ways. Memory addressing, color coding, MAC addresses, memory dump, these are all basically hexadecimal uses in computer science. Okay, now October, November 2020, 4 denary to 8-bit binary conversions are given. Okay, so 145 is originally 1001 0001 1001 0001, so this is correct. 179 is 1011 0011, so this is basically wrong. This has to be 0011, so this is incorrect. Then comes 11 is 1011, so this has to be 0, this has to be 1, so this is incorrect. 100 is basically, it has to be 4, so this is incorrect as well. Okay, all right. So 4 is 1 2 4, 3 is 1 2. B7, so this is 7 1 2 4 4 5 6 7, and B is 11 8 9 10 11. F is all 1, 0 is 0. Okay, अब देखें, give the hexadecimal value of 12-bit binary. So this is basically 4 bits, this is again 4 bits, and this is again 4 bits. So this is 0, this is basically E, because this is 14, and then we have got 9, so this is OE9. Okay, now give denary value of each of the 3 12 bits. The 12 bits are like 1 2 4 8. This is 12 in denary. This is 1 2 4 8 16 32 64. This is basically binary 1 2 3 4 11 000 1 1 0. So this is basically 198. 4 zeros, and then we have got 1100 and 0110. So this is 198. And then comes 0100 11 0 0 0 0 0 1. All right, let me tell you how to deal with it. Okay, देखें, this is 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024. Okay, so we are going to add 1024 plus 128 plus 64 plus 1. So this gives us what?
01 01 00 11 1 2 3 4 5 1. So this gives us 1217. 8 and 4 12, 16 7 1, 2 2 4 5, 5 and 6 11, 1 1 and 1 2, and this. So this is 1217. So what you have to do, you have to go on 1 2 4 8 16 32 64 128, then 256 51 2024 2048 4096. That is how it goes. I don't think that they will have any question greater than 3000 for you. Okay, but this is my expectation. All right, so let's see if there is any different number. Yes, this is F 9 and 2. So this is F, this is 9, this is 2. So this is 2, this is 9, this is F. This is A 1 0. आप देखें ये 4 बिट्स में ही हुआ है, तो ये 0 है, ये 1 है, और ये A है. A is 10. So this is very simple. Okay. Show the content of the register after the shift has taken place. तो अच्छा देखें. An 8-bit binary register contains this value. Convert the binary value to denary. So this is basically 00 11 01 00. So this is basically 52. The content 00 11 0100. Yes, this is 52. The content of the register shifted one place to the right. तो right का मतलब क्या हुआ? ये multiply by 2 हो जाएगा. ठीक है? Sorry, divided by 2 हो जाएगा. So this is basically even number. तो ये simply हमारा जो है वो तो ये हमारा जो है ये सिंपली हो जाएगा 26. अब आप खुद देख लें 1 2 4 8 और 16. 16 प्लस 8 क्या हुआ? 24 और प्लस 2 ये देखें 26 हो गया, क्योंकि आपने राइट शिफ्ट किया है ना. अब then the content of registers at the start of question 4 are shifted 2 places to the left. So 52 को जब आप लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? अब आप देखिए ये 2 बिट्स लेफ्ट से गिर जाएंगे और यहाँ पे आपके पास 2 बिट्स आ जाएंगे. सो बेसिकली ये बन जाएगा 1 1 0 1 0 0 0 0. तो हुआ क्या कि ये वाला शिफ्ट बाहर हो, एक शिफ्ट में ये बाहर हो गया, एक शिफ्ट में ये बाहर हो गया. सही है. तो अब इसका इफेक्ट बताना है. स्टेट द इफेक्ट ऑफ शिफ्ट ऑन द डेनरी वैल्यू. सो व्हेन द फर्स्ट शिफ्ट अकर्स 52 becomes, when the first shift occurs 52 becomes 104 first shift में, and then 104 into 2 becomes 208 in second shift. All right, so this is first shift, this is second shift. Okay, let's see if there are different questions. Explain why the data is stored as binary in computer. We had enough of it. Okay, the current content of general purpose register X are this. The content of X represent 2's complement. Convert the value. अब आप देखें ये 1 2 4 8 16 32 64 and minus 128 है ये. ठीक है. अब आपने 32 plus 16 किया plus 8 किया plus 2 किया. तो 32 और 16 हो गया 48 56 और ये हो गया 58. और ये क्या है? -128. सो -128 प्लस 58. ठीक है ना. सो -128 प्लस 58 आपके पास बन गया माइनस का 70.
ओके। अब इस माइनस के 70 को चेक करने का एक तरीका, और आपके पास ये जो नंबर था ये क्या था, 10,111,010। तो ये है नेगेटिव का नंबर। अब हम पहले अगर इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लें तो हमें पता चल जाएगा, पहले 1 तक सेम रखें फिर सबको रिवर्स कर दें। तो अब आप देखेंगे 64 है और ये 4 है और ये 2 है। तो अगर आप 64 को और 4 को ऐड करें तो 68 बनेगा, प्लस 2 ये 70 बन जाएगा। तो ये बेसिकली प्लस का 70 है, तो एसेंशियली ये माइनस का 70 है। आपने क्रॉस चेक कर लिया, दिस इज वेरी इजी। ओके। तो तरीका क्या है कि अगर आपके पास ये नंबर नेगेटिव हो तो आप इसको पॉजिटिव बनाएं और उसी का नेगेटिव बता दें कि ये वो था। यानी कि मैंने क्या किया, सिंपली पहले 1 तक सेम रखा और फिर सबको उल्टा कर दिया। अब इनको ऐड कर लिया कि ये 64 है, ये जो है वो 4 है और ये जो है वो 2 है। तो 64 और 4 68 और 2 70 हो गया। तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल नंबर -70 था। अच्छा, अभी लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टॉप वॉच यूजेस 6 डिजिट्स टू डिस्प्ले आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड। The stopwatch is stopped at 2 hours, 1 minute and 58 seconds. Okay. So an 8-bit register is used to store each pair of digits. Write hours. Hours अब आप देखें ये 2 है, ठीक है। तो hours को अगर हम लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 128। मिनट्स हमारे पास कितने, 31। 31 का मतलब हो गया 1, 2, 4, 8, 16। अब 32 था ना, तो 32 से पहले अगर आप सारे 1 लगा देंगे तो 31 बन जाएगा। सो दिस इज 2, दिस इज 31। अब 58 बनाना है, तो 58 बनेगा 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, ये हो गया 48। 48 और 8 हो गया 56 एंड 2, ये हो गया हमारे पास 58। ओके। तो ये हमारे पास है 2 घंटे 31 मिनट और 58 सेकेंड। द स्टॉप वॉच इज स्टार्टेड अगेन एंड देन स्टॉप। व्हेन द वॉच इज स्टॉप द बाइनरी, द 8-bit बाइनरी रजिस्टर इज शोन 1, 2, 4। तो ये हो गया आपके पास 5, 8, 16, 32, 64 एंड 128। ये हो गया हमारे पास 16 and 8 24 and 2 26। 16 and 8 24 and 2 26। और ये हो गया हमारे पास 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 63 minus 8। So this is basically 55. Okay, so this is 55. So 5 hours 26 minutes and 55 seconds. 5 hours 26 minutes and 55 seconds. All right, so that's it. I'm going to share this document with you people in your group so that you could practice it yourself if you like to. बाकी आगे आपकी मर्जी है।
चलें जी, ये डॉक्यूमेंट मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। ऑलराइट, वो डिलीट हो गया, जरा एक सेकंड रुकिएगा, आई एम रीलोडिंग इट, वो कुछ गड़बड़ हो गई है। प्रॉबेबली अब चला गया है, जरा चेक कीजिएगा, मुझे कोई भी कंफर्म कर दे। ऑलराइट, थैंक यू बेटे। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, नाउ लेट्स गेट बैक टू द सिलेबस। ऑलराइट, टेक्स्ट, साउंड एंड इमेज। Okay, so understand how and why. Understand how and why computer represents text and the use of character sets, including American Standard Code for information interchange. Understand how and why a computer represents sound, including the effects of the sample rate and sample resolution. Okay, so basically now we are going to see the coding system
ठीक है, कि कोडिंग सिस्टम्स जो है वो टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के किस तरह काम करते हैं। अब इसके अंदर जो है वो हमें चाहिए टेक्स्ट इज कन्वर्टेड टू बाइनरी, to binary to be processed by computer. Unicode allows for greater range of characters and symbols than ASCII, including the different languages and emojis. Unicode requires more bits per character. इसके बारे में भी अभी हमें डिस्कस करना है। एंड उसके बाद हमें देखना है साउंड का, ठीक है। So a sound wave is sampled for sound to be converted to binary, which is processed by the computer. The sample rate is the number of samples taken in a second. ये अभी हमें डिस्कस करना है। तो अच्छा, अब देखें, थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। देखिए, टेक्स्ट जो होता है वो बेसिकली हम उसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। देखें, every single character over the keyboard has an associated number. आपके कीबोर्ड पे जो भी एक कैरेक्टर है वो बेसिकली जो भी की बनी हुई है उसका एक एसोसिएटेड नंबर है। देखिए, हमें हर चीज को जो है ना वो ट्रांसफर करना है नंबर में, वेरी सिंपल। तो हम उसको उस वक्त तक ट्रांसफर नहीं कर सकते नंबर में जब तक कि हमारे पास उससे रिलेटेड कोई नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन ना हो। तो जब टेक्स्ट होता है तो टेक्स्ट में जो भी आपके पास की है उस की को एक नंबर दे दिया जाता है, वो दुनिया में स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, ठीक है, वो स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। तो every single character over the keyboard has an associated number. This number is called ASCII. तो अब आप देखें, आपको याद नहीं करना, लेकिन बहरहाल आपके अंदाजे के लिए, जैसे ए का 65 है, बी का 66 है, सी का 67 है। तो इस इन नंबर्स की स्टैंडर्ड्स को हम लोग जो है वो कहते हैं कैरेक्टर स्कीम या कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम, ठीक है। तो कई कोडिंग सिस्टम है
आपके पास जो है वो एस्की और यूनिकोड आपके सिलेबस में है, तो उनको देख लेते हैं. तो representation, what basically we are going to discuss is representation of text and character sets, ASCII और यूनिकोड. ठीक है. तो computers process and store all data including text in binary form. To represent text character sets such as ASCII यानी कि American Standard Code for Information Interchange and Unicode are used to map individual characters to unique binary codes. ये मैपिंग होती है कि A को 65 दे दिया और B को 66 दे दिया, तो 65 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 66 को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, C को 67 को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. So ASCII and Unicode are used to map individual characters to unique binary code. So text conversion to binary. Text is converted to binary using predefined character set that assigns a specific binary code to each character. This allows computers to process, store, and transmit text as binary data. So whenever you type a key over your keyboard, basically that key is converted to its corresponding binary number. तो ASCII, ये वाला जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं ASCII. ASCII is widely used character encoding system that represents 128 characters, including uppercase and lowercase, English letter, digits, punctuation marks, control characters. और ये जो है 7 bits यूज करता है. It is और जो 8th bit होता है वो parity का होता है. It is limited to its ability to represent characters from other languages, क्योंकि इसमें हमारे पास ज्यादा जगह नहीं होती, सिर्फ 7 bits होते हैं. 7 bits में आप 128 characters यूज कर सकते हैं, तो 128 characters में हम उससे ज्यादा दूसरी लैंग्वेजेस वगैरह को इस्तेमाल नहीं करते. आजकल जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह देखते हैं तो वहां पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट वर्ड्स आते हैं अदर देन इंग्लिश, यानी कि हमारे पास उर्दू भी आ रही होती है और अरबी भी आ रही होती है और अदर लैंग्वेजेस चाइनीज भी नजर आ रही होती है. तो इट मीन्स दैट हमारे पास नए सिस्टम्स भी बने. तो एक और सिस्टम बना था जिसका नाम था एक्सटेंडेड ASCII, लेकिन वो इतना पॉपुलराइज नहीं हुआ. तो हमारे पास जो है बेसिकली जो पॉपुलराइज हुआ है वो हुआ है यूनिकोड. इस वक्त जो हमारे पास है वो यूनिकोड है. So Unicode is a more extensive character encoding system that supports a wide range of characters and symbols, including those from different languages. इसमें हम mathematical notations भी बना सकते हैं, emojis भी इसमें आ सकते हैं. It overcomes the limitation of ASCII by providing unique codes for over a million characters. सही है ना. तो हमारे पास ASCII में इतने characters नहीं होते, इसके अंदर हमारे पास 1 million से भी ज्यादा कैरेक्टर्स हैं. यूनिकोड रिक्वायर मोर बिट्स पर कैरेक्टर कंपेयर टू ASCII. जो हमारे पास कॉमन इम्प्लीमेंटेशन है उसमें 16 बिट्स भी हैं, 32 बिट्स भी हैं पर कैरेक्टर. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर हमने हमारे सिलेबस में एक स्टैंडर्ड है कि यूनिकोड जो होगा वो 16 बिट्स में जो है वो स्टोर होगा और जो ASCII कोड है वो 8 बिट्स में स्टोर होगा. तो ASCII and universal code are worldwide standards. ASCII 1 बाइट लेता है और यूनिकोड जो है 16 बिट 2 बाइट. तो अगर अली लिखा हुआ है तो आप अली को जब सेव करेंगे ASCII में तो 3 बाइट ले रहा होगा, और यूनिकोड जो है वो A के लिए 2 बाइट लेगा, L के लिए भी 2 बाइट लेगा, I के लिए भी 2 बाइट लेगा, तो वो 6 बाइट्स ले रहा होगा. ठीक है ना. एक्सटेंडेड ASCII को हम स्किप कर रहे हैं, ये हमारे सिलेबस में अब नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं. तो ये हो गया सिस्टम. अब आ जाए इमेज के ऊपर. अच्छा, अब क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एक जुमला लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल माय नेम जफर अली खान, तो उनको बोलेंगे इसमें ये कितने बाइट्स में सेव होगा. आप जब तक अनटिल और अनलेस इट इज बेसिकली मेंशन्ड, हम यूनिकोड को कंसीडर नहीं करते हैं, हम ASCII कोड के हिसाब से आंसर देते हैं. क्योंकि मैंने ये देखा है कि पास पेपर में जब तक यूनिकोड मेंशन नहीं होगा तो हम उसको ASCII कोड के तौर पे ही समझते रहेंगे. ठीक हो गया. तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ASCII कोड. तो जफर अली खान में जफर में हो गए 5 कैरेक्टर्स, अली में हो गए 3 कैरेक्टर्स 8, और खान में हो गए
4 कैरेक्टर्स 12, लेकिन 12 का नहीं है ये, जफर और अली के बीच में स्पेस है, स्पेस इटसेल्फ इज अ कैरेक्टर, सो वट एवर दैट इज ओवर योर कैरेक्टर, सॉरी योर कीबोर्ड इज बेसिकली काउंटेड। तो हमारे पास क्या हुआ, जफर 5 कैरेक्टर्स, अली 3, 8 हो गए, खान में 4 हो गए, 12, और फिर 2 स्पेसेस इन द मिडल बिटवीन जफर एंड अली एंड अली एंड खान, तो दैट इज 14 कैरेक्टर्स। लेकिन अगर यही यूनिकोड में सेव होगा तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि एवरी कैरेक्टर इज टेकिंग 2 बाइट्स, सो इट मींस दैट इट इज गोइंग टू टेक 28 बाइट्स। ठीक हो गया। अब आ जाए आप इमेज पे। तो आपको टेक्स्ट के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करके, जिसके अंदर सारे आएंगे पंक्चुएशन वगैरह सब, डॉट, स्पेस, कोलन, सेमी कोलन, हैश, एट, डॉलर, परसेंटेज, कैप, एंड स्टार ब्रैकेट, finish, large bracket, curly bracket, slash, bar, everything. Okay. Now, images. So, images, this part, understand how and why computer represents an image, including the effect of the resolution or color depth. So an image is a series of pixels that are converted to binary, which is processed by a computer. The resolution is the number of pixels in the image, the color depth is the number of bits, whatever. इसको भी हम जरा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब जो है इमेज देखते हैं। सो अब आप देखें इमेज में क्या हो रहा है। इमेज जो भी बनता है स्क्रीन पर, जो आपको इस वक्त भी स्क्रीन नजर आ रही है, वो छोटे छोटे बहुत सारे इमेजेस से मिलके बन रही है। सॉरी, एक इमेज जो है, जो स्क्रीन है, बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल्स से मिलके बन रही है। सही है। तो पिक्सल जो है एक बहुत छोटी फॉर्मेशन होती है सिस्टम के अंदर। सो अब ये जो है, अब जो है, अब आप देखें यहाँ पर सारे पिक्सल्स हैं। अब ये जो पिक्सल्स हैं, एक इमेज है, लेट्स से ये इमेज जो है वो इतने पिक्सल्स से मिलके बना हुआ है। अब इनमें आप देखें, यहाँ पे जितने पिक्सल्स ऐसे हैं, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो 10 by 5 हमारे पास यहाँ पर पिक्सल्स हैं। ठीक है। अब ये जो 10 by 5 पिक्सल्स हैं हमारे पास, विड्थ में 10 और हाइट में 5, तो 10 into 5 ये कितने हो गए, 50 पिक्सल्स। तो ये 50 क्या हो गई, रेजोल्यूशन। ये हमारे पास रेजोल्यूशन है पिक्सल्स की। सो एवरी पिक्सल शोज अ कलर। अभी कितने कलर दिखा सकता है, ये डिपेंड करता है कि इस पिक्सल का डाटा बाइनरी में कितने बिट्स में सेव हो रहा। ठीक है, बाइनरी में कितने बिट्स में सेव हो रहा है। नंबर ऑफ बिट्स सेव्ड पर पिक्सल को हम कहते हैं कलर डेप्थ। अब जैसे फर्ज करें कि एक पिक्सल का डेटा 8 बिट में सेव हो रहा है, तो 2 की पावर 8 हो गई, तो ये जो 8 है ये क्या कहलाएगा, कलर डेप्थ। एवरी पिक्सल शोज अ कलर, a color is saved using certain number of bits called color depth। तो 2 की पावर 8 हो गया, तो इसका मतलब इसमें 256 कलर्स आप दिखा सकते हैं इस एक पिक्सल में। अगर इसी को हम 16 पे ले जाएं तो 2 की पावर 16 जो है वो बन जाती है 65,536। तो इसमें क्या होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि आप 65 के कलर्स, आजकल अगर आप अपने फोन्स में देखेंगे तो इन जनरली जो है वो आपके पास 16.7 मिलियन कलर्स आते हैं। 16.7 मिलियन जो है वो बनता है अबाउट 2 की पावर 24, 3 बाइट्स होते हैं। 8 + 8 16 + 8 24, तो 24 बिट्स को हम कहते हैं ट्रू कलर। अगर ब्लैक एंड व्हाइट होगा तो उसको हम कहेंगे मोनोक्रोम, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट। सिर्फ 0 होगा तो 1 और
1 होगा तो 0 होगा तो ब्लैक और 1 होगा तो व्हाइट होगा। फिर 8 बिट्स हो गए, तो 8 बिट्स को स्टैंड 256 कलर्स होते हैं तो इसको हम कहते हैं ग्रे स्केल। 24 बिट्स होते हैं उसको हम कहते हैं ट्रू कलर। 48 और बियॉन्ड भी होते हैं, जो मॉडर्न जो सिस्टम्स है ना उसमें पर पिक्सल 48 बिट्स भी सेव हो रहे होते हैं। सो बेसिकली आप जितने कलर्स बढ़ाते चले जाएंगे उतने बिट्स पर पिक्सल इंक्रीज होते जाएंगे, उससे फाइल का साइज बड़ा होता जाएगा, लेकिन स्क्रीन और कलर शार्प होते चले जाएंगे। ये जो पिक्सल होते हैं ना, ये पिक्सल खुद भी माइन्यूट लेवल पे, आपके सिलेबस में इतना है नहीं, लेकिन माइन्यूट लेवल पे जाके ये पिक्सल भी 3 कलर का होता है, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज होती है ना वो 3 कलर से बनती है, आर जी और बी, ठीक है ना, रेड ग्रीन एंड ब्लू। सो उससे मिलकर के बनती है, ठीक है। तो ये आपको जहन में रखना है। So what is resolution? Number of pixels in the image. Or what is color depth? Number of bits saved per pixel is the color depth. Color depth defines the range या number of colors. An image is saved using colors और image is a list of colors. कैसे पता चलता है? Basically हर pixel में color save होता है। So pixel का जो data है वो एक color का number है, ठीक है। पिक्सल का जो डाटा है वो कलर का नंबर है, वो नंबर का कलर उस पिक्सल में शो होता है। फिर अगले पिक्सल के लिए बिट्स पढ़ते हैं, फिर उस बिट्स में जो भी नंबर होता है, यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर हर कैरेक्टर का एक नंबर था, इमेज में हर कलर का एक नंबर है जो कि उस पिक्सल में सेव होता है। तो जिस पिक्सल में जो भी कलर दिखाना होता है उसका नंबर सेव कर देते हैं। ओके, so number of bits saved per pixel is color depth. तो ये है सिलसिला। तो आप इसको जरा एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं ताकि फिर हम इसके फार्मूला के ऊपर जा सकें। इमेजेस जो हैं दे आर पिक्सल्स, एन इमेज इज मेड अप ऑफ टाइनी स्क्वायर कॉल्ड व्हाट, पिक्सल्स। जैसे मोजाइक होता है, each pixel has a specific color and when they all come together they form the whole image. Computers need to convert these pixels into binary 1 and 0 to understand, process and store the image. There comes in resolution. Resolution is the total number of pixels in an image. It is usually mentioned as width and as what, height. The more pixel an image has, the clearer and more detailed it will be. But keep in mind that more pixels also mean a larger file size, which can take up more storage space and longer time to load and send. Then comes in color depth. Color depth is the number of bits, binary digits यानी कि used to represent the color of each pixel. More bits per pixel allow for more colors in the image, making it more vibrant and realistic. However, using more bits for each pixel also increase the file size of the image. All right, so फिर हमने डिस्कस किया कि 1 bit जो है वो black and white image होता है, which is only 2 colors. 8 bits का मतलब हुआ 2 की power 8, so that is basically 256 colors. 0 to 255, that is also called grayscale. And then the standard one, which is the mostly used, is 24 bit यानी कि 3 bytes. That is called true color. Over 16 million colors होते हैं, which is basically 16.7 million color. The file size is affected when you increase the data, increase colors, increase pixels, the quality increases. The quality and file size of an image depends on its resolution and color depth. Higher resolution and color depth generally result in better image quality, but they also lead to larger file sizes. To get the best image quality while keeping the file size manageable, we need to find the right balance between the resolution and the color depth for the specific needs, whatever the needs we have. So if we conclude it,
when a computer represents an image, it converts the image pixels into binary data. The resolution and color depth of the image determines its quality and file size. High resolution and color depth lead to better image quality, but also larger file size. So it's essential to find the right balance between them. Okay. Now let's discuss about the formula. Okay, so formula is image file size is equal to resolution multiplied by color depth. Resolution multiplied by color depth. So पिक्सेल्स में हमें जो है कलर डेप्थ के अंदर हमें विड्थ चाहिए होगी और हमें जो कलर डेप्थ के अंदर विड्थ चाहिए होगी और हाइट चाहिए होगी और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कलर डेप्थ में बिट्स पर पिक्सल अभी हमें चाहिए होंगे विच इज कलर डेप्थ. जब हम सबको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो दैट आंसर विल बी बेसिकली इन बिट्स. ओके, सो resolution multiplied by color depth ओके. सो अब आप देखें आपके पास 256 कलर्स हैं. 256 कलर्स का मतलब हो गया कि 2 की पावर 8 से 256 बनता है, तो दैट इज योर कलर डेप्थ. ठीक है. टू कैलकुलेट द साइज ऑफ एन इमेज फाइल देखें तो फिर ये होगा कि हम क्या लिखेंगे, फाइल साइज इन बाइट्स जो होगा वो इस पूरे को करने के बाद डिवाइड बाय 8 करना होगा. कलर डेप्थ निकाली, रेजोल्यूशन निकाली. अब रेजोल्यूशन को हमने लिखा कि भाई हमारे पास जो रेजोल्यूशन है वो 500 मल्टीप्लाई बाय 100 है. विड्थ में 500 है और हाइट में तो ये होगा हमारे पास 50,000. 50,000 को जो है वो 50,000 होगा हमारे पास पिक्सल्स. उसके बाद हमने रेजोल्यूशन ले ली 50,000 और हमारे पास कलर डेप्थ है 8, तो ये हो गया 400,000 बिट्स. इसको फिर हमने डिवाइड किया 8 से तो हमारे पास आ गया 50,000 बाइट्स. तो दिस इज 50,000 बाइट्स. अब जो भी आपको आंसर जिस तरीके से भी करना हो आप इसको कर सकते हैं. तो टू कैलकुलेट द साइज ऑफ एन अनकम्प्रेस, देखिए अनकम्प्रेस फाइल है, कंप्रेस वम्प्रेस नहीं है, सीधी सीधी वो फाइल है ये, इसको हम कहते हैं बीएमपी है ना, बिटमैप फाइल है ये. तो हम जो है वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. फाइल साइज एंड बाइट्स जो है वो हमारे पास इमेज की विड्थ है पिक्सेल्स में और हाइट है पिक्सेल्स में, और उसको फिर हमने कलर डेप्थ से मल्टीप्लाई किया हुआ है और उसके बाद हमने उसको डिवाइड किया हुआ है 8 से. तो 8 से क्यों डिवाइड करते हैं, ताकि बाइट्स में आ जाए. सही है. तो इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट हमारे पास जो स्कीम ऑफ वर्क है ना वो अब एमबी और केबी नहीं है, वो एमआईबी और केआईबी है, कीबी और मीबी. वो फिर हम देखते हैं अभी, उसके बाद हम आगे चलेंगे. अच्छा, अब आप आ जाएं साउंड पे. साउंड में बेसिकली क्या होता है कि जो साउंड है वो एक नेचुरल फिनोमिनन है. साउंड को सिस्टम क्या करता है, साउंड जो है वो सिस्टम रीड करता है टाइम टू टाइम. अब एक टाइम से दूसरे टाइम के बीच में ना गैप आता है. जब सिस्टम रीड करता है तो ये जो रेड लाइंस आपको नजर आ रही हैं यहाँ पे, ये रेड लाइंस बेसिकली जो हैं वो आप समझ लें रीडिंग्स हैं. ठीक है. अब ये जो हाइट है, ये हाइट है, ये एम्पलीट्यूड है. अब सिस्टम जब रीड कर रहा है तो उस वक्त साउंड यहाँ पर है, तो इसने 0 पे रीड किया, फिर थोड़ी देर के बाद रीड किया, तो यहाँ से यहाँ तक मिस हो गई साउंड, यानी कि ये सारी साउंड मिस हो गई. अब इसके बाद उसने जब रीड किया तो उसने रीड किया 3 पे, फिर रीड किया उसने 1 पे, फिर रीड किया 7 पे, फिर रीड किया उसने 1 पे, फिर 4 पे, फिर 2 पे, फिर 9 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 3 पे. ये रीड करता चला गया, लेकिन ये बीच बीच में गैप छूट गए. ठीक है. तो ये जो एक रीडिंग है जो ये रेड में नजर आती है, ये बेसिकली इसको हम कहते हैं सैंपल. क्या कहते हैं हम इसको, सैंपल. एक रीडिंग को हम बोलते हैं सैंपल. ठीक हो गया.
और जो रीडिंग्स हैं, सारी रीडिंग्स को हम बोलेंगे द प्रोसेस इज कॉल्ड सैम्पलिंग, ठीक है। तो साउंड रिप्रेजेंट्स इन कंप्यूटर्स, sound representation in computers involve converting analog sound into digital binary data. This process includes sampling, सही है, sampling the sound wave and quantizing the samples to, quantizing means to convert them to digital form. ठीक हो गया। तो साउंड वेव की जो सैम्पलिंग है वो कैसे होती है? साउंड वेव की सैम्पलिंग, टू कन्वर्ट अ साउंड वेव इनटू बाइनरी डेटा, इट इज सैम्पल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, बराबर 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 बराबर। द कंटिन्यूअस एनालॉग साउंड वेव इज मेजर्ड एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन टाइम, जैसे जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, creating a discrete set of values that can be converted to binaries. जैसे यहाँ पे 0 3 1 7 1 4 2 4 2 9 4 5 3 ये आ गया, सही है। तो number of samples taken per second is called sample rate. The sample rate is the number of samples taken per second. तो ये हमने लेट से यहाँ पर अभी आपको दिखाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 samples per second. So ये sample rate है, सही है। टिपिकली मेजर्ड इन हर्ट्स फ्रीक्वेंसी होती है कि हाउ मेनी सैंपल्स पर सेकंड। हायर सैंपल रेट्स रिजल्ट इन मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल साउंड। अब देखें ना, यहाँ पे बीच में यहाँ से यहाँ तक साउंड मिस है, यहाँ से यहाँ तक मिस है, यहाँ से यहाँ तक मिस है, यहाँ से यहाँ तक मिस है। जो अगर आपको इस मिसिंग पार्ट्स को कंप्लीट करना है तो फिर आप क्या करेंगे, आप ज्यादा सैंपल्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो ज्यादा सैंपल्स मतलब आप सैंपल रेट को बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन increasing the sample rate also increases the amount of data generated at the file size increases. Common sample rate जो है हमारे पास, जैसे CD के अंदर होता है 44.1 किलो हर्ट्स और DVD में होता है 48 किलो हर्ट्स, और जब हम फोन पे बात करते हैं वो 8 किलो हर्ट्स, इस तरीके से होता है। तो अब आ जाए सैंपल रेजोल्यूशन पे। सैंपल रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि हाउ मेनी बिट्स यू आर गोइंग टू सेव पर सैंपल। अगेन यहाँ पे देखें रेंज वाली बात आ जाती है, सही है। हाउ मेनी बिट्स यू आर गोइंग टू सेव पर सैंपल। तो sample resolution, also called bit depth, refers to the number of bits used to represent each sample. Higher sample resolutions provide a more accurate representation of the original sound, allowing a greater dynamic range and better quality sound. Okay. However, higher sample resolutions, sampling also increase the amount of data generated and the file size. सही है। सो कॉमन सैंपल रेजोल्यूशन जो है हमारे पास 16 बिट की होती है, जो कि हम सीडी में चलाते हैं, 24 बिट की होती है जो डीवीडी में होती है, ठीक है। अब अफेक्ट क्या होते हैं? Effects of sampling rate and sample resolution जो है, increase the sample rate and sample resolution improves the accuracy of the digital sound because it will not have any gaps, so missing sound नहीं होगा उसके अंदर, resulting in better sound quality, ठीक है ना। However, this also increases the number of data generated, leading to larger file size. So this is very common that whenever you increase the data, the quality and the robustness and the appearance and feeling of that output becomes better. It becomes better. All right. Balancing these factors is essential when choosing sample rates and resolution for different applications, considering the desired sound quality, available storage, and sometimes if you like to transmit the data over the internet or something, so you would have to actually be more considerate about your bandwidths. ठीक हो गया। So अब इसके हम फॉर्मूला पे आ जाते हैं। So साउंड फाइल साइज का फॉर्मूला है, वो है sample rate, how many samples you are recording per second, multiply by bit depth, means sample resolution, how many bits per sample you are saving, and times in second, how many seconds you are recording that sound. All right, so let's see what else is there. So this is complete. Let's solve few past paper questions and then we move on. Hold on for a sec.
All right. So Xiaomi created the following logo. All right. The finished logo is 160 pixels wide and 160 pixels height. The image has a color depth of 3 bytes. 3 bytes means 3 into 8 means 24. 3 bytes per pixel. Calculate the estimated file size. So that is simple, but you should understand that calculators are not allowed. Okay, so calculators are not allowed, so you be very understandable about it. So what is basically image file size is equal to resolution multiplied by color depth. So what is resolution? 160 by 160. और color depth क्या है? 24 bits. Okay, so 160 multiplied by 160 is 25,600. This is resolution. Multiply by 24. This is 600. 14,400 watt bits. Let's divide these bits by 8 to make it bytes. So that is 76,800 bytes. Okay. Now 76,800 bytes are divided by 1024 to make it kilobytes or kibibytes. So let's divide it by 1024. So that is basically 75 kibibytes. All right, so that is very simple. Whatever the answer that will come will be in number of bits. So you have to divide them by 8 to make bytes. Okay. So divide bytes by 1024 to make it kilobyte. Okay, what is sampling? So sampling is basically to convert sound wave into binary data. It is sampled at regular intervals. The continuous analog sound wave is measured at specific points, creating discrete set of values that is called sampling. Okay. Now, number of samples per unit of time, that is sample resolution. Sorry, sample rate. The number of samples per unit of time, that is sample rate. And then comes sample resolution. Sample resolution, also called bit depth. Sample resolution को हम लोग bit depth भी बोलते हैं. मैं आपको भेज रहा हूँ बेटा, पहले मुझे आप कंप्लीट करने दें, ये सब आपको भेज रहा हूँ. Bit depth बोलते हैं इसको, और refers to the number of bits used to represent each sample. Higher sample resolution provide more accurate representation of the original data. All right. Samira is creating an interactive multimedia presentation for the entrance to her hotel. Samira uses a computer to draw a logo for her hotel to save it as a vector graphic. The logo will be placed on the multimedia presentation and elsewhere, such as on sign and at entrance of the hotel. Samira emails the logo to a company that prints signs and other documentation. Describe how the logo is represented by the computer. Logo is represented how a logo image represented by the computer. So this is the question
So basically, a logo is an image, okay? A logo image is represented by a computer as a digital file consisting of binary data that stores pixels and color information. All right. So let me write it somewhere. A logo image is represented by computer in the digital file or form that saves pixels and color information. So pixel representation is basically a color in pixel representation. Each pixel represents a color. Okay. Overall representation makes an image. Okay. This is it. Every color is saved as number of pixels, number of bits per pixel. Higher the bits, more the colors can be represented. ठीक हो गया? All right. A digital camera takes a bitmap image. The image is 2000 pixels wide. By ये हम कर चुके हैं. Calculate the estimated size of the image file. A second image is taken. Leave it. Yes. Leonardo's mobile has an operating system. Leonardo uses mobile phone to record his voice. Describe how sound sampling is used by the mobile phone to encode the sound. We have just discussed it. Leonardo records his voice twice. His voice twice. Each recording is the same length and has the same sampling resolution. The first recording has a sampling rate of 44,100 Hertz. The second recording has a sampling rate of 2100 Hertz. Describe how the different sampling rates will affect the recording and this sound file. Higher this sampling rate, more quality sound is basically saved. Reducing sampling rate will reduce few samples, and that will basically makes the voice choppy and the quality will go down. That is very simple. Images sound. Okay. Last question. Xander creates a presentation that includes images, videos, and sound. The images are images. All right, good. The bitmap images the images are bitmap images. A bitmap image can be made up of any number of colors. Each color is represented by a unique binary number. Draw one line from each box on the left to the correct box on the right to identify the minimum number of bits needed to store the maximum to store each
मैक्सिमम नंबर ऑफ कलर्स। ऑलराइट, सो 68 बिट्स के लिए हमें कितने कलर्स चाहिए और कितने बिट्स चाहिए? 1 2। अब हम यहाँ पर ना देखें, ये वही है बेसिकली, 1 2 4 8 16 32 64 और 128। तो हमें देखें यहाँ तक जो है, अगर हम देखें तो हमें 7 बिट्स में 128 मिलते हैं और यहाँ पे हमें मिलते हैं 32। तो ये होगा पहला बिट, दूसरा बिट, तीसरा बिट, चौथा बिट, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। और इनकी रेंज हो गई, यहाँ पर 2 कलर है, यहाँ पे 4 कलर है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 कलर है, यहाँ पे 32 कलर है, यहाँ पे 64 कलर है, यहाँ पे 128 कलर है और यहाँ पे 256 कलर्स है। तो आप खुद देख लें, ये हो गई वर्थ, ये हो गए बिट्स, ये हो गए कलर्स। ऑलराइट, तो 68 कलर्स के लिए हमें चाहिए 7 बिट्स। ऑलराइट, 256 कलर्स के लिए हमें चाहिए 8 बिट्स। 127 कलर्स के लिए हमें चाहिए 7 बिट्स। और 2 कलर्स के लिए हमें चाहिए 1 बिट। 249 कलर्स के लिए भी हमें चाहिए 8 बिट्स। ओके, सो ये आ गया, वेरी सिंपल। So let me share this file with you people so that we could move forward to the next. Hold on. अब आ गई डेटा स्टोरेज एंड कंप्रेशन। 1.3। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा टेक्स्ट भेज दूं। ये मैंने आपको टेक्स्ट और कैरेक्टर्स का भेजा है। साउंड का भेज रहा हूँ। डेफिनेशंस आपने कही थी। इमेज,
ऑलराइट, ये मैंने आपको डेफिनेशंस भी भेज दी हैं और आपको मैंने पास पेपर के क्वेश्चंस भी आपके ग्रुप में भेज दिए हैं. नाउ दिस पार्ट 1.3. Data storage and compression. All right. Understand how data is measured. Okay. So nowadays we have got different measurement techniques as compared to what we did in last years. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? Data storage is measured using various units based on binary power of 2 and power of 10 systems. जो अभी तक हम पढ़ते रहे वो था 10 का system. So for this class we will focus on binary based units जो हमारे पास अब हमारे पास आ गए. So bit जो है smallest unit of data है representing a single binary digit 0 or 1. Nibble is basically 4 bits. Byte is basically 8 bits. Kibibyte is basically 1024 bytes. Mebibytes are basically 1024 kibibytes. GB bytes are basically 1024 mebibytes. TB bytes are basically 1024 GB bytes. PB bytes are basically 1024 TB bytes, or exabytes are basically 1024 PB bytes. These units are used to measure the size of data storage devices or digital files. Okay. All right. Calculating file size, अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, लेकिन फिर भी calculating file size for image and sound files, ये हमारे उसमें सिलेबस में है. इमेज और साउंड फाइल्स का हमें करना होगा. तो image file size, to calculate the file size of an uncompressed image, we have to use the same formula as we have discussed. साउंड का भी हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन बस एक चीज का ख्याल रखिएगा कि आपको जो है वो जब आप किसी भी साउंड का या इमेज की फाइल का साइज कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा बिट्स में. तो उसको आप डिवाइड बाय 8 करेंगे ताकि आप उससे निकाल सकें बाइट्स, और फिर बाइट्स को 1024 से करेंगे तो कीबी बनेगा, फिर उसको 1024 से करेंगे तो मीबी बनेगा, फिर 1024 से करेंगे जीबी बनेगा. मेरे ख्याल से जीबी से ज्यादा का आपके उसमें आएगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. अब आ गया इसके बाद हमारे पास कंप्रेशन. सो व्हाई डू वी नीड कंप्रेशन? सो data compression reduces the size of the file, okay, which has several advantages. सबसे पहला हमारे पास देखें, less bandwidth required. A smaller file needs less bandwidth to transmit over the networks like internet. Then comes less storage required.
Smaller files takes up less space on storage devices. Shorter transmission time. Smaller files can be sent or received more quickly. अच्छा, ये तो होगा इसके एडवांटेजेस, ये आपको याद करने हैं। इसके बाद आगे अंडरस्टैंड हाउ फाइल्स आर कंप्रेस्ड यूजिंग लॉसी एंड लॉसलेस कंप्रेशन मेथड्स। So lossless compression method reduces the file size without permanent loss of data. हमें इसमें जो है थोड़ा सा run length encoding को समझना पड़ेगा। तो there are two primary methods for data compression, lossy and lossless. Lossless compression, this method uses the file size without permanently, reduces the file size without permanently losing the data as it is described here. The original files can be fully restored from the compressed file. An example of lossless compression is run length encoding. जो हमारे पास PNG फाइल्स होती है ना, ऑफ्टन यूज्ड इन इमेज फाइल्स लाइक PNG, तो PNG के अंदर हमारे पास रन लेंथ एन्कोडिंग होती है। लॉसी कंप्रेशन, लॉसी कंप्रेशन में क्या होता है कि लॉसी कंप्रेशन के अंदर क्या होता है कि this method reduces the file size by permanently removing the data, usually in a way that it is least perceptible to human senses. जैसे हम फॉर एग्जांपल एक सर्टेन नंबर से ज्यादा कलर नहीं देख सकते तो इजाफी कलर चले आते हैं, हम सर्टेन नंबर से ज्यादा पिक्सेल्स नहीं देख सकते तो वो पिक्सेल्स चले जाते हैं, सर्टेन एम्पलीट्यूड से ज्यादा या कम, फ्रीक्वेंसी से ज्यादा या कम हम साउंड नहीं सुन सकते तो वो साउंड को रिड्यूस कर दिया जाता है। द कंप्रेस फाइल कैन नॉट बी फुली रिस्टोर्ड, जब हम ये कर रहे होते हैं तो लॉसी में कंप्रेस फाइल वापस रिस्टोर नहीं हो सकती। तो लेकिन फिर भी हमें ज्यादा पता नहीं चलता। जैसे आपको मैं बताऊं कि जो हमारे पास लॉसी कंप्रेशंस हैं उसमें आप देखें MP3 की जो साउंड्स हैं वो सबसे ज्यादा होती हैं, जो हमारे पास जिपैग हैं वो भी सारी लॉसी होती हैं। आप देखें इन दोनों में हमें पता नहीं चलता, इंटरनेट पर चलता ही जिपैग है, हमारे फोन्स भी जिपैग में लेते हैं, डाटा लूज होता है लेकिन इतना लूज होता है कि हम ह्यूमंस को पता नहीं चलता। तो लॉसी एंड लॉसलेस कंप्रेशन मेथड्स आर चोजन based on the specific requirements of the data, balancing between the need for this file size and acceptable level of data loss in order to control the quality. Okay, so ये अब इसके हम क्वेश्चंस वगैरह देख लेंगे। टेक्स्ट में आपको जो है वो जब बोलता हूं तो साथ साथ ही टाइप करके भिजवा देता हूं आपको, ठीक है। तो अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं पास पेपर्स में। फाइल्स भी मैंने आपको भिजवानी शुरू कर दी है ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें इसकी। ऑल राइट,
Okay, draw a line to connect each question to the correct answer. What is the denary base 10 equivalent of E? E is 14. 1 is equal to 1 GB is equal to 2 to power X. What is the value of X? 1 GB is equal to power of X. So what is the value of what is X? So X is basically जो है हमारा वो होगा तकरीबन 1 GB जो होता है वो हमारा होता है 1024 MIB एंड 1 MIB इज इक्वल टू 1024 GB. सो तो ये तकरीबन हमारा जो X होगा वो बनेगा आसपास 30 के. ओके दिस इज बेसिकली 30. होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट. अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं. एक स्टैंडर्ड है 2 की पावर 32 जो है वो होता है 4 GB. इसको याद कर लें आप, ये सब आपके काम आएगा. जब आपका एक बिट कम होगा तो ये जीबी हाफ हो जाएंगे. फिर जब एक बिट और कम होगा तो ये जीबी भी हाफ हो जाएंगे. तो ये जो है ना, ये आपको स्टैंडर्ड एक याद होना चाहिए. ठीक है, 2 की पावर 32 इज बेसिकली 4 GB. तो अगर आप 31 करेंगे तो वो 4 GB से हाफ होके 2 GB रह जाएगा, और फिर 30 करेंगे तो वो 1 GB रह जाएगा. ठीक है. हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन 1 बाइट? दिस इज 8. If a broadband data download rate is 40 megabits per second, how many seconds will it take to download? अच्छा देखें, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, 40 MIB जो हैं उनको डाउनलोड करना है 60 मेगाबिट्स है, ये सॉरी मेगाबिट्स है. ठीक है. और हमारे पास 60 MB की फाइल है. स्पीड क्या है 40 MIB, और फाइल क्या है 60 MIB बाइट्स है. तो बेसिकली हमें जो है वो इसको, ये जो बिट्स है ना, इनको बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. आप कैसे बिट्स को बाइट में कन्वर्ट करेंगे? आप इसको डिवाइड करेंगे बाय 8. तो जब आप 40 को बाय 8 डिवाइड करेंगे तो दिस विल बिकम 5. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाय 5 कर रहे हैं. अब दोनों यूनिट 60 और 5 दोनों बाइट्स में. ये बिट्स में था, हमने इसको डिवाइड बाय 8 करके बाइट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये भी बाइट्स में आ गया. अब आप 60 को 5 से डिवाइड कर लें, ये हो गया 12. तो इसका मतलब है कि वी नीड 12 सेकेंड्स. ओके, सो 12 सेकेंड्स. अच्छा, व्हाट इज द डेनरी बेस 10? ये हो गया 1 2 4 8 16 32. सो दिस इज बेसिकली 36. 32 प्लस 4 36. अच्छा, what hexadecimal value is obtained when two hexadecimal digits C and D are added together? अच्छा, अब देखें यहाँ पे वैसे तो ये 19 नजर आ रहा है, बचा ही यही है, लेकिन you need to understand C plus D is basically 19. हाँ, देखें C जो है ना ये हेक्स है, तो ये सारा हेक्स में है, ये पूरा सिस्टम हेक्स में है. हमें क्या करना है, C को 12 बनाना है, D को 13 बनाना है. इनको हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 25. ये पूरा सिस्टम डेनरी में. अब अगर आप इस 25 को हेक्स में कन्वर्ट करें तो आप कैसे करेंगे? 16 and 8 is 24 and 1. So 1
2 4 8 16 32 64 128। तो ये आपके पास क्या बन गया 9 और ये आपके पास क्या बन गया 1। तो आप देखें ये बेसिकली बेस 10 है और ये क्या है बेस 16। ये देखें तो ये बेसिकली 25 of base 10 is equal to 000110001 of base 2 is equal to 19 of base 16. You need to understand this, ठीक है ना? ये सिर्फ ऐसे ही नहीं करके छोड़ करके आ जाना है। अच्छा, a security system records video footage. 1 minute of video requires 180 MB of storage. 1 minute. The recording system can store several hours of video. Name and describe suitable storage device. Obviously, ये तो hard disk device, hard disk drive ही हो सकती है. Calculate how much storage would be needed for 2 hours of video footage. अब आप देखें 1 minute की 180 MB है. So 180 MIB per minute. So 180 multiplied by 60, 180 multiplied by 60, which is 10,800 MIB of storage. This is 1 hour per hour. Acha, it says that 2 hours. So 10,800 multiplied by 2. So 21,600 MIB for 2 hours storage. Okay, so calculate how much storage would be needed for 2. Show your working and give answers in GB. All right. So 21,600 MIB divided by 1024, which makes it 21.1 GIB. It is exactly 21.09375, so 21.1 GIB. Okay, so I have rounded it up. MP3 file compression reduces the size of a music file by 90%. A music track is 80 MB in size. Calculate the file size after compression. So 90%. So calculate the file size. 8 MB हो जाएगा. 10% हो जाएगा ना by 10 तो 8 MB हो जाएगा. How many MP3 files of size calculated above could be stored in 800? So 800 divided by 8 is basically 100 MP3 files. This is easy. Describe how the size of the text file can be reduced using RLE lossless compression. अच्छा, अब देखें RLE भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं. सही है ना? RLE जो है वो कैसे काम करता है? तो RLE जो है ना वो है रन लेंथ एनकोडिंग. ठीक है ना? तो बेसिकली होता क्या है कि it is a technique used to store and transmit data more efficiently without losing an information and compressing it. It's especially effective for compressing data with long
रन्स ऑफ द सेम वैल्यू। रन का क्या मतलब है? आप एक चीज को शुरू से आखिर तक पढ़ें और उसके अंदर पैटर्न्स तलाश करें, जो उसको पढ़ना है उसको हम कहते हैं लॉन्ग रन्स। रन लेंथ इसलिए इसको कहा जाता है। सच एज इमेजेस विद लार्ज एरियाज ऑफ द सेम कलर और टेक्स्ट विद रिपीटिंग कैरेक्टर्स। तो इसको हम इस तरीके से करते हैं। तो कहने का मकसद ये है, फर्ज करें कि जो है वो हम एक टेक्स्ट लेते हैं। अब हमारे पास एक टेक्स्ट है ए ए 6 बार कर लेते हैं इसको। फिर हमारे पास बी आ गया 5 बार। फिर हमारे पास सी आ गया 5 बार। ठीक है ना? अब हम इसको इस तरह नहीं भेजेंगे, ये तो ओरिजिनल फाइल हो गई। अब हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग और ट्रांसमिटिंग द एंटायर टेक्स्ट फाइल डेटा, RLE compresses groups of repeating characters and representing them as a pair. सब अब क्या लिखेगा ये, A6 B5 C5। so this is basically RLE। तो इसने क्या किया, रन लेंथ इसको पढ़ा लेफ्ट से राइट की तरफ, पैटर्न्स आइडेंटिफाई की, ये ए के पैटर्न्स हैं, ये बी के पैटर्न्स हैं, और उसको उसने इस तरीके से लिखा। सो दिस इज कॉल्ड रन लेंथ इनकोडिंग। ठीक है? सो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग ट्रांसमिटिंग द एंटायर स्ट्रिंग, हम इसको भेजेंगे। अच्छा, अब ये जो compress string है ना, तो this compressed string is shorter than the original one, saving storage space and transmission, सब कुछ ही। So to decompress the data, we simply read the pair and expand them back। अब हम देखेंगे भाई A6 है, तो हम इसको जो है वो बना ए। अब आप देखिए 2 बाइट से 6 बना दिए। फिर हमारे पास B5 है, तो फिर हमने 5 बार B बना दिया। अच्छा, सी भी 5 है, तो फिर हमने सी भी 5 बना दिया। सो ये वापस फाइल आ गई। सही है ना? अब हम एक इमेज की एग्जांपल ले लेते हैं। सो अब लेट्स से हमारे पास एक आ रहा है ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। So now let's take example of black and white image is a simple 8 by 8 pixel। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 2 होगा। इसी तरीके से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 by 8। यहाँ पे भी 8 है, 8 by 8, 64 रेजोल्यूशन है इसकी। ठीक हो गया? अब इसको जब हम कलर की स्कीम में सेव करेंगे, तो बी को ब्लैक के लिए और उसको व्हाइट को व्हाइट के लिए कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर लेट से हमारे पास ऊपर सारा ब्लैक कलर है, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ब्लैक हो गया, ये भी ब्लैक हो गया, ये भी ब्लैक हो गया। लेट से 4 लाइनें ब्लैक की हो गई। फिर हमारे पास व्हाइट है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ऐसे ही हमारे पास 4 लाइंस जो है वो व्हाइट की हो गई। अब हमारे पास ये इमेज है, ये भी 8 by 8 का है। इसमें से 4 लाइंस में ब्लैक है और 4 लाइंस में व्हाइट है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? अब हम इसको जो है वो RLE करेंगे। सही है? In this case, RLE compression would represent the image like this। B के 32 हैं। क्यों 32 हैं? 8 by 4 32 हो जाता है, और W के भी 32 हैं। अब आप देखें इतना बड़ा इमेज जो 64 बाइट्स का था, वो जो है वो 1 2 3 4 5 6 बाइट्स का रह गया। ये हो गई कंप्रेशन। सही है ना? दिस compressed data is much shorter than the writing out the whole 8 by 8 grid, which would require 64 characters. To decompress the image, you would simply extend and expand the pair back to its original form, resulting in the original 8 by 8 grid. So keep in mind that RLE is most effective when there are long runs of the same value. उसके अंदर pattern होने चाहिए। If the data has a more complex pattern, the compression may not be efficient। सही है ना? अगर अलग अलग होगा, in some cases the compressed data might even be longer than the original data, क्योंकि जब आपके पास कम commonalities होती है ना, तो फिर ये वाले issues होते हैं। Let me send it to you। अब ये RLE वाला जो सीन है ना, इसको जरा आप लोग दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। ये मैंने आपको भेज दिया।
अच्छा जी, तो अब ये देखें यूजिंग अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं. डिस्क्राइब हाउ द साइज ऑफ द टेक्स्ट फाइल कैन बी रिड्यूस यूजिंग RLE सिस्टम. Read the file run length, finds out patterns, of same occurrences, and save them in pair. ठीक है. सो ये हो गया बेटा. अब ये जरा सीधा सीधा फाइलिंग सिस्टम है. अब देखें यहाँ पे ये कहता है 47 KB इज लार्जर देन 10 MB. ये फॉल्स है, KB छोटा होता है. 250 bytes is smaller than 0.5 MB. 0.5 MB is 512 KB. So this is true. 50 GB is larger than 100 MB. That is true. 1 TB is smaller than 4 GB. That is false. तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए कौन सी चीज ऊपर आ रही है, कौन सी चीज नीचे आ रही है. All right. So I have already sent it to you. Data storage and compression. आगे चलते हैं. Next part is data transmission. All right, data transmission. 2.1 data transmission हम कर लेते हैं पूरा. अच्छा देखें, अब ये जो डेटा ट्रांसमिशन का पार्ट है, टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन. ठीक है. होल्ड कीजिएगा. अच्छा जी, अब इस पे बात करते हैं. Understand that data is broken down into packets to be transmitted. Describe the structure of the packet.
packet header, payload, trailer. The packet details include destination address, packet number, origination address. So data transmission is the process of transferring the data from one device to another. In today's digital world, understanding the various types and methods of data transmission is essential for us. So now we will discuss the structure of data packets, the packet switching process, different methods of data transmission over here, and USB interface ultimately. आप सारा जाके आपको फिर ये USB के अंदर सब कुछ करना पड़ेगा. All right. So data packets and packet switching. पहले हम इस पे बात कर लेते हैं. Data packets and packet switching. Data packets. Let's talk about data packets. To be transmitted, data is broken down into smaller units called packets. A packet of data typically contains following. So when the computer is trying to transfer the data, first it converts the data into packets. Means a little block. Every packet is a little block. If you're sending, let's say 1000 bytes, packet, let's say packet of 250 bytes each, 4 packets will be created. So that is how the packets are created. A packet of data typically contains following components. Packet header. This contains information about the packet such as the destination address, packet number, and originator address. What is address? This is the IP address that the internet uses. We will study this IP address later. So packet header has got what? जिसने भेजा उसका IP, जिसको भेजा उसका IP, और उसके अंदर packet number. What is packet number? Obviously, when you chop data into packets, you basically number them so that at the destination it could be assembled back the way it was actually created. ठीक है ना? इसको ध्यान में रखिएगा, तो नहीं तो ये आपके लिए मसला हो जाएगा. तो जब पैकेट्स बनते हैं तो उसके ऊपर नंबर लग जाते हैं. So now what is payload? Payload, this is actual data being transmitted. So यहाँ पे तो सारी information थी ना पैकेट हेडर में. Originator कौन है, उसका IP एड्रेस, डेस्टिनेशन क्या है, उसका IP एड्रेस, पैकेट का नंबर क्या है. उसके बाद पेलोड में basically this is the actual data which is being transferred. And then trailer, this part contains error checking information कि error कैसे निकालना, and marks the end of the packet. मतलब error checking का क्या मतलब होता है कि भाई दोनों डिवाइसों ने किस तरीके से बाइनरी नंबर जब भेजे हैं तो उसमें चेकसम लगाएंगे, चेक डिजिट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सही है ना. तो वो पैरिटी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ताकि पता चल सके कि अगर डेटा के ट्रांसफर होने में कोई एरर आया है तो वो सही है. सो ट्रेलर कंटेन्स एरर चेक इंफॉर्मेशन एंड मार्क्स द एंड ऑफ द पैकेट. मार्क्स द एंड ऑफ द पैकेट का मतलब क्या हुआ कि डेस्टिनेशन को पता चलता है कि भाई अब तो चलो पूरा आ गया, पूरा पैकेट आ गया. ऑलराइट, अब लेट्स टॉक अबाउट पैकेट स्विचिंग. So data is broken down into number of packets. We have already discussed about it. So packet switching is a technique used in data transmission over the internet, where the data is broken down into packets, as we have just discussed, which are sent independently to their destination. All packets take their own way. It's like a family of 20 members going somewhere. They have got accommodated into 5 cars. So these 5 cars will be considered as 5 packets, and every car will go on their own, and whatever the route they choose, when they will be reached at the destination, they all will get assembled back. So this kind of data transmission is called packet switching. What do we call it? Packet switching. So packet switching is a technique used in data transmission where the data is broken down into packets which are sent independently to their destination. The key feature of packet switching include data is broken down into packets. This allows for efficient transmission and reduces the impact of errors on the overall data transfer. अगर एक पैकेट में error आएगा तो दूसरे में तो नहीं आएगा ना भाई. Each packet could take a different route. This flexibility helps optimize the network's usage and increase its reliability. Since the data is not big data, so packets are small, so they find their way out. So this does not basically make the whole network congested. Okay,
सो कंजेशन में बचत हो जाती है. A router controls the route of the packets. So internet has got so many ISPs. All ISPs have got their routers. So these routers basically enable the packet switching. Every router decides which path the packet will take. Routers are like traffic police. At every roundabout, they stand and then see what is the situation ahead of their roundabout, and accordingly they direct the traffic. The routers analyze the network and determine the most efficient path for each packet. So packet may arrive out of order, obviously, since packets might have taken a different route each, so they will not arrive in the order. So due to their independent routing, packets can arrive in different order and then they were sent. However, the packets are reordered at the destination based on their packet numbers. और मैंने आपको बताया था कि packets numbers are basically in packet header. Okay, so let's move forward. Describe how data is transmitted from one device to another using different methods of data transmission. So we are going to discuss serial, parallel, simplex, half duplex, and all. So methods of data transmission. Different methods of data transmission. Data can be transmitted using various methods, including serial transmission. So in this method, data bits are transmitted one after the other over a single communication channel. एक वायर पर एक bit एक वक्त में. Parallel data transmission. Data bits are transmitted simultaneously over multiple communication channels. So there are multiple bits being transferred using multiple wires. So instead of wires, the better word is channel. Simplex data transmission. Data is transmitted in only one direction from sender to receiver. It does not go back. Half duplex data transmission. Data can be transmitted in both directions, but not simultaneously. Communication alternates between sending and receiving. What does that mean? एक जब सेंडर सेंड कर रहा होता है तो रिसीवर रिसीव कर रहा होता है. उस वक्त रिसीवर सेंड नहीं कर सकता, सेंडर रिसीव नहीं कर सकता. उसके बाद ये दे कैन alternate their roles. So sender becomes receiver and receiver becomes sender, but they cannot be both like in full duplex. So in full duplex, what basically happens? Data can be transmitted in both directions simultaneously, allowing for faster communications. Okay? At the same time. Acha, explain the suitability of each method of data transmitted for a given scenario, including advantages and disadvantages of each method. All right. So the choice of data transmission method depends on the specific scenario and requirements. So some factors to consider include distance between the devices, the required transmission speed, and the available communication channels. अब ये तो जो भी आपके एग्जाम में आएगा उसमें देखना पड़ेगा. अब आ जाती है USB. Understand the universal serial bus USB interface and explain how it is used to transmit data, including the benefits and drawback of the interface. Okay, so basically a USB interface is widely used standard for connecting devices and transmitting data. It has several benefits and drawbacks. तो अब benefits पहले हम इसके देख लेते हैं. So सबसे पहला जो इसका benefit होगा वो easy to use है. USB connections are plug and play, make them user friendly. आप जब लगाएंगे वो device computer खुद ही पहचान लेगा. Versatile है. USB supports wide range of devices, storage devices, printers, cameras. There is a lot monitors जो आप सारा कोई भी चीज उसके साथ attach कर सकते हैं. Faster data transfer. USB 3 भी आ गई है. Provides high speed of data transmission. लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, बेनिफिट्स भी हैं और ड्रॉबैक्स भी हैं. तो ड्रॉबैक्स जो हैं उनको भी सुन लें आप. लिमिटेड केबल लेंथ.
ड्रॉबैक पहला क्या है उसका, यूएसबी केबल्स हैव अ मैक्सिमम लेंथ व्हिच कैन लिमिट देयर यूज इन सम सिनेरियोज। आप we can only supply a limited amount of power to connected devices which might not be sufficient for some higher power devices। तो जो higher power devices हैं जैसे प्रिंटर स्कैनर वगैरह होते हैं वो अपने अपने खुद ही जो है ना वो डायरेक्ट पावर ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो जो है वो अपना यहाँ पर यूएसबी जो है वो फायदा नहीं देती। तो हम लिमिटेड एक पावर है जहां तक ये यूएसबी जो है वो फायदा दे सकती है, अदरवाइज नहीं दे सकती। ठीक है, तो ये आ गया आपका यूएसबी। अच्छा, तो कंक्लूजन क्या हो गई सारी चीज की? कंक्लूजन ये हो गई कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन है which is crucial for effective management of the data transfer in various applications। ठीक है ना? So we have studied so many things in this part। अब इसका हम करते हैं पास पेपर्स के क्वेश्चंस। पहले मैं आपको एक टेक्स्ट छोटा सा भेज दूं। इसका मैंने टेक्स्ट आपको छोटा सा भेज दिया। अब ये देखने में बड़ा चैप्टर है लेकिन ये इतना बड़ा है नहीं। अब आपको जो चीजें मेजर मेजर थी वो मैंने भेज दी है। आप जब पढ़ेंगे ना आप, तो आप बस इसी से पढ़िएगा जो मैं आपको भेज रहा हूँ। आपको इससे ज्यादा से पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा तो हम इसके अब पास पेपर्स कर लेते हैं, जरा होल्ड कीजिएगा। State what is meant by terms parallel data transmission, serial data transmission। State what is meant by term USB। तो इसमें तो आपको सिर्फ सिंपली लिखना है कि यूनिवर्सल सीरियल बस। Describe two benefits of USB, we have already discussed। easy to use है, versatile है, fast data transfer है। An email is sent from one email server to another using packet switching। State two items that are contained in email packet। पैकेट के अंदर आपके पास क्या कुछ होता है? पैकेट के अंदर आपके पास होता है पैकेट हेडर,
पेलोड, ट्रेलर, ये सब कुछ आपके पास पैकेट के अंदर मौजूद होता है। और एक्सप्लेन द रोल ऑफ राउटर्स इन सेंडिंग एन ईमेल। राउटर्स बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? राउटर्स जो हैं वो डेटा को प्रॉपर से कंट्रोल कर रहे होते हैं। राउटर कंट्रोल्स द राउट a packet takes. Router analyze the network and determines the most efficient path for each packet. A web page is transferred from a web server to a home computer using internet. Explain how the web page is transferred. अभी इसकी बाद में आएगी बारी। ये हमारे पास अगला चैप्टर है, फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर है शायद, इंटरनेट वाला, उसमें आएगा ये, फोर्थ चैप्टर। So Nikita wishes to print out some documents and connect her printer to the computer using one of the USB port. Identify what type of data transmission is being used. Serial, because USB port is basically universal serial. Give 3 reasons of using a USB port. Give 3 reasons for using USB port. तो जो रीजन हो सकते हैं, 3 रीजंस, there are several reasons for using a USB port, but main 3 reasons क्या होता है? Universal compatibility. USB ports are widely adopted, standard, used in vast range of devices such as computers, laptops, tablets, smartphones, cameras, peripheral like keyboard, mouse, printers. This wide acceptance of USB compatible device can easily connect and communicate with each other. तो पहले क्या हो गया? इसकी compatibility, universal, ease of use है। दूसरा क्या हुआ? Ease of use. USB ports and connectors are designed for simple plug and play functionality, making them easier, user friendly and easy to use. There is no need for complex configuration or additional software installation. It is plug and play, it does it by itself. So additionally, USB connectors are often designed to be versatile, such as USB Type-C, making it more convenient to plug devices जो भी हम इस्तेमाल करते हैं. Scalable performance. अब ये तीसरा फैक्टर हो सकता है, scalable performance. Scalable performance का क्या मतलब है? USB technology has evolved over the years to improve data transfer speed and increase power. So with the latest USB like USB-C, we have got USB 4 as well. जो बड़ी वाली USBs होती है ना, यूजर कैन एंजॉय हाई स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर। ठीक है, तो ये मैं आपको भेज देता हूँ। USB port, 3 main advantages. Okay, ये मैंने आपको भेज दिया। All right, now three descriptions of each data transmission are given below. Tick the appropriate box. Type of and this. Description 1. Data is transmitted several bits at a time down several wires in both directions. So this is full duplex and parallel. Hold on. This is full duplex and parallel. Sorry, full duplex and parallel. Second one is data is transmitted in one direction only, 1 bit at a time down a single. In one direction only, 1 bit at a time down a single wire. Serial or simplex. Data is transmitted 1 bit at a time down a single wire. Simplex. The data is transmitted in both directions, but not at the same time. Half duplex, serial. If 2 reasons why serial transmission rather than parallel is used to connect devices to a computer. It means that why serial is used instead of parallel data transmission
to connect computer devices. Serial data transmission is often preferred over parallel data transmission when connecting computer devices. There are basically advantages for serial. In parallel data transmission, multiple files are placed closely together, which can result in crosstalk. And इसको हम कहते हैं signal skew भी हो जाता है. Crosstalk occurs when signal from one wire affects the signal on the adjacent wire, causing a decrease in accuracy and reliability of the data transmission. और दूसरी बात हो सकती है lower cost and simplified cabling. Serial transmission typically requires fewer wires and connectors compared to parallel data transmission, तो cost भी कम हो जाती है. Longer transmission distances. Serial transmissions can maintain data signal integrity and accuracy over longer distances compared to parallel data transmission. This is because in parallel transmission, the increased likelihood of signal degradation issue हो सकता है. ठीक है ना? So in summary, serial data transmission is used instead of parallel data transmission to connect computer devices due to its reduced susceptibility to crosstalk. Crosstalk is when this data is being traveling in several wires, and the bits are jumping from one wire to another wire, and signal interference. So signal interference. So interference भी हो सकती है अगर आपके पास माइक्रोवेव रखा हुआ उसके करीब से जा रहा है या मैग्नेटिक है एरिया, तो वहां पर जो है वो डाटा गड़बड़ कर जाता है. तो लोअर कॉस्ट एंड सिंप्लीफाइड केबलिंग जो है वो हमें यूएसबी में मिलती है. लॉन्गर डेटा ट्रांसमिशन पे भी डिस्टेंसेस, जो लॉन्गर डेटा ट्रांसमिशन डिस्टेंसेस होते हैं उस पर भी यूएसबी प्रॉपर काम करती है. और यूएसबी के अंदर हमारे पास स्केलेबिलिटी, यानी कि हम एक से ज्यादा डिवाइसेस को भी प्रॉपर से लगा सकते हैं. अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आप बनाएं सिंप्लेक्स. तो अगर हम सिंप्लेक्स यहाँ पे बना रहे हैं तो सिंप्लेक्स आपको पता है कि एक ही डायरेक्शन में जाता है, तो आप ऐसे बनाएंगे सिंप्लेक्स. डुप्लेक्स आप ऐसे बना सकते हैं, और हाफ डुप्लेक्स आप बनाएंगे जब आपका डाटा जा रहा है तो ऐसे बनाएंगे और आ रहा है तो ऐसे बनाएंगे. इसका मतलब ये होता है कि एक वक्त में जा सकता है, एक वक्त में आ सकता है. ठीक है. अच्छा जी, पैरिटी अभी हमने पढ़ा नहीं, जब पैरिटी आएगा तो फिर देख लेंगे. अच्छा जी, डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन कैन आइदर बी सीरियल और पैरेलल. तो दैट इज ट्रू. अगर डुप्लेक्स में आपको सीरियल लगाना है तो आपको दो सीरियल लगाने पड़ेंगे, एक डाटा जाने के लिए और एक डाटा आने के लिए. डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन इज व्हेन डाटा इज ट्रांसमिटेड बोथ वेज बट only one at a time. No, this is half duplex होगा ना, तो ये नहीं, false है. That duplex data transmission is always used to connect a device to a computer. No, it can be two different devices talking to each other directly, one of which is not computer, then it is fine. Duplex data transmission is when the data is transmitted both ways at the same time. True. Duplex data transmission automatically detects any errors in the data. This actually depends कि ये automatically duplex data transmission, that is false, because when the computer receives the transmission then it checks for it. Okay, so that's it. अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं. फाइल मैंने आपको ये भेज दी है फॉर योर प्रैक्टिस. अच्छा जी, तो अब आप आ जाएं
नेक्स्ट पार्ट की तरफ। Next part is method of error detection 2.2. अच्छा जी, अंडरस्टैंड द नीड टू चेक फॉर एरर्स आफ्टर डेटा ट्रांसमिशन एंड हाउ दीज एरर्स अगर अभी देखें क्वेश्चन आया था कि ऑटोमेटिकली होता है, ऑटोमेटिकली नहीं होता, आफ्टर डेटा ट्रांसमिशन अकर्स ये फिर चेक लगते हैं। एरर्स कैन अकर ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन ड्यू टू इंटरफेरेंस, डेटा लॉस, डेटा गेन एंड डेटा चेंज। सही है, ये अभी हम इस पर डिस्कस करते हैं। Describe the process involved in each of the following error detection methods for detecting errors in data after transmission: parity check, odd even, checksum, and echo check. ये हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। Describe how a check digit is used to detect errors in data entry and identify example when a check digit is used, including international standard book numbers, ISBN, and barcodes. Describe how an automatic repeat query can be used, ARQ, can be used to establish data that the data is received without error. Positive, negative acknowledgements and timeout. Okay, so एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले तो we need to understand the need for check for errors after data transmission and how these errors can occur. Okay. चलें एक गैप लेते हैं, हाफ एन आवर का। 3:30 बजे से हमारी क्लास चल रही है, 5 घंटे हो गए। हाफ एन आवर का एक गैप लें। एट 9 o'clock वी गेट बैक।
All right. Methods of error detection. 2.2. Understand the need to check for errors after data transmission and how these errors can occur. Errors can occur during data transmission due to interference, data loss, for example, data loss, data gain, data change. So errors can occur during data transmission due to interference, leading to data loss, data gain, and data change. It is crucial to detect and correct these errors to ensure accurate and reliable communications. This part covers the need for error detection, various error detection methods, and the use of check digit and the role of ARQ, automatic repeat query, in ensuring error-free data reception. So it says that what is the need of it? Why do we? So data transmission errors can occur due to various factors such as noise, signal attenuation, crosstalk. Noise is when different data gets mixed. Signal attenuation is basically the weakness of the signal as a result of data transfer. Crosstalk, when we have got parallel data transmission and data jumps between the wires or channels. Detecting and correcting these errors is essential to maintain the integrity and reliability of the data being transmitted. Error detection methods help to identify and rectify these issues, ensuring that the transmitted data is accurate and complete. So the first one that we are going to see is parity, both the block parity and byte parity. So parity check is a simple error detection method that involves adding an extra bit called the parity bit to the end of the data series to ensure that the total number of ones in the data is either odd, which is called odd parity, or even, or called even parity. There are two types of parity checks. Parity byte check. The parity bit is added to each byte of the data. ठीक है ना, ये अभी हम करते हैं जैसे हमारा ये डिस्कशन खत्म होता है. The receiving device checks the parity bit to ensure that the number of ones is consistent with selected parity. If not, an error is detected. Parity block. The parity bits are added to form a parity block that covers an entire block of data. The receiving device checks the parity of the entire block to detect errors. Then comes checksum. We will discuss parity in detail in a short while. A checksum is a checksum here. A checksum is a value calculated from the data being transmitted and sent along with the data. The receiving device recalculates the checksum using the same algorithm and compares it to the received checksum. If the calculated checksum does not match the received one, an error is detected. Then comes echo check. In an echo check, the receiving devices sends the received data back to the sender. The sender compares the echoed data with the original data. If the discrepancies are found, the sender retransmits the data. If the discrepancies are found, sender retransmits the data. Okay. Then comes check digit. Check digit is basically data entry check. This is basically data validation thing. Check digits are used to detect errors in data entry, such as when scanning barcodes or entering international standard book number, ISBN. A check digit is calculated from the other digits in the data using a specific algorithm, and it is added to the data.
When the data is entered, the check digit is recalculated and compared with the original check digit. If the two match, it is fine. If it is not, then it is an error. And then comes ARQ, automatic repeat query. ARQ is a method used to ensure that the data is received without errors by requesting transmission when errors are requesting retransmission when the errors are detected. ARQs uses the following mechanism. Positive negative acknowledgement. The receiving device sends a positive acknowledgement if the data is received without errors, or negative acknowledgement if an error is detected. The sender retransmits the data when the negative acknowledgement is received. Timeout. They have said that we have to understand in terms of these three things. The sender waits for predetermined amount of time to receive acknowledgement or negative acknowledgement. If no response is received within the specified time, the sender assumes that the data or the acknowledgement was lost and retransmits the data. So generally, error detection is a crucial thing in ensuring accurate and reliable data transmission. So we are discussing the need for error detection, various error detection methods, parity, checksum, echo, and use of check digits in the data entry, and the role of ARQ as well. चलिए देखिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भेज रहा हूँ, सबकी पैरिटी की, ऑड पैरिटी की, इवन पैरिटी की, चेकसम की, ARQ की, सबकी मैं आपको एग्जाम्पल्स भेज रहा हूँ. इनको बाद में जरा गौर से देख लीजिएगा. ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, इनको देख लीजिएगा. ये मैंने आई हैव फॉरवर्डेड इट. Okay. So 4 7 bits values are transmitted from one computer to another. A parity bit is added to each. देखें add होता है इस साइड पे, most significant साइड पे add होता है. parity bit जो है ना, most significant साइड पे हमेशा add होता है. A parity bit is added to each binary value, creating 8 binary values. All the binary values are transmitted and received correctly. Identify whether each binary bit has been sent using odd or even parity by writing odd or even in the type of parity column. अब आप देखें, ये 8 बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. इनमें आपको काउंट करना है क्योंकि सब सही आए. They all are received correctly. So how many ones are there? 3. So it means that it is odd parity.
And how many number of ones are there? 1, 2, 3. This is odd as well. Here there are 2 ones, so this is even. And then 1, 2, 3, 4, this is even as well. An error may not be detected when using a parity check. Identify why an error may not be detected. अच्छा, अब इसमें क्या होता है? अब इसके अंदर basically when 2 bits are changed, they get swapped or flipped. क्या मतलब हुआ? फर्स्ट करें, आपके पास नंबर है 10110010, ये दोनों जो है ये 1 बन जाए तो ये क्या हो जाएगा? 101110। तो अब इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितना था? 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6। तो ये भी इवन रहा, ये भी इवन रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरीके से अगर ये 0 हो जाए, ये 1 हो जाए, बाकी सब अपनी जगह पे सेम रहे, इसमें भी आप देखें 1 2 3 4, ये भी इवन रहा। तो कहने का मकसद ये है कि when 2 bits are changed, either they get swapped or flipped, तो ये रिसीवर को पता ही नहीं चलेगा कि कोई एरर आ गया है। ठीक है, give one another method that is checksum in data transmission. अच्छा, अब देखें जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि गिव 2 similarities between check digit and checksum methods. तो वो जो सिमिलैरिटीज हैं वो क्या हो सकती है? आप खुद सोचें, चेकसम में भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, चेक डिजिट में भी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो सकता है? एरर डिटेक्शन, दोनों एरर डिटेक्शन करते हैं। बोथ check digits and checksum methods are used to detect errors in the data. Check digit methods are primarily employed for detecting errors in data entry, such as when scanning barcodes or entering ISBN. Checksum method, on the other hand, are used to detect errors that occur during the data transmission between the devices. Calculation and verification. Both methods involve calculating a value based on the original data and appending it to the data. Append का मतलब उसमें जोड़ देते हैं before the data transmission. In case of check digit, a specific digit is calculated using an algorithm based on the other digits in the data. For checksum, a value is calculated by applying a certain algorithm to the entire data. In both cases, the receiving devices or system recalculate the check digit or checksum. ठीक है ना? अच्छा, identify 2 other error detection method. Parity हो गया, parity हो गया, ARQ हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये कहते हैं, अब देखिए पैरिटी में क्या होता है? पैरिटी में नंबर ऑफ वंस जो है वो सिस्टम कैलकुलेट करता है। अगर वो ऑड पैरिटी डिसाइड की हुई है दोनों ने, तो वो ऑड नंबर ऑफ वंस नहीं होता, इवन होता है तो 1 लगा के उसको ऑड कर देते हैं। अगर वो इवन होता है तो सही है, और नहीं होता तो उसको फिर ऑड कर देते हैं। ये डिपेंड करता है कि दोनों डिवाइसेस आपस में इवन भेज रही हैं, ऑड भेज रही हैं। ठीक हो गया ना? तो अब देखें इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या है। ये कहता है द कंटेंट ऑफ द 3 बाइनरी रजिस्टर्स हैव बीन ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, ऑड पैरिटी हैज बीन यूज्ड। ठीक है, अब इसमें देखें आपके पास क्या है? 1 2 3, तो यहाँ पे आप 0 लगाएंगे तो क्योंकि ऑड पैरिटी है। सही है, रजिस्टर ए एंड बी हैव बीन ट्रांसमिटेड करेक्टली। तो 1 2 3, ये भी 3 है, ये भी ऑड आ गया। अच्छा, अब सी कहता है रजिस्टर सी हैज बीन ट्रांसमिटेड इनकरेक्टली। अब ऑड है ना, इसमें इवन है, तो आप इसको ऑड नहीं बनाएंगे, आप इसको इवन ही रहने देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये करेक्ट है, ये करेक्ट है एज पर
कि इन्होंने बताया कि ऑड पैरिटी इस्तेमाल हो रही है और ये इनकरेक्ट है, इसमें गड़बड़ हो गई है, ठीक है, इसमें गड़बड़ हो गई है। अच्छा जनाब, अब देखें यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं हम पैरिटी वगैरह का, जो कि बहुत जरूरी है। देखें पैरिटी में क्या होता है कि पैरिटी ज्यादातर अप्लाई होती है टेक्स्ट के ऊपर, क्योंकि आपको हर 7th बिट जो है ना, सॉरी हर 8th बिट जो है वो पैरिटी के लिए आपको चाहिए होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, टेक्स्ट में एस की होता है, एस की 7 बिट्स यूज करता है, 8th बिट जो होता है वो पैरिटी का होता है। अच्छा, आपने गौर किया, उन्होंने बोला कि एस की जो है उसमें 128 कैरेक्टर्स होते हैं। 128 कैरेक्टर्स होते हैं इसलिए कि उसमें 7 बिट्स होते हैं, तो 0 से 127 तक कैरेक्टर होते हैं। जो 8th बिट होता है वो यूज होता है पैरिटी के लिए। तो पैरिटी इज जनरली अप्लाइड टू टेक्स्ट। ऑल ASCII characters take up 8 bits, 1 byte each, out of which the last bit on the most significant side is used as parity bit। सही है ना? तो वो उसको हम पैरिटी बिट के तौर पे, तो अब 8 बिट्स की जो डेफिनेशन है उसमें तो यही आएगा कि 256 होता है, नहीं 7 बिट्स में 256, ओ सॉरी 128 होगा, और 8 बिट जो है वो पैरिटी का। पैरिटी इज बेसिकली नॉट पार्ट ऑफ द डाटा, दिस इज जस्ट बिकॉज to check the errors in communications। ठीक है, मोस्टली पैरिटी बिट्स आर यूज्ड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये कंप्यूटर के अंदर की डिवाइसेस उस वगैरह में, उसमें कीबोर्ड माउस में, इसमें होता है, लेकिन ये इंटरनेट पे इस्तेमाल नहीं होगा, लॉन्ग डिस्टेंसेस पे इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, पैरिटी इज जनरली यूज इन नॉन रिलायबल। नॉन रिलायबल कम्युनिकेशंस का क्या मतलब है? ये नॉन रिलायबल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जब आपकी शॉर्टर डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन हो रही होती है ना, तो उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस कम होते हैं, इसकी वजह से वो नॉन रिलायबल होती है। when there are no checks at all while the data is being transferred, like shorter distances between the devices in computer and it is its peripherals like keyboard and memory। जब कंप्यूटर के अंदर अंदर डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है तो उसको हम कहते हैं नॉन रिलायबल कम्युनिकेशंस, क्योंकि उसमें चेक्स नहीं होते। अच्छा, तो पैरिटी जो है वो उस सूरत में इस्तेमाल होती है। रिलायबल कम्युनिकेशन का मतलब है where there are less or no errors in data transfer because the communication has many checks in place। These are long distances like internet। सही है, तो पैरिटी क्या है? टेक्स्ट के साथ इस्तेमाल हो रही है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इस्तेमाल हो रही है। अब वर्किंग इसकी क्या है? पैरिटी दो किस्म की, ऑड पैरिटी और इवन पैरिटी। द पैरिटी बिट ensures that the total number of 1 bits in the combination is even or odd। Accordingly there are 2 variants of parity, even or parity। अब देखिए ये A है, A का इसकी कोड है 65, B का 66 है, C का 67 है। अगर हम इवन पैरिटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो 65 में ऑलरेडी 2 1s हैं तो हम यहाँ 0 लगा देंगे, 66 में भी 2 1s हैं तो हम 0 लगा देंगे, C में हमारे पास 2-3 1s हैं तो हम 1 लगा के इसको इवन बना देंगे। तो सही है। अगर ये ऑड पैरिटी होता तो हम जो है वो, अब आप देखें यहाँ पे ये इवन था ना, 2, तो हमने 1 लगा के इसको 3 1s कर दिया, ये ऑड कर दिया। यहाँ पे भी हमने 2 थे, 1 लगा के, अब यहाँ पे थी 3 तो हमने यहाँ पे 0 लगा के इसको ऑड रखा। अब जो रिसीविंग एंड पे होगा उसको भी पता होगा कि हम इवन यूज कर रहे हैं या ऑड यूज कर रहे हैं, तो वो अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ 1s को काउंट करके चेक कर लेगा। ठीक है ना? अच्छा, अब सिंगल बाइट पैरिटी फ्लॉज, ये भी हमारी इस पर थोड़ी देर पहले बात हो गई थी। जब 2 बिट्स हम आपस में चेंज हो जाते हैं, तो जब 2 बिट्स आपस में चेंज हो जाएंगे या 2 बिट्स फ्लिप हो जाएंगे या स्वैप हो जाएंगे या चेंज हो जाएंगे, तो उस सूरत में रिसीवर को पता ही नहीं चलेगा कि कोई गड़बड़ हुई है। तो इन फ्लॉ से, जहां पर 2 बिट्स के चेंज होने पे रिसीवर को पता नहीं चलता, एरर आता है, इसको हम ब्लॉक पैरिटी यूज करते हैं। ब्लॉक पैरिटी में क्या होता है, जैसे ये 3 बाइट्स हैं A B एंड C, तो ये A है, ये B है, ये C है, तो इसमें अगर हम इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं तो ये हमने ये वाला बिट तो इस्तेमाल किया ही किया,
तो हम इसको कहेंगे बाइट पैरिटी। लेकिन हम फिर कॉलम की भी पैरिटी क्रिएट कर लेते हैं। कॉलम की पैरिटी क्रिएट करने से ये होता है कि हमारे पास पूरा एक नया पैरिटी बाइट बन जाता है। अब ये दो है इवन, हमने जीरो लगा दिया, दो है इवन, हमने जीरो लगा दिया, ये तीन ऑड थे, हमने वन लगा के इवन कर दिया, वन ऑड था, वन लगा के इवन कर दिया। अच्छा, इसमें आपको ये याद रखना होगा, चाहे ऑड पैरिटी हो चाहे इवन पैरिटी हो, जब सारे जीरोज होते हैं तो पैरिटी जीरो हो जाती है। चाहे ऑड पैरिटी हो चाहे इवन पैरिटी हो, जब सारे जीरोज होते हैं तो पैरिटी जीरो होती है। ठीक है, व्हेन दीज आर ऑल जीरोस। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी? अब ये एक बिट जा रहा है, सॉरी एक ब्लॉक जा रहा है, इसमें कहीं गड़बड़ हो गई, ठीक है ना, तो ये इवन है, ये ऑड आया तो इसको मार्क कर लिया कि इसमें गड़बड़ है। इसी तरीके से ये इवन है, ये इवन है, फिर जब हमने कॉलम चेक किया तो इसमें भी ये ऑड आया, ये इवन था, ये ऑड आया। तो इन दोनों के क्रॉस सेक्शन पे जो भी बिट होगा उसको हम खुद ही फ्लिप कर लेंगे। सो दिस इज बेसिकली ब्लॉक पैरिटी। इसमें ये होता है कि गड़बड़ अगर होती है तो वो डिटेक्ट हो जाती है। सही है। अब आ जाएगा चेक डिजिट। चेक डिजिट जो है, चेक डिजिट का कोई भी तरीका आपके सिलेबस में गिवन नहीं है। ठीक है, चेक ना चेक डिजिट का ना चेक सम का। तो जो आपके पास क्वेश्चन आएगा उसमें कुछ ना कुछ आपको हिंट या हेल्प जरूर दी जाएगी चेक डिजिट और चेक सम के लिए। ठीक है ना, तो बहरहाल जो स्टैंडर्ड मेथड हमें पास पेपर से मिला है वो हम ले लेते हैं। तो चेक डिजिट क्या होता है? चेक डिजिट एल्गोरिथम्स आर जनरली डिजाइन टू कैप्चर ह्यूमन ट्रांसक्रिप्शन एरर। ट्रांसक्रिप्शन एरर्स क्या होते हैं? ट्रांसक्रिप्शन एरर्स का मतलब होता है वो एरर जो आप टाइप करते हुए करते हैं। सही है ना, तो चेक डिजिट का जरा एक अलग से डॉक्यूमेंट है, वो पहले देख लें। अब देखें चेक डिजिट, तो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन एरर्स क्या है? ट्रांसक्रिप्शन एरर ये है हमारे पास कि ये ओरिजिनल नंबर है, लेट्स से ये हम एंटर कर रहे हैं। चेक डिजिट में ये होता है कि जब बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, तो क्यों होती हैं वो गलतियां? क्योंकि हम सिर्फ नंबर एंटर कर रहे होते हैं। वी आर नॉट मेंट टू इनपुट नंबर्स ओनली। तो हम नंबर्स बहुत ज्यादा एंटर कर रहे होते हैं, बड़े बड़े नंबर्स, उसमें हमसे गलतियां होती हैं। तो ये ओरिजिनल नंबर है, पहला ये डिजिट हमने स्किप कर दिया, हमने यहाँ पे 9 स्किप कर दिया, तो हमने देखें 352 638 लिख दिया, 9 खा गए। इसी तरीके से डिजिट चेंज हो गया, 352 की जगह 353 लिख दिया, 96 की जगह पे 97 लग दिया, ये स्वैप हो गया। इसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। डिजिट स्वैप होगा, 359268 डिजिट स्वैप होगा। तो अगर ये तो तीन गलतियां हैं। क्वेश्चन आता है ऐसा कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसपे फिर आप जो हैं वो चेक डिजिट अप्लाई करेंगे, तो वो ये गलतियां आप बता सकते हैं कि डिजिट स्किप हो जाता है, डिजिट चेंज हो जाता है, डिजिट स्वैप हो जाता है। तो अब आप देखिए जब डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, अगर कंप्यूटर टू कंप्यूटर हो रहा है तो उसमें आप पैरिटी एआरक्यू और चेकसम के चेक्स लगा सकते हैं। लेकिन अगर ह्यूमन टू कंप्यूटर हो रहा है, यानी कि लोग उसको डेटा को एंटर कर रहे हैं, तो उस सूरत में आप चेक डिजिट लगाते हैं। अच्छा, अब आपके पास जो सवाल आएंगे वो दो किस्म के होंगे कि एक तो चेक डिजिट हमें फाइंड करना होगा और दूसरा चेकिंग करनी होगी चेक डिजिट की कि वो अगर एंटर हुआ है तो क्या वो सही है या गलत है। इसको हम कहते हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का जो चेक है वो हमेशा डेटा की एंट्री पे लगता है। वी विल फाइंड चेक डिजिट यूजिंग मॉड्यूलो 11 मेथड। मॉड्यूलो 11 का मतलब, मॉड का मतलब होता है कि जब आपके पास रिमाइंडर बच जाए। अब आप देखें जरा इस साइड लाइन को देखें, आप 15 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। अब आपके पास तीन तरह के मेथड्स हैं डिवीजन के कंप्यूटर के अंदर। पहला है एब्सोल्यूट मेथड। एब्सोल्यूट में क्या होगा? 15 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा 7.5, तो इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट डिवीजन। दूसरा ये है कि आप जो है वो पॉइंट वाले चक्कर में दाखिल नहीं, जब आपके पास रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा बचे तो आप वहां पे छोड़ देते हैं, तो उस सूरत में जो आपके पास बचता है उसको हम मॉड कहते हैं, और जो ऊपर इंटीजर कोशेंट आता है उसको हम डिफ कहते हैं। सो 15 डिफ टू 7 होगा और 15 मॉड टू 1 होगा। ठीक है ना। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं एज एन एक्सप्रेशन, और इस तरह भी लिख सकते हैं एज ए फंक्शन। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से होता है। तो इसका इस्तेमाल होने जा रहा है यहाँ पे। मॉड्यूलो 11 का मतलब ये है कि आप नंबर को 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको हम एज ए चेक डिजिट यूज करेंगे। सो व्हाट बेसिकली हैपेंस, अब एक फर्ज करें ये पास पेपर का ही सवाल है, वहां से हमने ये नंबर लिया है कि 4241508 एक नंबर है, इसमें हमें एक चेक डिजिट प्रोड्यूस करके इसमें अपेंड करना है, यानी कि इसके एंड में ऐड करना है, उसको हम कहते हैं अपेंड। अब हमने सबसे पहले क्या किया, हमने पोजीशन लगाई लेफ्ट से राइट।
इसमें हम बाइनरी वाला रूल राइट से लेफ्ट वाला नहीं लेंगे, हम लेफ्ट से राइट वाला लेंगे। हमने पोजीशंस लगाई 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस 8 को तो छोड़ ही दिया हमने, और फिर हर डिजिट को उस नंबर में उसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई किया। जो भी रिजल्ट आया उसको हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट आया उसको हमने 11 से डिवाइड कर दिया, और उसका जो रिमाइंडर था मॉड उसको हमने उठा के उसका चेक डिजिट बना दिया। यानी कि अब हमारे पास जो नंबर था 4241508 वो बन गया 4241508 6। तो ये जो है आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर आपका ये जो होता है शनाख्ती कार्ड CNIC कंप्यूटराइज्ड, तो उसके अंदर अभी आप अगर नंबर देखेंगे तो डैश करके आखिर में, जैसे मेरा 9 है आपका भी कुछ ना कुछ होगा। तो चेक डिजिट्स आर ऑलवेज एवरीवेयर। अच्छा, रिमाइंडर इन मॉड्यूल 11 विल बी 0 to 10। अब ये जो आपके पास जगह होती है डाटा को रखने की वो होती है 1 डिजिट की। 10 में होते हैं 2 डिजिट। जब आप ज़ाहिर 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 10 भी बच सकता है। तो उस सूरत में हम लोग यहाँ पर वी यूज रोमन 10 यानी कि x। तो हम x को यानी कि रोमन 10 को यूज करते हैं, हम 10 1 0 10 नहीं लिखते हैं। उसके दोनों रीजन हैं, एक तो 10 तक बचेगा और दूसरा ये कि आपके पास 2 डिजिट्स नहीं होते, एक ही डिजिट होता है चेक डिजिट के लिए। तो आप चेक चेक डिजिट की वैलिडेशन। अब इस सूरत में आपको पूरा नंबर गिवन है, आपको सिर्फ ये मालूम करना है कि नंबर सही एंटर हुआ है या नहीं हुआ। आप देखें यहाँ पे इसका जो चेक डिजिट है वो क्या है 10। हम इसको इग्नोर मारेंगे, इसको इग्नोर मार के बाकी वही तरीका दोबारा 3240045 3240045 इसको इसकी पोजिशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हर डिजिट को। जो आंसर आएगा उसको 11 से डिवाइड करेंगे। अब हमारा यहाँ पे देखें रिमाइंडर क्या रहा है 1, जबकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 10। तो इसका मतलब है कि नंबर जो है वो इनकरेक्टली इनपुट हुआ, यानी कि ये इनवैलिड है। ठीक है, तो ये है आपके पास चेक डिजिट का तरीका। अब आ जाए आप चेकसम पे। तो चेकसम में क्या होता है, जो भी बाइनरी नंबर्स होते हैं, आपने अभी मेरे साथ बाइनरी एडिशन सीखी है, उस तरीके से उन बाइनरी नंबर्स को, हर किस्म के डाटा को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है और वो बाइनरी नंबर्स आपस में ऐड हो जाते हैं। जब वो ऐड हो जाते हैं तो उनका जो रिजल्ट है जिसको हम कहते हैं चेक सम, वो भी दूसरे कंप्यूटर पे साथ ही ट्रांसफर हो जाता है। रिसीविंग एंड पे वो जो कंप्यूटर है, वो जो रिसीवर रिसीव होता है चेकसम, उसको इग्नोर मारता है और खुद दोबारा रिकैलकुलेट करता है। ठीक है ना, रिकैलकुलेट करता है। रिकैलकुलेट करने के बाद जो रिसीव हुआ होता है उसको और जो कैलकुलेट हुआ होता है वो दोनों को मैच किया जाता है। यानी कि जो रिसीव हुआ है या जो कैलकुलेट हुआ है वो दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं इसका मतलब डाटा सही ट्रांसफर हुआ, अगर नहीं हो रहा तो डाटा सही ट्रांसफर नहीं हुआ है। A checksum is a small size datum. Datum is a singular of data derived from a block of digital data binary for the purpose of detecting errors that may have been introduced during its transmission or storage. ठीक है? So A is equal to 65, B is equal to 66, C is equal to 67। अब ये हमने इन तीनों को ऐड किया, ये हमारा स्मॉल साइज डाटा चेकसम क्रिएट हो गया। ये चारों बाइट्स मिला के क्या कहलाएंगे, ब्लॉक। अब डाटा जो है वो बीच में गेन और ड्रॉप यानी कि लॉस भी हो सकता है। या टर्मिनोलॉजीज आपने यहाँ पे देखी होंगी। डाटा जो है वो, डाटा लॉस का मतलब है 1 0 हो जाए, डेटा गेन का मतलब है 0 1 हो जाए, या डेटा चेंज हो जाए। ठीक हो, तो ये डाटा चेंज यहाँ पर हो सकता है। तो अब चेकसम आपने कैलकुलेट किया, वो भेज दिया आपने, और वो उसने रिसीवर ने उसको चेक किया, अगर उसके पास भी वही चेकसम आ रहा है तो उसका मतलब वो सही है। ठीक हो गया। सो वापस आते हैं। अब ये सब हो गया, पैरिटी भी हो गया, अब हमारे पास चेकसम भी हो गया, चेक डिजिट भी हो गया, ARQ रह गया है। सर ARQ कर लेते हैं। अच्छा, अब ARQ में देखें, इट इज एन एरर कंट्रोल मेथड फॉर data transmission that uses acknowledgement and timeout to achieve reliable data transmission over an unreliable communication channel. Unreliable का मतलब क्या हुआ, shorter. Acknowledgement क्या है, it is a message sent by the receiver indicating that if it has correctly received the data. Acknowledgement, अब इसमें पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भी है, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भी है कि डाटा आ गया लेकिन सही नहीं है, ये भी है कि डाटा
आ गया और सही भी है। तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट क्या हुई, जब डेटा आ गया और सही आया है, हमने डेटा को रिसीव करने के बाद उस पर पैरिटी लगाई, उस पर चेकसम लगाया और चेक किया कि वो सही आया या नहीं आया, उसके बाद पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट बेस्ड ऑन द रिजल्ट दे दी। टाइम आउट, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, जब दो डिवाइसेस आपस में डेटा को ट्रांसफर करती हैं तो वो डिसाइड करती हैं कि इतनी देर में अगर दूसरी डिवाइस ने डेटा की एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजी तो टाइम आउट अगर होगा, टाइम आउट अगर होगा तो सेंडर दोबारा डेटा भेजेगा, इसलिए हम इसको कहते हैं ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट या क्वेरी। ठीक है। If the sender does not receive an acknowledgement before the timeout, it retransmits the data until the sender receives the acknowledgement or exceeds a predefined number of data transmission attempts. Okay, so ये हो गया सारे का सारा। अब आ जाएं वापस पास पेपर्स पे। A library's archive system uses an error detection and correction system that combines parity check with an ARQ. Describe how the system uses parity check and ARQ. तो parity क्या होगी, जब एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को डेटा भेज रही है तो भेजने और रिसीव करने में ऑटोमेटिक रिपीट क्वेरी लगती है, और यहाँ पे जब डेटा रिसीव होता है तो यहाँ पे पैरिटी लगती है। So ARQ makes sure that the data is sent, and parity makes sure that the data that is sent is actually correct or incorrect. So on the basis of the result of parity, ARQ की acknowledgement negative या positive बनेगी। ठीक है, और ARQ makes sure that the data is properly transmitted. All right. Okay. Even parity लगानी है, 1 2 3 4 तो 0 लगेगी, 1 2 3 4 5 6 भी 0 लगेगी, 1 2 3 तो यहाँ पे 1 लगा के आप इसको 4 कर देंगे। देखें अब इसमें कोई हाँ, ये वाला एक सवाल है, इसको कर लेते हैं ताकि आइडेंटिफाई विच ऑफ द 8 बाइट्स कंटेन एन एरर। और ये देखें, ये आपको बता रहा है कि ये पैरिटी इवन है, तो पहले बाइट को चेक करें, पहले बाइट को, बाइट 1 जो लिखा हुआ है, ये बाइट 1 को चेक करें, 1 2 ये इवन है, ये बिल्कुल सही है। दूसरे बाइट को चेक करें, 1 2 3 4 5 6 ये भी सही है, 1 2 ये भी सही है, 1 2 3 4 ये भी सही है, 1 2 3 4 5 इसमें गड़बड़ है, बाइट 5 में गड़बड़ है, इसको मार्क कर लें। ठीक है, 1 2 3 4 5 इसमें गड़बड़ है। अब इसको अगले को देखें, ये सारे जीरोज हैं तो सेट है, सारे जीरोज में क्या होगा, हमेशा 0 ही बनेगा। सो 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 5 6 सही है। अब कॉलम्स चेक करना शुरू करें, 1 2 3 4 सही है, 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 1 2 3 इसमें गड़बड़ है, इसको मार्क कर लें कॉलम 4 को। कॉलम 4 को आप मार्क कर लें, इसके बाद आप आ जाए इधर, 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ये भी सही है। अब देखें, जो कॉलम्स हमारे पास मार्क हुए हैं, यानी कि ये रो और ये कॉलम, सही है, इनका जो क्रॉस सेक्शन है, ये इस पे जो बिट है, रिसीवर इसको खुद ब खुद सही कर लेगा। तो दिस बिट बेसिकली पोजेस द एरर। अब हमारे पास ऑप्शन ही सिर्फ 2 हैं, जब 2 ही ऑप्शन है तो इसका मतलब है 0 को अगर आप 1 कर देंगे तो सिस्टम बिल्कुल सेट हो जाएगा।
ठीक है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द 8 बिट्स कंटेन एन एरर, तो आप बता देंगे कि भाई बाइट 5 एंड कॉलम 4, बाइट 5 और कॉलम 4। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाए तो डेफिनेशंस हैं कुछ। सेवरल बिट्स ऑफ डेटा सेंट, ये हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। एन इवन और ऑड नंबर ऑफ बिट्स सेट टू 1 इन अ बाइट यूज्ड टू चेक इफ द डेटा हैज बीन सेंट करेक्टली, ये हो गया पैरिटी। 1 bit sent at a time, छोड़ दें इसको। An additional digit placed at the end of the number to check if the number has been entered correctly, तो ये check digit है। check digit यहाँ पर हमारे पास है नहीं है, check digit नहीं है तो इसको छोड़ दें। An additional digit placed at the end of a number to check if the number has been entered correctly, याद रखिएगा parity में होगा sent correctly, entered correctly का मतलब है validation, validation का मतलब है check digit, check digit हमारे पास है नहीं है। A value transmitted at the end of the block of data which is calculated using other elements, ये checksum है। An error detection method that uses responses and time, ये ARQ है। Automatic repeat request या automatic repeat query, ठीक हो गया। So ये होगा इसके सवाल। So next part of the syllabus, encryption 2.3, understand the need and purpose of encryption when transmitting data. Understand how the data is encrypted using symmetric and asymmetric encryption. Asymmetric encryption includes the use of public and private keys. ठीक है। पढ़ते हैं इसको। सही है, तो अब इंक्रिप्शन की कहानी सुन लें। Encryption जो है, it is a crucial aspect of secure communication and data protection. It helps maintain confidentiality, integrity, and authenticity of transmitted data. So we are going to cover the need for and purpose of encryption, as well as two primary methods of encryption, symmetric and asymmetric. Now, why do we need this encryption? When the data is which is being transmitted over the internet, if it is in its original form, anyone can check it. जैसे hackers हैं तो कोई भी उसको पढ़ सकता है। तो आप क्या करते हैं, आप उस डाटा को जम्बल्ड कर देते हैं, उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं। जब उसको हम इनक्रिप्ट करते हैं तो फिर वो डाटा जो है वो बीच में कोई भी पढ़ने वाला, देखने वाला उसको प्रॉपर से पढ़ नहीं सकता। ठीक है ना, उसको प्रॉपर से पढ़ नहीं सकता क्योंकि वो इनक्रिप्टेड होता है। तो इसलिए हमें इनक्रिप्शन करनी होती है सो दैट वी कुड सिक्योर आवर डाटा। देखो डाटा तो कोई भी देख लेगा, लेकिन अगर वो इनक्रिप्टेड होगा तो वो नहीं देख सकता, यानी कि उसकी शक्ल ऐसी होगी, हमने ए को बी कर दिया, बी को सी कर दिया, पता ही नहीं चलेगा अगले को क्या करना है। अच्छा, अब देखें इनक्रिप्शन के ना कई तरीके होते हैं। इनक्रिप्ट ये होता है कि भाई आपके पास एक की है, आपने उससे डाटा को इनक्रिप्ट किया, वही की दूसरे के पास भी है। जब आप उसको भेजेंगे तो वो रिसीवर एंड के ऊपर उसको वो वही की लगा के डिक्रिप्ट कर लेगा। तो ये जो की का सॉफ्टवेयर होता है, अगर दोनों एंड पर सेम हो तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक, और अगर वो दोनों एंड पर सेम ना हो तो उसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक। यानी कि इनक्रिप्ट करने की की अलग हो और डिक्रिप्ट करने की की अलग हो, उसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक। और अगर दोनों कीज एक ही हो तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये है सारा सिस्टम। अब हमें इसके बारे में पढ़ना है।
वेट कीजिएगा 2 मिनट। अब देखिए ये हमारे पास एक सिस्टम है। I'll share this file with you people because it is a bit complicated. All right. अब आप देखें डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर हो रहा है और बीच में हैकर बैठे हुए हैं। तो जब आपका डेटा यहाँ से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जाता है ओवर द इंटरनेट, तो हैकर जो हैं वो उन डेटा पैकेट्स को जो आपके ट्रांसफर हो रहे हैं वो देख सकते हैं क्योंकि उसमें प्लेन टेक्स्ट है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं। तो बेसिकली इनक्रिप्शन is a process to make data non-understandable for anyone unauthorized for it. Data needs to be encrypted before it leaves origination and heads to destination using public network like internet. Encryption uses predefined sophisticated algorithm like MD5 to encrypt the data. There are many forms of it, but two are more adaptable and used. That is symmetric and asymmetric. अच्छा, अब सिमेट्रिक में क्या होता है? अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल है कि अगर मैंने जफर लिखा हुआ है तो ये प्लेन टेक्स्ट है, लेकिन अगर मैं इसको इनक्रिप्ट कर दूंगा तो ये जफर जो है वो ZA बन जाएगा, AB बन जाएगा, FG बन जाएगा, तो ये भी GBS हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली साइफर टेक्स्ट। तो इनक्रिप्शन जो है वो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने वाली क्या होती है? इनक्रिप्शन। और साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने वाली होती है डिक्रिप्शन। अगर आपके पास सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है तो दोनों की कीज इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने की एक ही होंगी, लेकिन अगर एसिमेट्रिक है तो जो इनक्रिप्शन की कीज हैं वो पब्लिक होंगी और जो डिक्रिप्शन की कीज हैं वो प्राइवेट होंगी। तो इसकी जो टर्म्स हैं वो देख लीजिए। प्लेन टेक्स्ट, द ओरिजिनल टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट और मैसेज। ठीक है। Cipher text क्या हो गया? The product when plain text is put through an encryption algorithm. Encryption क्या? It is encoding of plain text into cipher text. There are two types. Symmetric, it is encryption that uses same secret key to encrypt and decrypt. Asymmetric, it uses public key and private key algorithms. Public key क्या है? Encryption, decryption key known to all users. और क्योंकि ये पब्लिक होती है, प्राइवेट की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की इज नोन टू सिंगल यूजर ओनली। ठीक है। अच्छा, अब देखें होता क्या है कि दुनिया के अंदर कुछ कंपनीज हैं जिनको हम कहते हैं सर्टिफिकेट अथॉरिटीज। सर्टिफिकेट अथॉरिटीज ये जो है वो सर्टिफिकेट बनाती हैं। सर्टिफिकेट वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको बेसिकली ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के सॉफ्टवेयर हैं, इनको हम कहते हैं सर्टिफिकेट्स। कहते क्या है? कुछ भी कहते हैं, है सॉफ्टवेयर। ये हर एक में
हर सर्टिफिकेट में दो कीज होती हैं, यानी कि दो सब सॉफ्टवेयर होते हैं, एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। तो जो भी अपना सर्टिफिकेट लेता है उनको अपनी पब्लिक प्राइवेट की मिलती है। तो जब मिल तो फिर लोग क्या करते हैं, ये जब चाहते हैं कि जो उनको इनक्रिप्ट करके डाटा भेजे, क्योंकि उनकी अपनी पब्लिक की जो है वो इनक्रिप्ट करती है और अपनी प्राइवेट की उस इनक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करती है, पेयर में बनी हुई होती है। ये नहीं हो सकता कि इसकी पब्लिक की से आप इनक्रिप्ट कराएं, इससे डिक्रिप्ट करा लें प्राइवेट की से, या इसकी प्राइवेट पब्लिक की से आप इनक्रिप्ट करवाएं, उसकी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करा लें, ये नहीं हो सकता। एक पेयर के अंदर जो पब्लिक की है वही प्राइवेट की उसी प्राइवेट की के साथ चलती है। तो जो भी लोग हैं वो अपनी पब्लिक कीज को एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कि एलिस अगर ये चाहती है कि बॉब उसे इनक्रिप्टेड डाटा भेजे, तो एलिस बॉब को अपनी पब्लिक की दे देगी। बॉब जब भी ईमेल भेजेगा एलिस को, तो वो बेसिकली जो है वो एलिस की पब्लिक की से इनक्रिप्ट करके भेजेगा। इस सिस्टम को हम SSL और TLS भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, सिमेट्रिक कीज होती हैं। जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात करता है, तो जो उसका ब्राउजर है वो एक सिंपल की बना देता है, और वो ब्राउजर की के साथ ब्राउजर के पास वो पहुंचा दी जाती है ब्राउजर की पब्लिक की के साथ। और फिर उसके बाद जो कम्युनिकेशन होती है वो उसी से होती है, उस पब्लिक की जो उस प्राइवेट उस सेशन की से, उसको सेशन की कहते हैं। ऐसी की जो कि एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट दोनों करने के लिए इस्तेमाल हो, उसको हम क्या टर्म करते हैं, सेशन की। ठीक है। तो ये है इसका पूरा गेम। अब आप आ जाएं पास पेपर्स के ऊपर। ऑलराइट, तो ये हम देख रहे हैं, Germain uses secure socket layer protocol for secure transmission when sending data using the internet. Explain how SSL protocol secures the data for transmission. अच्छा, अब देखें यहाँ पर जब कुछ ना बताया जाए तो आप हमेशा इसको सिमेट्रिक इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे both the receiver and the sender uses the same key to send and receive the data. All right, so this is basically ये होगा। All right. Explain how SSL protocol secures data for data transmission. When the sender sends the data, it uses the key to encrypt the data, and when receiver receives the data, receiver uses the key to decrypt the data.
to decrypt the data. The keys at the both ends are the same. Give two ways that the data that a user can identify if a website uses secure data transmission. Give two ways that a user can identify if a website uses secure data transmission. A padlock appears, a padlock, all the websites which have this secure data transmission, they have a padlock appearing either at the bottom or by the URL क्या वो जो होती है एड्रेस बार. ठीक है. Secondly, the name of the website will start with HTTPS secured, HTTP secure. ये हमें बताना पड़ेगा. ठीक है. या तो हमारे पास HTTPS होगा जो फिर आगे वेबसाइट का नाम होगा, या फिर हमारे पास एक पैडलॉक नजर आ रहा होगा. ये पैडलॉक यहाँ पर भी नजर आ सकता है नाम के आगे, और ये नीचे भी नजर आ सकता है. अच्छा, Semi works for a finance company and has a laptop that he uses for his work. He has confidential data about his customers stored on his laptop. Semi does not connect the laptop to any network. Semi is concerned about his customers' confidential data being viewed by other people in his office. One method he uses to prevent other viewing the data is encryption. Identify three other methods Semi could use to prevent his customers' confidential data. अब देखें यहाँ पे आपको थोड़ी सी अपनी अकल यूज करनी होगी. यूजर नेम पासवर्ड, सही है. यूजर नेम पासवर्ड, एक्सेस राइट्स. एक्सेस राइट्स क्या होते हैं कि हर बंदा अपने यूजर नेम पासवर्ड के साथ उसको नहीं देख सकता. जिसको ऑथोराइज होगा सिर्फ वही देखेगा. प्रिवेंट करना है ना उसको. ठीक है. और इंक्रिप्शन हो गई, ये हो गया. और आपका क्या हो गया इसके अलावा? यूजर नेम पासवर्ड हो गया, एक्सेस राइट हो गई, कंप्यूटर एक्सेस डिनायल, कंप्यूटर तक लोगों को पहुंचने ना दिया जाए. ठीक हो गया. अच्छा जी. आइडेंटिफाई थ्री अदर टाइप्स ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी रिस्क. बहुत सारे रिस्क हैं. फिशिंग, अभी हमें आगे चल के पढ़ना है ये. फार्मिंग, हैकिंग, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, and so on and so forth. अच्छा जी. कैप्चर ऑल डाटा यूजिंग अ कीबोर्ड. अच्छा देखें, बेसिकली हुआ ये है कि इस डॉक्यूमेंट में 5.3 भी है. सही है. तो 5.3 भी पहले थोड़ा सा वो कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं. अब देखें 5.3 जो है वो साइबर सिक्योरिटी है. 5.3 जो है वो है साइबर सिक्योरिटी. डिस्क्राइब द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन and the aim of carrying out a range of cybersecurity threats: brute force attack, data interception, denial of service attack, hacking, malware. malware में वायरस, वॉर्म, ट्रोजन और स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, फार्मिंग, फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग, ये सब कुछ आ रहा है. ठीक है. इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं. डेटा सिक्योरिटी.
अच्छा, अब देखें डेटा सिक्योरिटी जो है, it is important to understand that data security threats are actions taken by hackers or cyber criminals to compromise on data, system or network. These threats can result in unauthorized access to data, system damages or even financial loss. तो some most common cyber security threats and their process are brute force. सबसे पहले हमारे पास कौन सा है? brute force. ठीक है, brute force attack. तो जो brute force है, इसमें क्या होता है कि this is a type of attack where hacker tries to gain access to a system or account by guessing the password through trial and error. They use software that automatically tries different combinations of password using the right one is found until the right one is found. Okay, data interception. Data interception का क्या मतलब है कि this is act of intercepting data as it is being transmitted across the network. Hackers use specialized tools to intercept data packets and extract sensitive information such as password और credit card number, जो कि अभी हम encryption के लिए इस्तेमाल कर रहे थे. Distributed denial of service attack, ये क्या चीज है? Distributed denial of service attack में क्या होता है कि हैकर ना बहुत सारे कंप्यूटर्स पे जो है वो हैक करके और उनको जो है ना अपना वो ज़ॉम्बी टाइप बना देते हैं. तो ज़ॉम्बीज होते हैं. अब उसमें क्या होता है, वो ऐसे कंप्यूटर है जिनमें वायरस मौजूद है और उनको पता ना, उनको ज़ॉम्बीज बोलते हैं. अब वो एक पर्टिकुलर डे पे वो सारे के सारे जो है किसी एक वेबसाइट को एक्सेस करना शुरू कर देते हैं, तो वेबसाइट जो है वो डाउन हो जाती है, इतनी रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाती, या फिर वो बैंडविड्थ जो है जहां तक वो रास्ता वहां तक पहुंचने का वेबसाइट का, वो चोक हो जाता है. सो इन DDoS attack, hackers flood a website or network with traffic to overwhelm the server and make it unavailable to legitimate users. हम आप नहीं कर सकते फिर उसको access. Hackers often use a botnet. Botnet क्या होता है? Which is a network of compromised computers, hacked computers, to carry out the DDoS attack. All right, so then comes hacking. Hacking is basically an act, refers to the act of gaining unauthorized access to computer system or network. Hackers use a variety of techniques such as exploiting vulnerabilities in the software. अगर हम software update नहीं करते तो vulnerabilities रह जाती हैं. और social engineering. Social engineering का क्या मतलब है? Social engineering में phishing, farming और ये आता है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में. Social engineering to gain access to sensitive information. ठीक है. अच्छा जी, इसके बाद आता है मैलवेयर. मैलवेयर में ये सारे आते हैं, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर, रैंसमवेयर, ये सब आते हैं. तो malware क्या? Malware refers to any type of software designed to harm a computer system or network. It includes viruses, worms, Trojan horses, spyware, adware, ransomware. Hacker use different types of malware to steal data, gain access और cause damage. तो ये सब कुछ जो है ना, ये एरर कर सकता है. अब देखिए malware के बारे में देखते हैं कि क्या है. वायरस क्या होता है? वायरस इज बेसिकली is a type of malware. Malware का मतलब software which is made for malfunctioning, to make users computer malfunction, to basically harm someone. ठीक है ना? So a virus is a type of malware that attaches itself to the legitimate files or programs and replicates itself once the infected file is executed. Viruses can cause various forms of damage, such as corrupting or deleting file, consuming system resources, or causing system crashes. They typically spread through sharing infected files or emails, downloading malicious attachments, or visiting compromised websites. So इसका हमें ख्याल रखना चाहिए. Worm क्या है? A worm is a self-replicating malware that does not require user intervention to spread. देखें वायरस किस तरह होता है, आपने कोई फाइल वायरस वाली चला दी तो वायरस आ जाएगा, लेकिन worm खुद ब खुद आ जाता है. Unlike viruses, worms do not need to attach themselves to existing files or programs. Instead, they exploit vulnerabilities in the computer network or operating system to replicate and distribute themselves. तो अगर आपने operating system के patches नहीं किए हुए हैं या system आपने update नहीं किए हुए हैं तो इसने आ जाना है. Worms can cause damage by consuming bandwidth, deleting files, or installing backdoors. Backdoors का मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो फिर हैकर को आपके कंप्यूटर में एक्सेस देते हैं.
इसके बाद आपके पास आ गया ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स जो है वो बेसिकली इज अ टाइप ऑफ malware that basically mimics as a legitimate program or file, tricking users into downloading and installing it. ठीक है ना, मिमिक करता है वो, ट्रिक्स, it tricks as a legitimate program or file, tricking users into downloading and installing. And once installed, Trojan can perform various malicious activities such as stealing sensitive data, deleting files, or providing remote access to attackers. Trojans do not replicate themselves like virus or worms. ये याद रखिएगा, Trojans जो है वो अपने आप को replicate नहीं करते. Spyware. Spyware is a type of malware. Spyware is a type of malware. ये भी malware है obviously. Malware designed to secretly monitor and collect information about users' activities without their knowledge or consent. This can include keystrokes, browsing history, passwords, or other sensitive data. Spyware is often distributed through deceptive downloads or bundled with other software, and it can be used to identify theft, targeted advertisers, and corporate espionage. मतलब आप जब कोई पैसों वाला सॉफ्टवेयर बगैर पैसों का कहीं से डाउनलोड करेंगे तो उसके साथ चांसेस है। फिर आता है हमारे पास एडवेयर। एडवेयर जो है इसका क्या मतलब है, आपको जबरदस्ती का ऐड दिखाता है। इट इज शॉर्ट फॉर एडवर्टाइजिंग सपोर्ट सॉफ्टवेयर, इज अ टाइप ऑफ malware that displays unwanted advertisements on the user device. ठीक है ना, ऑफन पॉपअप्स दिखाता है या बैनर्स दिखाता है। ठीक है ना, इट इज नॉट ऑलवेज मैलिशियस, लेकिन ये अनोइंग जरूर होता है। इसके बाद आ गया रैंसमवेयर। ये नई चीज है, कोई भी हैकर आपके कंप्यूटर में घुस के आपके पूरे कंप्यूटर की फाइलों को ना इनक्रिप्ट कर देता है और फिर कहता है पैसे दो तो डिक्रिप्ट करूंगा, नहीं तो आप उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब आ जाए वापस फार्मिंग फिशिंग पे। फार्मिंग जो है ना, फार्मिंग फिशिंग भी सोशल इंजीनियरिंग है। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है किसी को भी बेवकूफ बना दो, उसके साथ मोहब्बत दिखा के, उसकी हमदर्दी करके। सही है ना, तो पहले फार्मिंग फिशिंग देख लेते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक्स वेयर अटैकर रीडायरेक्ट्स द वेबसाइट्स ट्रैफिक टू अ फेक वेबसाइट दैट लुक्स लाइक इट्स ओरिजिनल वन। तो आपको ना फार्मिंग के अंदर कोई सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर लगा देते हैं और आपको जो है वो आप जब किसी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाते हैं तो वो साइट लगती तो ओरिजिनल है लेकिन वो होती फेक है, उस पर ले जाता है। उसका जो पर्पस है वो क्या है, वो है स्टील करना है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, पासवर्ड्स या क्रेडिट कार्ड नंबर्स को। फिशिंग क्या होती है, फिशिंग में आपके पास इज अ टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक वेयर हैकर सेंड्स एन ईमेल और मैसेज दैट अपीयर्स टू बी अ message from a legitimate source such as a bank or social media platform. The message usually contains a link or attachment that when clicked installs software and take user to the fake website where they are prompted to enter sensitive information. यानी कि आपके पास एक मैसेज आया कि भाई आपका बैंक का पासवर्ड जो है वो एक्सपायर हो रहा है, उसको चेंज कर ले, और एक लिंक दे दिया। आपने बगैर देखे सोचे समझे उस लिंक पे क्लिक कर दिया, वो आपको एक फेक वेबसाइट पे ले गया। आपने वहां पे अपना यूजर नेम पासवर्ड चेंज किया जो कि बैंक के अंदर ओरिजिनल वेबसाइट पे भी चेंज हो गया, और उसके बाद आपको पता भी नहीं चला और वो आपके पैसे वैसे निकल गए। अब आ जाए आखिरी वाला, ये नई चीज आई है, इसको हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग का क्या मतलब है? सोशल इंजीनियरिंग जो है ये बेसिकली refers to the act of manipulating people to divulge sensitive information or perform action that benefits the hacker. It can take many forms such as phishing, यानी कि लोगों को बेवकूफ बना के। सही है ना, कि अब्बू की तरफ से मेल आ गई कि बेटा जरा पासवर्ड देना घर का क्या है, आपने कहा चलो अब्बू की तरफ से आई है, उनको बता देता हूँ। बस वो पता चला अब्बू की तरफ से नहीं आई थी, किसी ने अब्बू बन के की थी ना। तो the aim of these cyber security threats is usually to gain unauthorized access to the computer system or network, steal sensitive information, cause damage, disrupt operation. It is important to take measures to protect your devices and data by using strong passwords, keep software updated, and being vigilant. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अब देख के रखनी है। ऑलराइट, तो मैं इसके जो है वो कुछ आपको
वो भेजता हूँ नोट्स, होल्ड करें। ठीक है, अब हम वापस आते हैं, अब हमारे लिए आसान हो जाएगा। कैप्चर्स, अब आपको बताएं 6 स्टेटमेंट्स आर गिवन अबाउट इंटरनेट सिक्योरिटी रिस्क्स। Capture all data entered using a keyboard. This is spyware. Can be installed onto a web server. This is denial of service. No, denial of service. No, and this is basically a virus. Prevents access to a website. This is basically denial of service. Is malicious code on a computer. This is virus. This is spyware. Is self-replicating. Self-replicating is spyware, not virus. Damages the files on the user's hard drive. That is virus. That is how it works. All right, this question. A firewall can be a software or hardware based. It monitors traffic between the computer and the network. The user sets rules. The user set dash for the traffic. Storage, store, reject, processor, outgoing, input, criteria, rules. The firewall will dash or dash the traffic based on it. Accept or reject. It can help prevent hacking and malicious software that could be a threat to the security of the data. अच्छा, अब देखें जरा ये वाला जो टॉपिक है ये रह गया, ये बेसिकली टॉपिक बनेगा हमारा, हम जो सिक्योरिटी थ्रेट्स थे उनसे हम जान कैसे छुड़ाएं, ठीक है ना। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर हमें यहाँ पर एक्सप्लेन हाउ रेंज ऑफ सॉल्यूशंस आर यूज्ड टू हेल्प कीप डेटा सेफ फ्रॉम द सिक्योरिटी थ्रेट्स। अब आ जाए, पहले हम इसको जरा डिस्कस कर लें, सिक्योरिटी थ्रेट्स की प्रिवेंशन को। अच्छा, अब देखें इसमें हमारे पास एक्सेस लेवल है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्सेस लेवल। तो एक्सेस लेवल जो है उसका मतलब क्या है, एक्सेस लेवल controls who has access to certain data or systems by limiting access to only those who need it. The risk of the data breaches and unauthorized access is reduced. यानी कि आप ऐसे यूजर नेम पासवर्ड के साथ ही टाई अप कर दें कि किसके पास किस चीज का एक्सेस है, नहीं तो वो नहीं होगा। एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर, एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर यहाँ पे आप देखें ये आ गया दूसरा।
इंक्लूडिंग एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर। तो ये वाले जो सॉफ्टवेयर हैं ये वायरस और स्पाईवेयर से बचाएंगे। इंक्लूडिंग एंटीवायरस कैन डिटेक्ट एंड remove malicious software from computer, helping to protect against the viruses, spywares and other types of malware. फिर आगे ऑथेंटिकेशन, यूजर नेम, पासवर्ड, बायोमेट्रिक्स, टू स्टेप वेरिफिकेशन, हमें सब इसका पता है, ठीक है ना। ऑथेंटिकेशन में क्या है? Authentication involves verifying the identity of a user before granting access to a system or data. Authentication methods include username, password, जब तक आपके पास नहीं होंगे, biometrics, वो अभी जो पीछे नीचे सवाल आया था उसमें आप biometrics भी लिख सकते हैं, two step verification भी लिख सकते हैं, among the others. Alright, biometrics लिख सकते हैं, two step verification इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि उसमें ये था कि वो बंदा जो है उसका कंप्यूटर इंटरनेट से अटैच नहीं है। अच्छा जी, अब आ गया ऑटोमेटिंग सॉफ्टवेयर अपडेट्स। तो मैंने आपको ये बताया था कि वल्नरेबिलिटीज को सिस्टम की जो सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटीज होती हैं उसको ये एक्सेस करता है और उसको एक्सप्लॉइट करता है वायरस। तो रेगुलरली अपडेटिंग सॉफ्टवेयर कैन हेल्प टू प्रिवेंट वल्नरेबिलिटीज फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय अटैकर्स। By automating software updates, the latest security patches and fixes can be applied to a system automatically, reducing the risk of attacks. अब आ जाएं, checking the spelling and tone of communication. This is something funny, but this is very good. अब देखें, ज्यादातर क्या होता है कि जो लोग जो कंपनीज को फेक करते हैं ना, तो वो गलतियां वगैरह सब करते हैं। तो अब देखें, फिशिंग अटैक्स often use language that is designed to trick users into giving away sensitive information. By checking the spelling and tone of communication, user can identify suspicious matches and avoid falling victim to phishing scams. आपको अगर कोई बैंक से कॉल करे और बात ऐसे कर रहा हो जैसे वो कोई डोमेस्टिक है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लेजिट बंदा नहीं है। अच्छा, अब देखें, दूसरा ये कि हमें पता क्या चले कि अगर हम किसी सही वेबसाइट में है, गलत वेबसाइट में है, तो उसके लिए ये है कि आप यूआरएल ऊपर देखेंगे। यूआरएल क्या होता है? वो एड्रेस वेबसाइट का। तो चेकिंग यूआरएल्स अटैच्ड टू अ लिंक। स्कैमर्स often use fake links to trick users into visiting malicious websites. By checking the URL attached to the link, user can verify that it is legitimate and avoid clicking on potentially harmful links. जब आपको कोई लिंक भेजे ना, तो जरा उसके एड्रेस को देख लिया करेंगे उसमें है क्या। Then comes firewall. Firewall एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन अभी फिलहाल इसको हम कर लेते हैं स्लो से, छोटे से लेवल पे। उसके बाद फिर हम देखेंगे, अगर हम इसकी लंबी जरूरत होगी तो फिर हम उसका पूरा टॉपिक देख लेंगे। Firewalls are often they are used as software or hardware based systems that control incoming and outgoing network traffic. सही है, based on the criteria, based on the predefined rules or criteria, ठीक है। They can help to prevent unauthorized access to computer systems and protect against cyber attacks. इसमें ये होता है कि जितने भी डेटा के पैकेट्स आ रहे हैं वो सबको ये चेक करता रहता है। प्राइवेसी सेटिंग्स, ऑब्वियसली ये प्राइवेसी सेटिंग्स हैं, ये बहुत अच्छी होती हैं, आप भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, आपके ब्राउजर में। तो privacy settings allow users to control how their personal information is shared on website and social media platforms. By setting privacy options appropriately, user can reduce the risk of their personal information being compromised. तो कुछ किसको एक्सेस है, कितनी एक्सेस है, क्या करना है। प्रॉक्सी सर्वर्स भी फायरवॉल जैसे ही होते हैं, लेकिन वो बेसिकली उनका काम ये होता है कि वो रोल प्ले करते हैं। फायरवॉल तो डायरेक्ट चेक करता है, ये रोल प्लेयर्स होते हैं, ये रोल प्ले करके दूसरे को ये बताते हैं कि ये बेसिकली कोई और सर्वर है और अगर अटैक होता है तो फिर इन पे होता है। प्रॉक्सी सर्वर्स acts as intermediaries between user and the internet, helping to protect against attacks by blocking malicious traffic and filtering out potentially harmful content, ठीक है ना। तो अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं या उसके ईमेल सर्वर पे जाते हैं, तो ये प्रॉक्सी खुद ही ईमेल सर्वर बन जाता है, ताकि अगर कोई अटैक होना है तो वो उसी के ऊपर हो जाए। इस तरीके से रोल प्ले कर रहा होता है। तो इंटरमीडिएरीज होते हैं ये बिटवीन द वेबसाइट्स एंड द यूजर्स। फिर आ गया सिक्योर सॉकेट लेयर। इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि SSL जो है वो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ कीज है, चाहे वो आपकी
सिमेट्रिक हो या नॉन सिमेट्रिक कीज हो, ये उसकी एप्लीकेशन है. So secure socket layer is a security protocol that encrypts data as it is transmitted over the internet, helping to protect against interception and tampering of the data. SSL is commonly used to secure online transactions such as online banking and commerce. ठीक है, तो ये थ्रेड्स को आपको जरा देखना होगा कि हम किन किन तरीकों से जो है वो बच सकते हैं. तो ये जो टॉपिक है कीप डेटा सिक्योर फ्रॉम थ्रेट्स, ये मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया. अब आ जाएं वापस पास पेपर के क्वेश्चंस के ऊपर. मुझे जरा 5 मिनट दीजिएगा, आई बी राइट बैक. All right, next question. Elsa writes a paragraph in an examination about encryption. There are several terms missing from the paragraph. Complete the paragraph using the list of given terms. Not all the terms may need to be used. Some terms may be used more than once. The data is encrypted using a key. This is an algorithm that is used to scramble the data. The data before encryption is known as plain text. When the data has been encrypted, it is known as ciphertext. To read the encrypted data, it needs to be decrypted using a, again, key. All right.
तो की 2 बार आएगा, इंक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए भी। थ्री ऑनलाइन सिक्योरिटी थ्रेट्स, अभी हमने इतने सारे थ्रेट्स पढ़े हैं। मैलवेयर हो गया, फिशिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, हैकिंग हो गया। अच्छा, अब ये जो है, ये टीएलएस वगैरह अब आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। टीएलएस इज नॉट देयर, ठीक है। एसएसएल है, टीएलएस नहीं है। चलें, ये अब सारे सेम नेचर के क्वेश्चंस हैं, अगेन एंड अगेन। फायरवॉल का जरा देख लेते हैं। फायरवॉल्स आर ओनली अवेलेबल एज हार्डवेयर डिवाइसेस, फॉल्स। फायरवॉल बिकॉज सॉफ्टवेयर भी होती है और हार्डवेयर भी होती है। फायरवॉल अलाउज अ यूजर टू सेट रूल्स फॉर अ नेटवर्क ट्रैफिक, दैट इज ट्रू। Firewalls will automatically stop all malicious traffic. Malicious traffic automatically. Malicious traffic नहीं, ये वायरस नहीं रोकता, ये सिर्फ हैकिंग के अटैक्स रोकता है। Firewalls only examine traffic entering a network, ये भी false है, जो बाहर जा रहा होता है उसको भी कर रहा होता है, exiting out, going out. Firewalls encrypt all data that is transmitted around, ये भी wrong है, ये encrypt नहीं करता। Firewalls can be used to block access to a certain website, that is true. ठीक है, सो ये होगा इसके सारे। वापस आ जाते हैं अब सिलेबस पे। नेक्स्ट मूव, हम थे 2.3 पे। इंक्रिप्शन। अब हमारा शुरू होगा चैप्टर 3, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको आपको समझना है। इसके अंदर हमारे पास जो है वो पूरे कंप्यूटर की आर्किटेक्चर, प्रोसेसर की आर्किटेक्चर सब आएगा। इसको हम समझते हैं यूजिंग बेसिकली a diagram. अच्छा, अब देखें, जो बेसिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो जो हम पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ कंप्यूटर। CPU processes instructions and the data that are input to the computer so that the result can be output. What is meant by microprocessor? Microprocessor type of integrated circuit on a single chip that does everything for us.
and then understand the purpose of components in a CPU that has a von Neumann architecture, ALU, CU, program counter, MAR, MDR, CIR, accumulator, buses, fetch, decode, execute cycle, core, cache, CPU. All right, the number of cores. ठीक है, ये हमें करना होगा. Number of cores, the number of cores, size of the cache and speed of the clock. ये सब हमें यहाँ पर करना है. ठीक है. पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट ये हमें बताना है. डिस्क्राइब द पर्पस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम. एम्बेडेड सिस्टम तो खैर बात की कहानी है, तो पहले हम ये सारा कर लेते हैं एक साथ. तो देखें, सीपीयू हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर को. सीपीयू हम किसे कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर को. जो भी सिस्टम में काम हो रहे हैं वो सारे के सारे सीपीयू करता है. ठीक है ना, सारे के सारे सीपीयू करता है. और जो इनपुट आप कर रहे हैं, जो आउटपुट कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, हर चीज जो है वो सीपीयू करता है. ठीक हो गया. तो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आपके प्रोग्राम में है सबको फॉलो सीपीयू करता है, और उसको फॉलो करने के लिए उसके अंदर एक आर्किटेक्चर होती है, एक सिस्टम होता है, तो वो हमें देखना होता है. ठीक है. अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट है. बहुत सारे सर्किट्स आपस में इंटीग्रेट होते हैं. शुरू जब मैंने किया था उस वक्त भी मैंने आपको बताया था, दिस इज कॉल्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और बेसिकली इट हैज गॉट एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू रन द कंप्यूटर. ठीक हो गया. अच्छा, अब आ जाएं कंपोनेंट्स. तो इसके लिए हमारे पास आर्किटेक्चर है. तो फंक्शंस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर: कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. अच्छा, अब देखें फॉर्मेशन, सॉरी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या चीज है. कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम ये पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर कैसी है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, हर पार्ट क्या करता है, और उसके जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं. सही है ना. तो हमारे पास रजिस्टर्स हैं और वो प्रोसेसर के अंदर होते हैं. रजिस्टर्स जो है वो स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट मेमोरीज अवेलेबल टू द माइक्रो प्रोसेसर, दे आर इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर. रजिस्टर्स आर द मेमोरीज विद अ पर्पस. अब क्या, किस मेमोरी का क्या पर्पस है वो देखा जाएगा. बहरहाल आपको यहाँ पर 5 रजिस्टर्स पढ़ने हैं: पीसी, सीआईआर, एमएआर, एमडीआर और एक्यूमुलेटर. इसमें से पीसी, सीआईआर, एमएआर और एमडीआर जो है वो स्पेशल पर्पस होते हैं, और एक्यूमुलेटर जो होते हैं वो जनरल पर्पस होते हैं. स्पेशल पर्पस का मतलब ये है कि इनका जो काम है बस ये वही कर सकते हैं, और जनरल पर्पस का मतलब ये है कि इनसे आप कई किस्म के काम ले सकते हैं. ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके पास 2 किस्म की कॉपीज होती हैं, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर्स की होती है, वो स्पेशल पर्पस हो गई जिसमें आपसे वही काम करते हैं, और एक आपके पास रफ कॉपी होती है जिसमें आप कोई भी काम कर सकते हैं. तो ये है सीन. अब इसमें बसेस होती हैं. बसेस क्या हैं? ये पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए तारे हैं, जिनको हम कहते हैं बसेस. ठीक है. तो ये बसेस, इनका क्या क्या काम होता है इसको हम देखते हैं. तो अब सबसे पहले आप ये देखें, आपके पास एक मेन मेमोरी है. मेन मेमोरी के 2 हिस्से हैं. एक में हमने एड्रेस रखा हुआ है, एक में हमने कंटेंट रखा हुआ है. कंटेंट 2 किस्म का, या तो वो प्रोग्राम है, देखें ये प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस आपको नजर आ रही हैं, वो डाटा है जिसमें सिर्फ डाटा पड़ा हुआ होता है. तो कंटेंट 2 किस्म का होता है: इंस्ट्रक्शन, डाटा. इसका मतलब है मेन मेमोरी में जो आप प्रोग्राम लोड करते हैं, जब आप डबल क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम आपका रैम में जो लोड होता है वो मेन मेमोरी में आता है. एक प्रोग्राम जो है वो बेसिकली एक नंबर ऑफ, एक प्रोग्राम जो है वो इट्स अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड देयर डाटा. तो ये जो सारी इंस्ट्रक्शंस है वो है, और ये उनका डाटा है, और ये सारे के सारे मेमोरी के एड्रेसेस पर रखे होते हैं. ठीक है. तो जब आपका प्रोग्राम चलता है तो जो प्रोग्राम की पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, देखें ये इंस्ट्रक्शन है और ये उसका एड्रेस है. तो जो एड्रेस है वो आ जाता है पीसी में. पीसी क्या है? ये एक रजिस्टर है. रजिस्टर क्या होता है? स्टोरेज होती है छोटी सी प्रोसेसर के अंदर,
जो इसका एक पर्पस भी होता है। तो यहाँ पर इसका पर्पस क्या है, पीसी इज द प्रोग्राम काउंटर दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है प्रोसेसर में इस वक्त जो भी इंस्ट्रक्शन चल रही है, जो भी इस वक्त इंस्ट्रक्शन चल रही है उसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन वो होगी जिसका एड्रेस यहाँ पे रखा हुआ है। पीसी से वो एड्रेस आ जाता है एमएआर में। तो पीसी के अंदर व्हेन पीसी इज द प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, एमएआर इज द रजिस्टर दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन। तो जैसे ही वो एड्रेस 50 एमएआर में आएगा, पीसी अपने आप को इंक्रीज कर लेता है फॉर द सेक इट ऑलवेज कीप्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब आप देखें पीसी एक एक करके आगे बढ़ता है, तो इंस्ट्रक्शन भी तो ऐसे ही होती है ना, 50 के बाद 51, 52, 53। तो 50 जो होगी वो आ जाएगी पीसी में, और पीसी से फिर वो चली जाएगी एमएआर में। 50 एड्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, और ये किससे आ रहा है, कंट्रोल बस से। तो ये 50 यहाँ पे आ गया। अब जैसे 50 यहाँ पे आएगा, पीसी विल इंक्रीमेंट इटसेल्फ बाय 1। तो ये आपको याद करना है, ये इसको कहते हैं फेच कोड एग्जीक्यूट साइकिल। द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द पीसी program counter goes to MAR, becomes the address of the current instruction, PC increments self by 1. MAR then points to the memory address using address bus. तो अब ये 50 को point कर रहा है। From the address mentioned in MAR through the data bus, the instruction at that address arrives in MDR. So दोबारा सुन लें, the PC holds the address of next instruction. That address goes to MAR, PC increments itself by 1. अच्छा, उसके बाद MAR holds the address of current instruction. A data bus, an address bus is attached to it. And that address, through that address bus, the address in the PC goes to main memory, and from that address, the instruction through the databus arrives in MDR. That instruction from MDR then goes to CIR. This is called fetch. This is called what? Fetch. And then CIR decodes and executes that instruction. This is decode and execute. अब ये अगली instruction फिर 51 जो होगी वो आ जाएगी MAR में। PC अपने आप को 52 कर लेगा, MAR पॉइंट करेगा 51 को, 51 से जो इंस्ट्रक्शन है वो डेटा बस के जरिए MDR में आ जाएगी, MDR से CIR में चली जाएगी, और ये साइकिल चलती रहेगी। इसको हम कहते हैं फैच, और फिर CIR उसको डिकोड और एग्जीक्यूट करेगा। अब डिकोड एग्जीक्यूट का क्या मतलब है, यानी कि वो समझता है कि क्या करना है इसका, और फिर उसको वो करवाता है किससे, ALU से। ALU सारे काम करता है। ALU जो है वो कंट्रोल यूनिट से जुड़ा हुआ होता है, और ALU का सुपरवाइजर कौन होता है, CIR। CIR make ALU does whatever it does. So all the work which is either arithmetic, addition, subtraction, multiplication, division, or logic, if, then, else, and, or, exclusive, or not, ये सारे काम जो है वो arithmetic and logic unit करता है। तो in a way processor is divided into 3 parts: control unit, ALU, and memory unit. अच्छा, this main memory, though it is outside microprocessor, but it is still the part of microprocessor. तो इस मेमोरी को अगर आप निकाल देंगे तो सिस्टम ऑन नहीं होगा। ये अब प्रोसेसर से बाहर ये मेन मेमोरी क्यों रखी गई है, उसके 2 रीजन है। एक तो रीजन ये है कि मेन मेमोरी जो है वो हम अक्सर चेंज करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं। तो जब हम अपग्रेड करना चाहेंगे तो हम सिर्फ उसको निकालेंगे और रख देंगे, दूसरी लगा देंगे। लेकिन अगर ये प्रोसेसर के अंदर होगी तो हमें पूरा का पूरा प्रोसेसर चेंज करना पड़ेगा, इस वजह से इसको बाहर रखते हैं। ठीक है। दूसरा, प्रोसेसर खुद बहुत छोटी सी चीज होती है, मेन मेमोरी बहुत बड़ी चीज होती है। तो अगर ये मेन मेमोरी को आप अंदर लगा देंगे, the processor would have grown unnecessarily. That is not required. So that is why they keep main memory outside. But keeping main memory outside has got few disadvantages. Number one, the data that is being transferred from main memory to microprocessor will take time. All right. And secondly, the main memory is not as fast as registers. Registers are memory inside the process. So anyways, when the main memory is outside, you need to connect that main memory with the microprocessor. To connect them,
there are a number of buses called control bus, address bus, and data bus. So control bus is used by the microprocessor to control the flow of instructions execution, which is fetch, decode, execute cycle. All right, and to communicate with the parts outside the microprocessor. So the main purpose of control bus is to control the communication between the registers and outside memory to keep system executing instructions. It is also used control bus to synchronize operations between these registers. Address bus. Address bus is basically one-sided bus. If you could see, it is only pointing out, because if you like to bring in the data, you are pointing out because you are bringing in data from the main memory. If you like to place the data back in the main memory, still you are pointing out. So this address bus is always pointing out. Then the data bus that brings in the data or the instruction inside the microprocessor or taking it out from the microprocessor. All right. So whatever the data that is being developed and produced during the execution of program is kept by the arithmetic and logic unit into accumulator. So that is why they call accumulator general purpose register, because it is actually holding the data which is being produced during the execution of the program, and it is not one type of the data, it can be any type of the data. So accumulator is a general purpose register. So in a way, in fetch, decode, execute cycle PC, the address of the next instruction from PC goes to MAR. PC increments itself by 1 MAR, then points to the main memory using address bus. From that address in the address bus, the data arrives or instruction arrives in MDR. From MDR, it goes to CIR. So this is from PC to CIR. This whole journey is called fetch, and then CIR decodes and executes the instruction. So what is an instruction? Instruction is an assembly language command. What is assembly language? It is a low-level language which is basically used to write programs for computer hardware. Instructions. The singular instruction is one assembly language command. Instructions is the whole program. Set of instructions means assembly language instruction set. All right. So अगर एक instruction लिखी हुई है तो उसको हम instruction बोलेंगे, लेकिन अगर ये चारों पांचों को हम इकट्ठा कर दें तो ये क्या बन जाएगा? प्रोग्राम। और इस तरह की सारी इंस्ट्रक्शन का जो सेट है उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट, असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस का सेट. So control bus, it carries the control signals from the control unit to other parts of the program. It is bidirectional. Address bus, it carries the address of the content in the computer's main memory. It is unidirectional. Data bus, it carries the content back and forth between the computer microprocessor and main memory. It is bidirectional. CI की एक्सपेक्टेशन क्या है कि आपको पता हो कि fetch, decode, execute साइकिल क्या है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, बसेस क्या होते हैं, और fetch, decode, execute साइकिल की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, क्या नहीं क्या आपको डेटा दिखा के बताया जाएगा कि क्या हो रहा है. ऑलराइट, तो ये है सारा गेम. अब देखें इसके अंदर इन्होंने ये सब कवर किया, ALU, CU, PC, MAR, MDR, accumulator, CIR, RAM, using buses to transmit data and address signals, using units to fetch, decode and execute. So ये है सारा का सारा. अब आ जाएं कोर, कैशे एंड क्लॉक. अब देखिए कोर, कैशे और क्लॉक स्पीड जो है ये कंप्यूटर की स्पीड को वो करते हैं, अफेक्ट करते हैं. तो पहले हम देख लेते हैं अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय अ कोर. So understanding the key components of the central processing unit, such as core, cache, and clock speed, is essential for grasping how these factors include CPU's performance. Okay. The core is an independent processing unit within the CPU that can execute instruction and perform calculation. So, yani ki this is a little CPU inside a bigger one.
Modern CPUs often contain multiple cores to improve processing capabilities, allowing them to execute multiple instructions concurrently. This is known as parallel processing or multi-threading. So if you have got more than one cores in your system, you can execute more than one instruction at a time, because one processor can only execute one instruction. If you have got multiple cores which are little processor inside processor, so you can execute more than one instructions together. Those more than one instructions can be from the same program, from the different program. Nowadays, it is very common that in our cell phones or in our computers, we actually run multiple programs. So those multiple programs are sometimes running on multiple cores. Impact on performance for this core. Now, so the more cores a CPU has, the more tasks it can perform simultaneously, which can lead to improved performance, especially in multi-threaded application when running multiple programs concurrently. However, not all software can efficiently utilize multiple cores, and in some cases, the performance gains may be limited. But yes, हो जाता है. Second one is cache. कैशे एक ऐसी रैम होती है जो कि प्रोसेसर के अंदर होती है, जिसको हम यूज करते हैं स्पीड अप करने के लिए. तो जो प्रोसेसर से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था उनकी स्पीड स्लो होती है, प्रोसेसर तेजी से वो कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो एक इंस्ट्रक्शन के बजाय एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन ले आते हैं और कैशे में रख देते हैं. तो जब तक कैशे वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती रहती है, वो और ले आता है सिस्टम. तो पहली बार का जो डिले है वो फिर बार बार नहीं आता. So cache is a small high-speed memory located within the CPU that stores frequently used data and instruction. It helps reduce the time the CPU spends accessing the data from the slower main memory RAM. Cache memory is organized into different levels. इसके भी levels होते हैं, L1, L2, L3. अब इसका impact on performance क्या होता है? A larger cache can store more frequently used data, reducing the number of times the CPU needs to access the slower main memory, which result in faster overall performance. However, increasing cache size comes with a trade-off, such as higher power consumption instead of manufacturing cost, a larger physical size. तो जो कैशे है उसका साइज भी बड़ा होता है, पावर भी ज्यादा खाती है और महंगी भी बहुत बनती है. तो कैशे इतनी होती नहीं है. आप अच्छे से अच्छे सिस्टम लेंगे ना, तो उसकी कैशे 60 MB 50 MB, मेरे कंप्यूटर की 20 MB है, लेकिन उसका पर्पस पूरा हो जाता है. कैशे जो है वो सिस्टम की वर्किंग को बेहतर बना देती है. क्लॉक. अब सिस्टम क्लॉक क्या होता है? क्लॉक जो है वो इस तरह जैसा हमारा हार्ट बीट करता है तो हमारा जिस्म काम करता है ना, बिल्कुल ऐसे ही क्लॉक जब क्लिक करता है तो फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल चलती है. तो अगर क्लॉक तेजी से बीट करेगा, टिक करेगा, तो तेजी से फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल चलेगी. अगर हल्के हल्के करेगा तो हल्के हल्के चलेगी. तो क्लॉक जो है इज अ मेजर ऑफ हाउ मेनी साइकिल्स सीपीयू कैन कंप्लीट पर सेकंड, एक्सप्रेस इन हर्ट्ज. A higher clock speed indicates that the CPU can process instructions and perform calculation. आप भी तो देखें ना, आपको पता होगा आपका कंप्यूटर 2 गीगाहर्ट्ज का है, 3 गीगाहर्ट्ज का है. गीगा का मतलब क्या? बिलियन. अब मेरा कंप्यूटर फर्ज करें 2.5 गीगाहर्ट्ज का है, तो 2.5 गीगाहर्ट्ज का मतलब ये हो गया कि 2.5 बिलियन साइकिल्स टाइम हमारा जो है वो क्लॉक चल रहा है. इसका इम्पैक्ट क्या होता है? ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट ये होता है, हायर क्लॉक साइकिल स्पीड्स can lead to faster processing of instructions, resulting in improved performance for a single thread task or applications. However, a higher clock speed also generates more heat and consumes more power, which may necessitate additional cooling solutions. अब आप देखें जो लोग गेमिंग करते हैं वो अपने पास सिस्टम में जाके जो है वो अपने ओवरक्लॉक कर सकते हैं सिस्टम को. बट ओवरक्लॉकिंग जो है ना, दैट कम्स विद बेसिकली more heat and the chance that you will basically spoil your microprocessor. So the conclusion is the number of cores, sizes of the cache and speed of the clock all play a crucial role in determining the performance of CPU. An increased number of cores allow for better multitasking and parallel processing, while a larger cache and higher clock speed can improve overall processing speed. Understanding these factors is essential for you students to appreciate the intricacies of CPU performance and make informed decisions when selecting or designing computer systems and answering an exam. Okay.
So let me send you some data about it. भेज दिया। अब आगे चलते हैं। अब हम आते हैं एम्बेडेड सिस्टम पे। एम्बेडेड सिस्टम पे आते हैं। डिस्क्राइब द पर्पस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम एंड आइडेंटिफाई डिवाइसेस इन विच दे आर कॉमनली यूज्ड। सो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं किस तरीके से होगी। अब देखें एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं। अब जैसे आपके यहाँ ओवन होगा, ओवन जो है वो भी किसी सॉफ्टवेयर पे चलता है, सही है ना। एसी है वो भी किसी सॉफ्टवेयर पे चलता है, कोई टॉय कार है वो भी किसी सॉफ्टवेयर पे चलता है, अगर टीवी एंड्रॉइड नहीं है तो वो भी किसी सॉफ्टवेयर पे चलता है। तो जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं ये सारी की सारी इनको सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। अगर वो प्रोसेसर वाली डिवाइस है तो यानी कि ऐसी डिवाइस जिसमें आप कोई भी सॉफ्टवेयर लगाएं और उसको चला दें तो उसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लेकिन अगर ऐसी डिवाइस है जो प्रोसेसर वाली नहीं है और उसका एक ही काम है, जैसे ओवन हो गया, फ्रिज हो गया और इस तरीके से टॉयज हो गए, या कोई बहुत सारी डिवाइसेस हैं, हमारा प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, इन सब के अंदर जो सिस्टम होते हैं उनको हम कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम्स कहते हैं उनको। तो व्हाट आर एम्बेडेड सिस्टम्स? एम्बेडेड सिस्टम्स आर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम्स डिजाइन, इनको माइक्रो कंट्रोलर भी कहा जाता है, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क विद इन अ लार्ज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सिस्टम। अनलाइक जनरल पर्पस कंप्यूटर्स such as personal computers or laptops or cell phones, embedded system focus on dedicated functions which make them an essential component in wide variety of devices। सही है। तो अब हम देखते हैं कि पर्पस क्या है। The primary purpose of an embedded system is to perform dedicated functions within the large device or system. These functions can range from simple tasks such as controlling a single aspect of the device to complex such as managing the multiple components of the larger system. Embedded systems are designed to be highly efficient and reliable, ensuring that the specific task और फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड विद मिनिमल रिसोर्सेज। आपने सुना होगा आजकल ताइवान जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा चिप्स बनाता है। जब ताइवान मतलब आईसी, इंटीग्रेटेड सर्विस सर्किट्स चिप्स, जब ताइवान बनता तो पूरी दुनिया में गाड़ियां भी नहीं बन रही थी, कंप्यूटर भी नहीं बन रहे थे, सेलफोन भी नहीं बन रहे थे, क्योंकि वो चिप्स ही प्रोवाइड नहीं कर रहा था। ऑलराइट, अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है एम्बेडेड सिस्टम्स की? एम्बेडेड सिस्टम्स टिपिकली हैव द characteristics like specific functionality. Embedded systems are designed to perform a single dedicated function or limited set of related functions, unlike general purpose computer. दूसरा क्या है? Resource constraints. Embedded systems often operate under strict constraints such as limited memory, processing power, or energy consumptions. This requires careful design and optimization to ensure that the system operates efficiently within these constraints. Real-time operations. Many embedded systems are required to respond to inputs. आप अब जब एसी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी चल रही है, उसका ECU है, आप ओवन चला रहे हैं, उसमें आपको फौरन चाहिए होता है जैसे ही आपको एक्शन ले आपको उसका जवाब मिले। तो इसके अंदर रिलायबिलिटी भी है, ड्यूरेबिलिटी भी है। Embedded systems are often deployed in harsh environments of mission controlled, mission critical applications requiring high level of reliability, durability. अब एक सिस्टम है, आपने अगर मोटर पानी की मोटर पे लगवाया हुआ है और पानी की मोटर बाहर है तो ह्यूमिडिटी, हीट, बारिश सब बर्दाश्त कर रहा होगा वो। इंटीग्रेशन, एम्बेडेड सिस्टम्स आर टिपिकली इंटीग्रेटेड विद इन लार्जर डिवाइसेस और सिस्टम्स। ठीक है, अब इसके हम कॉमन एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं। तो इसकी डोमेस्टिक अप्लायंसेस है, वॉशिंग मशीन्स में लगे होते हैं, माइक्रोवेव ओवंस में और एयर कंडीशनर्स में, ऑफन कंटेन embedded systems to control their various automotive. Modern cars utilize embedded systems for functions such as engine management, transmission control, braking system, and infotainment. Security systems, alarm systems, surveillance cameras, and access control systems often rely on embedded systems. Lighting systems.
Smart lighting systems such as LED lighting controllers or automatic lighting systems use these. Vending machines आपने देखी ना, इसमें पैसे डालते हैं, चीजें निकालते हैं. Embedded systems in vending machines control the dispensing of the products. So in conclusion, understanding the purpose and characteristics of embedded system is essential for students to appreciate their crucial role in functioning of the various devices and systems. ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा टेक्स्ट भेजता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं. ऑलराइट जनाब, अगला पार्ट. इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. तो पहले हम इसके जरा क्वेश्चंस कर लेते हैं. कंप्यूटर आर्किटेक्चर के, उसके बाद जो है वो हम अपना सिस्टम बनाते हैं. कंप्यूटर आर्किटेक्चर के पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं. अच्छा जी. Page has a computer that has a central processing unit based on the von Neumann architecture model for a computer system. Identify the component within the CPU that controls the flow of data. So that is your control unit. Identify the component within the CPU where calculations are carried out. So that is your ALU, arithmetic and logic unit. Identify the component within the CPU that stores the addresses of the next instruction to be processed, that is program counter. Identify the register within, all right. So this is component. Identify the component within the CPU that stores the address of the next instruction to be processed. So this is PC. Identify the register within the CPU that holds the instruction that has been fetched from the memory, that is MAR. Identify the register within the CPU that holds the instruction that has been fetched from the memory, that is MAR. Identify the register within the CPU that holds the data that has been fetched from the memory, that is MDR, memory data register. The CPU is responsible for processing instruction. One stage of processing instruction is the decode stage. So fetch, decode, and execute.
Identify the component of the CPU that is responsible for decoding instruction, that is CIRs. Identify three registers that may be used. A von Neumann architecture for a computer system has CPU that makes use of the registers. Program counter, MAR, MDR, CIR, accumulator. Okay. Arithmetic and logic unit is a part of CPU. Hard disk drive, not a part of CPU. Memory, MAR is part of CPU. RAM is not part. Oh, sorry. RAM is also part of the CPU. Solid state drive is not part of the CPU. Control unit is the part of CPU. Okay. RAM, I told you that it is, though it is outside the microprocessor, but it is still part of the CPU. All right. Vanessa writes a paragraph as an answer to an examination question about the central processing unit. Use the list. Okay. The CPU processes dash and dash. All right. Data and instruction. An instruction is data and instructions. An instruction is dash from dash into the CPU where it is then. An instruction is fetched from RAM into the CPU where it is then fetched, decoded. Once this has been taken place, the instruction is then executed. Now there is a new thing called IAS. IAS means that the data and instruction that has been fetched is in the memory. IAS where they are waiting to be executed. So whenever the word IAS shows up, it means that the memory where instructions are waiting to be executed. Okay. So this is called IAS. The central processing unit dash the data and instruction needed fetch. Fetch is the data and instructions needed and store them in IAS to wait to be processed. The dash holds the address of the next instruction, PC. This address is sent to MAR. The data from this address is sent to MDR. Any calculation that carried out on the data are done by the ALU. Any calculation that are carried out by the data, MDR, the instruction is then decoded and executed, sorry. Any calculation that are carried out on the data are done by the ALU. During calculation, the data is temporarily held in register called accumulator. Okay, so this is 8 marks question. This is basically very important question. Holds the data and instruction when they are loaded from the main memory and waiting to be processed. IAS holds the data temporarily that is currently being used in a calculation.
temporarily. All right, so it is not clear. How holds data or instruction temporarily when they are being processed? Okay, so that is registers. Manages the flow of the data and interactions between the components, that is control unit. Carries out the calculation on the data, ALU. Pathway for transferring, ये देखें buses. इसका मतलब क्या हुआ कि hold the data temporarily that is currently being used in calculation, it is actually accumulator. Okay, so whenever you get confused, these wordings were not very clear, so I just left it. Ultimately, I came to know what is the answer. So that's it. I have sent it. एम्बेडेड सिस्टम बेटे इसी साल आया, इसलिए इसके सवाल हमारे पास पास पेपर्स में नहीं है. अच्छा, एक नई इंफॉर्मेशन अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ये है कि आपको इन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की जो है ना वो फंक्शनिंग नहीं पढ़नी. ठीक है, आपको सिर्फ इनका यूज, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ने. ठीक है. सो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इज बेसिकली बारकोड स्कैनर. बारकोड जो होती है किसी भी डिवाइस के, उसके ऊपर होता है. इसका फायदा क्या है? यू डोंट हैव टू एंटर लॉन्गर नंबर्स. वहां पर इस्तेमाल होते हैं ज्यादातर जहां पे हमें डेटा को यूज करना होता है फॉर सेल्स पर्पसेस एंड फॉर स्टॉक पर्पसेस. डिजिटल कैमराज आर सेल फोन कैमराज एंड DSLRs. दे आर हैंडी डिवाइसेस. दे आर यूज्ड whenever they are like to be. एंड सेल फोन्स में इसके काफ़ी हैंडी यूज़ हो गया है. और हम जो है वो वहीं के वहीं पिक्चर को देख के अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं. We don't have to develop pictures because mostly digital cameras are equipped with the screens as well. So keyboard is a device that we use to input data to the system so that the system could process it. Microphone is a device that we use to communicate over people like you. At the moment, I am using my microphone to communicate to you people. Optical mouse is basically the mouse that is making use of laser to help you. So the laser, it reflects laser on the screen, and when it gets back, there is a little camera inside the mouse that determines, that basically takes the picture and then passes it on to the microcontroller inside the mouse to determine that what is the change. QR scanner is basically, it is nothing but our camera over the cell phone mostly. It helps to identify the product and promotions and advertisements for that product. I'm deliberately not discussing what is happening inside these. So what we need to do is we need to understand all these devices so that whatever the scenario that pops up, we could relate these devices to those. Touch screens, there are three types of resistive, capacitive, and infrared. In resistive touch screen, there are two screens used, the two plastic screens used with insulators in between. When we press on the top screen, it presses the insulator and touches the screen underneath it. That completes the circuit, and system finds out where the connection was made, actually where you have pressed it. So capacitive, there is a electrostatic current layer on the top of the screen, and there are sensors at the corner of the screen. When you basically put your finger on the screen, your finger starts, since it does not have any charge, it starts drawing the current from the screen that disrupts the electromagnetic field, and sensors then find out that where you have touched. In resistive, you cannot make a multi-touch, but in capacitive, you can make the multi-touch. Capacitive is very durable. It can be used in sunlight.
whereas infrared is neither durable nor it can be used in the sunlight. And then comes resistive. Then comes infrared. Infrared has got an array of infrared transmitters and receivers on top of the screen. This is impractical type, so the only use of the infrared is now limited to the factories and commercial manufacturing and all. 2D and three-dimensional scanners. 2D scanners are those which we know already. We can even use our camera to scan any document. So photostat machine जैसे होती है ना, उसके ऊपर आप जो document रख के scan करते हैं वो 2D scanner होता है. 3D scanner is rather a different type of machine that you have to actually pick and roam around the object so that you could read the object not in just x and y axis but in z axis to know the depth of it. Then comes actuator. Actuator is the part of the system that brings the changes. AC है, AC के अंदर जो हमारा compressor है वो actuator है. अगर गाड़ी है उसमें automatically brake लग रहे हैं तो वो जो brake है वो actuator है. इसी तरीके से अगर आप किसी टैप के पास अपना हाथ ला रहे हैं, उसमें सेंसर है, उसमें से पानी निकलने लगा तो उसको हम कहेंगे कि भाई वो जो उसके अंदर वाल्व लगा है वो एक्चुएटर है. सो एक्चुएटर इज बेसिकली द part of the machine at the end that requires a signal from the processor and electric current to bring the change in the environment. DLP projectors. DLP projectors are basically projectors which have a certain very special type of the chip called micro mirror chip. There are millions of micro mirrors, actual mirrors on top of that chip, and that chip is able to move each and every of those million number of mirrors to make a screen on the wall. And that mirror is so tiny toony that it reflects one single pixel. Inkjet printer. There are two types of inkjet printer. There is thermal one, and this is piezoelectric one. Thermal one uses thermal method to drop the ink from the nozzle on the paper, whereas piezoelectric makes use of a prism. Laser printer makes use of drum. Inkjet printer only prints a single line at a time, whereas laser printer can print the whole paper in a time. LED screen are those screens which are having small light emitters in the back. These LEDs are having a brighter and sharper picture than original LCDs. LEDs do not get heated up as their source is very thin and cold one, the light source I'm talking about. जबकि LCD जो है, LCD के अंदर पीछे कैथोड रे पूरी की पूरी जो है ना ट्यूब लाइट टाइप से वो होती है, लाइट होती है, फ्लोरेसेंट लाइट होती है, और due to that thick light the screen is thick, it is heavy, the screen is heated and all. ठीक है. अच्छा, जो प्रोजेक्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के ऊपर बेस करके काम करते हैं उनको हम कहते हैं एलसीडी प्रोजेक्टर. इनके अंदर एक बहुत बड़ा मिरर होता है. एलसीडी प्रोजेक्टर भी एलसीडी स्क्रीन की तरह काम करता है, बस वो मिरर पे रिफ्लेक्ट करता है और मिरर से एक सिंगल बड़ा मिरर होता है, उससे दीवार पे रिफ्लेक्ट होता है. स्पीकर इज बेसिकली अ डिवाइस विद अ कॉइल एंड अ कोन at the front, so whatever the current that is being produced from the computer, when it reaches to the speaker, because of the presence of coil and magnet, it is the cone starts hitting the air particles and it generates the same effect as when we talk. 3D printer. 3D printer is a printer that is basically printing anything in the form of 3D object. All right, so you can print parts of anything, you can print a model of anything. So these 3D printers works that way. All right, sensors. Acoustic sensor basically senses voice. Accelerometer senses speed, movement. Flow is basically a sensor for the water or liquid that
basically senses if there is water or liquid in the line. Gas sensor basically is the sensor that senses if there is any gas, mainly used for fire alarm. Humidity sensor finds out that what is the amount of water in the air. Infrared sensors are basically used to see check speed of the cars and presence of someone. Level is basically again related to liquid. It tells that what is the height of the liquid in a container. Light sensors senses the light in the environment. Magnetic field sensors are those which basically sense the magnetic field, and they are used with the car. Wherever there is a rotation mechanism, there is magnetic field. So these magnetic field sensors uh, check the intensity of the magnetic field around something. The most common use around us is gyroscope or gyroscope inside your phones to find the direction, that is for magnetic field, and in the car in the form of a EBD, electronic brake distribution, and ABS, automatic braking systems. Moisture, basically humidity finds out the amount of water in the air. Moisture finds out the amount of water on any surface. pH sensor basically finds out power of hydrogen means alkaline hai, acidic hai, kya hai. Pressure sensor is basically a device that is used to find out the weight of anything, the pressure of anything, mostly used in scales at grocery stores or weighing scales at our home. Proximity sensors finds out that how close the body or the object is from another one. Temperature sensors are there to find the temperature. They are used in AC and cars and whatever. Identify the type of data captured by each sensor, understand when each sensor would be used, including selecting most suitable sensors for a given context. So input and output devices are very common. I'm just skipping it after discussion, not to waste a lot of time. Then comes data storage, RAM and ROM thing. Okay, so मेरे पास जितना भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सेंसर से रिलेटेड डेटा था, वो मैंने जो है वो आपको फॉरवर्ड कर दिया है। अब हम आ जाते हैं बेसिकली मेमोरीज के ऊपर। हमारे पास जो मेमोरीज होती हैं वो होती हैं दो किस्म की, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है,
थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। तो वहां पर की टर्म्स एंड लोड का मतलब है आप हार्ड डिस्क से या कहीं से भी डेटा जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी में लेके आ रहे हैं, क्योंकि रूल ये है कि until unless the data is in computer's memory, the processor cannot see this. So you have to bring it to the RAM. Since RAM is the part of the microprocessor, ठीक है, so you have to bring it to the RAM to bring it to the knowledge of computer. So bringing the data to the computer is called load. If you are bringing the data from another computer's memory to your computer memory, it is download, and if you are taking it back to other computer, it is upload. Cache, we have already discussed that cache is the RAM inside the microprocessor. Online means whenever the storage is required, processor can get hold of it. It is available to the processor. It is online. And offline when you take out the device and the connection is down, so processor cannot access the data. It is called offline. Now, memory and storage devices are divided into three parts: primary, secondary, and offline. Okay. Primary, secondary, and offline. So now, primary means what? Primary means either RAM or ROM. We call primary because it can be accessed by the microprocessor directly. So if a memory can be accessed by the microprocessor directly, it is said to be primary memory. Okay? There are two types of primary memories inside the microprocessor and ROM. Sorry, RAM and ROM. So RAM is basically outside the microprocessor, but it is considered as the part of the microprocessor. RAM is volatile. Volatile means any device that can only hold on data until unless there is power supply. Once the power supply is depleted or it is finished, the data is lost. On the other hand, read-only memory ROM is pakki wali memory. It is non-volatile. It can hold on the data even if the computer or
switched off or the power is gone. RAM holds a part of the operating system which is running the system, current programs and their data, whereas ROM holds bootstrap loader. This is called firmware. Firmware are those software which are inside the chips. Chips work on it. So there are bootstrap loader and BIOS inside the ROM. RAM helps system to run. ROM helps system to boot up. Boot up. So here, RAM can be altered, ROM cannot be altered. RAM is larger, ROM is smaller. RAM can be changed, ROM cannot be changed. Now there are two types of RAM, outside the microprocessor, inside the microprocessor. The RAM that is outside the microprocessor is called DRAM. The RAM that is inside the microprocessor is called SRAM or static RAM, and the cache that I have just described is basically the SRAM. DRAM, or the RAM that we know of, the scale type RAM is basically the RAM which is made up of capacitors. So capacitors cannot hold on memory for long, or the data or current. Capacitors are devices which actually hold the data for temporary purposes, and then eventually the data or the whatever storage or current or voltage that is held inside the capacitor is lost. So in order to make sure that the data is not lost since capacitor loses it, there are extra mechanism functions that basically before the data gets lost or is basically dropped by the capacitor, it is read and pushed back into the capacitor. So the data is keep refreshing. इससे पहले ये निकल जाए data process, उसमें से capacitors में उसको दोबारा capacitor में push कर दिया जाता है. So this is called refreshing. So since the data is being refreshed again and again and again and again, so it is called dynamic. On the other hand, the SRAM is made up of flip-flop circuits. Flip-flop circuits do not lose on data. They are volatile, but they do not lose on data. So there is no refreshing mechanism. That gives it two edges. One, it does not require refresh, so it utilizes less memory. Two, it is inside the microprocessor. It is serving the processor to act fast. All right, but DRAM is cheaper and SRAM is way expensive. Since it does not have any refreshing nature, it is called static. Now, other two parts, secondary and offline. Why do we call secondary storage secondary storage? Because secondary storage is basically the one that processor cannot access directly. Since processor cannot access it directly, it is said to be secondary. So you have to bring the data from the secondary storage into the primary memory. So there are two secondary storages, are those which are inside the chassis of the computer. Means if you are carrying your laptop, you are actually carrying your HDD and SSD inside it. So secondary are those which are fixed inside the body of the computer. So whenever computer boots up, they are there. And then comes another type of secondary storage devices called offline. Offline devices basically are those that you can attach to the system and then you can detach from the system. Okay. So there are portable hard drives and SSDs, there are flash drive, there are optical devices, CD, DVD, Blu-ray and all. So basically, then we have got what? Storage devices, which are basically secondary storages. Secondary storages in your syllabus are those which are fixed inside the inside the laptop. तो अब देखें यहाँ पर क्या है हमारे पास, जो है वो पहले हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क है. मैग्नेटिक हार्ड डिस्क में प्लेटर्स होते हैं, प्लेटर्स को हेड्स ऊपर और नीचे से पड़ रहे होते हैं.
Heads are so close to the platter that human hair is bigger than that, thicker than that, and this is the dust particle. So basically, magnetic hard disk or hard disk drive HDD has moving parts. It is mechanical. It has a short life. Whatever that moves would deteriorate eventually. Faster the platter moves. Platter is basically the thing over which the data is written. It's like plate. So faster the platter evolves, faster the data is accessed, only starts working once the decided RPM, revolutions per minute, reached. It is cheaper though. Electronically, this is called solid state drive. Unlike hard disk drive, there are no moving parts in it. That is why we call it what? Solid state drive. The data is being sent and retrieved using electricity current and digitally directly into the transistors. Those transistors are either made up of NAND gate or NOR gate. So if they are made up of NAND gate, these storages are called flash drives, and if they are with non-gates, NOR gate, then it is not. So flash drives are SD cards and XD cards. And in NAND gate flash drives, a single bit cannot be changed. In order to change the single bit, you would have to read the whole data into the computer's memory and then change and write the whole block back to the NAND. Because of this unnecessary reading and writing of the bits which are not required to be updated, the life of the NAND, if you compare it with the NOR, is less. Whereas NOR has got a longer life, not just longer life, all the hard disks, which are the bigger one, the SSD is bigger one, not flash, and all are made up of NOR gates. So it is made up of transistors. Transistors hold on the voltage thinner than HDD. It has larger lifespan since data is stored electronically. Data access is faster. Faster than what? Your basically hard disk drive. Then comes optical drives. Hold on for a moment. Okay, then comes optical drives. Optical drives have got tracks on them, which are rill pool tracks. They started from inside center and then they go out. And in between these tracks, the data is written. So they have got pits. Pits are the dents on the surface and the land area. Pits means 1 and land area means 0. A red laser is used for CD and DVD. DVD has got double layer and CD has got single layer. Blu-ray uses a thin laser that is so thin that it changes its colors to violet, and that is why it is called Blu-ray. All right. So Blu-ray saves the most data, CD saves the least data. DVD is dual layer. So it's like CD stores 699 MB of the data, DVD stores around 4 GB of the data, and Blu-ray around 440 GB of the data. Okay. So these are optical drives. Optical drive means those drives which make use of laser. Okay. So now this is what we have just studied.
NAND and all. Describe what is meant by virtual memory and how it is created and used. Okay, so virtual memory. वर्चुअल मेमोरीज में पेजेस इस्तेमाल होते हैं. पेजेस क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं. अभी जो स्पेसिमेन पेपर आया उसमें इसका क्वेश्चन भी है. Virtual memory is a memory management technique that enables computers to execute programs and manipulate data that exceeds its available physical RAM capacity. This explanation will tell you about its creation and usage and the reason. So first, let's talk about the concept of virtual memory. Virtual memory is an abstraction layer that separates the physical memory from the logical memory provided by the operating. What does it mean? You see, you have got a limited RAM capacity. तो जब आपके पास RAM के अंदर वो capacity full हो जाती है तो system क्या करता है कि जो डेटा आइडल है, आइडल का मतलब है जो डेटा आप बहुत देर से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो प्रोग्राम आप बहुत देर से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको वो हार्ड डिस्क में रख देता है. सो आपके लिए क्या होता है कि फिजिकल मेमोरी में ही वो लोड हुआ है, लेकिन वो बेसिकली लॉजिकल मेमोरी हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ होता है. जो हार्ड डिस्क में जिस जगह पर उस डेटा को रखा जाता है उसको हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी. अच्छा, अब ये जो डेटा है ना, ये मेमोरी के अंदर मेंटेन हो रहा होता है चंक्स में. जिस तरह इंटरनेट के ऊपर डेटा ट्रांसफर के पैकेट्स होते हैं, इसी तरीके से हार्ड डिस्क में जब डेटा रखा जाता है या रैम में डेटा रखा जाता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो पेजेस की फॉर्म में रखा जाता है. सो virtual memory is an abstraction. Abstraction means something that is basically so simple that we are not paying any attention so to what is beneath it. Okay, so we are only looking at the surface of it. So it separates physical memory RAM from the logical memory perceived by the operating system and application. It creates an illusion of larger memory space by using combination of RAM and disk space, allowing program to access more memory than physical available on the system. Virtual memory relies on the process called paging, which involves dividing the memory into fixed size block called pages. The operating system maintains a mapping between virtual memory and physical addresses, which enables the transparent management of the memory resources. So it is all because of the operating system. So ये mainly जो use होता है ना, ये Windows operating system में होता है. Creating virtual memory involves reserving a portion of the computer's storage device, such as hard disk or SSD, as a swap or paging file. This reserves the space, acts as in the extension of the RAM. When the program requests more memory than the available physical memory, the operating system uses the paging file to store less frequently accessed or less critical data, freeing up space in the RAM for the new data. This is called paging out or swapping out. When the program later needs to swap out data, the operating system retrieves it from the paging file and loads back into the RAM, potentially swapping out the other data in the process. This is called paging in and swapping in. So what are the necessity? What are the things which is basically requiring the virtual memory as a necessity? So virtual memory is a necessity for several reasons. Efficient memory utilization, large program execution, isolation and protection. Isolation and protection means virtual memory provides a level of isolation between the processes by allocating separate memory spaces for each process. All right. Simplified memory management. Virtual memory simplifies the memory management for the operating system and programmers. So the concept of virtual memory, how it is created and used, and why it is necessary for essential for us to study and related fields. Virtual memory plays a vital role in computer systems, enabling efficient memory utilization, facilitating the execution of larger program, and providing isolation and protection between the processes. So virtual memory is basically an additional memory which is required by the system
in order to load more program than the capacity. Okay, now cloud storages. All right, cloud storage. So cloud storage can be accessed remotely in comparison to storing data locally. Physical servers and storages are needed to store data in the cloud. And then we have to have this explain the stages and the advantages and disadvantages of the cloud. अच्छा जी, देखिए अब क्लाउड क्या होता है, ये जिस तरह आपकी हार्ड डिस्क पे हम सबको पता है इन चीजों के बारे में ना, हमें से उसकी वर्डिंग्स पकड़नी है. सो cloud storage and local storages are two common methods for storing and maintaining data. Understanding the difference between these options along with their respective advantages and disadvantages, let's discuss. All right, so cloud storage refers to the practice of storing data on remote servers, which can be accessed via the internet. These servers are maintained and managed by cloud सर्विसेज प्रोवाइडर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव है या गूगल का जी ड्राइव है या ड्रॉप बॉक्स है, ये सारे के सारे अपने अपने इनके जो बनाने वाले हैं वो उनको वो करते हैं, मेंटेन करते हैं. यूजर कैन स्टोर एंड रिट्रीव देयर डेटा फ्रॉम एनी डिवाइस with internet access without the need of physical storage device. अब आपके पास सेल फोन है, आपके पास जो है वो टैब है, आपके पास कंप्यूटर है, आप किसी से भी कर सकते हैं. सो एडवांटेजेस बहुत बनते हैं. एक्सेसिबिलिटी, क्लाउड स्टोरेज allows user to access their data from any location and any device, making it highly convenient and flexible. Scalability का मतलब है कि जितना साइज बड़ा होता चला जाता है उतना अकोमोडेट कर सकते हैं आप. क्लाउड स्टोरेज कैन इजिली बी एक्सपेंडेड और रिड्यूस्ड एज नीडेड. ठीक है ना, आपको ज्यादा चाहिए आप ज्यादा ले लें, आपको कम चाहिए आप पैसे कम कर दें, वो कम कर देंगे. Backup and recovery, cloud storage provides often offer built-in backup and recovery options. तो आपको कोई परेशानी नहीं है, आप अपने कंप्यूटर की क्लाउड पे भी बैकअप ले सकते हैं और क्लाउड पे रखे हुए डेटा की भी कहीं ना कहीं बैकअप ले सकते हैं. सो दिस इज बेसिकली वेरी गुड. So cost saving, cloud storage can save on hardware and maintenance cost, and the responsibility of managing servers and storage lies with the cloud service provider. अब इसके ये तो हो गए फायदे. क्या क्या फायदे मैंने आपको बताया. सबसे पहले बताया था स्केलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, बैकअप रिकवरी एंड कॉस्ट सेविंग्स. अब आ जाए आप डिसएडवांटेज. डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट, जब तक इंटरनेट होगा तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा. फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं, ऑल्दो मैंने कभी सुना तो नहीं लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं. स्टोरिंग सेंसिटिव डेटा ऑन रिमोट सर्वर्स कैन बी सिक्योरिटी रिस्क. प्राइवेसी इश्यूज भी हो सकते हैं. क्लाउड स्टोरेज में रेज प्राइवेसी कंसर्न्स as the data is stored on the shared servers may be subject to access by third party. आपका डेटा कोई और भी देख सकता है. और ongoing cost. So although cloud storage can save on hardware cost, ongoing subscription fee may add up or change over the time. तो फिर आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे. अब आपके पास लोकल स्टोरेज है. लोकल स्टोरेज आपकी हार्ड डिस्क है, यूएसबी है, सीडी वगैरह है, इसमें आपको ऐसे कोई भी इश्यूज नहीं होते. ये सिक्योर भी है, आपके पास भी है. बढ़ाना है तो बढ़ा लें, लगाना है तो लगाए, निकालना है तो निकाल लें और रख लें. सही है. तो ये हो गई आपकी क्लाउड. क्लाउड क्या होती है. क्लाउड बेसिकली ऐसी स्टोरेज होती है जो सर्वर्स के ऊपर रखी हुई होती है, जिनको आप यूजर नेम पासवर्ड डाल के वेबसाइट की मदद से जो है वो देख लेते हैं. जी जी, व्हाट्सएप पे भी यही होता है. व्हाट्सएप में भी जो है वो क्लाउड ही होता है. ये जहां पर भी डाटा आपके कंप्यूटर से निकल के सर्वर पे जा रहा है वो और वहां पे वो मेंटेन कर रहा है, उसको हम कहते हैं क्लाउड.
अच्छा जी, ये पार्ट भी खत्म हो गया। अब आ गई नेटवर्क की हार्डवेयर। अब ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है। 3.4 का पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। नेटवर्क हार्डवेयर इसका नाम है। अच्छा, अब देखिए नेटवर्क की हार्डवेयर का क्या मतलब है। जब आप अपने कंप्यूटर से एक्सेस करते हैं डाटा, तो आपके कंप्यूटर के अंदर आपके पास जो तार लगती है, या आपके पास ब्लूटूथ होती है या वाईफाई होती है, ये जिन डिवाइसेस के जरिए चलती है उनको हम कहते हैं नेटवर्क की हार्डवेयर। ठीक है, ये चैप्टर पूरा हो जाए फिर इसके पास पेपर्स देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले होता है नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड। ये हमारा कंप्यूटर यूज करता है नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। इस कार्ड को हम मैक भी बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अच्छा जी, तो अब आ जाए जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसको जरा हमें ना पढ़ के डिस्कस करना पड़ेगा, ये हम ऐसे वर्ड्स में नहीं कर सकते, हम इसको देखना पड़ेगा। देखिए, नेटवर्क हार्डवेयर, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोलर, आईपी एड्रेस एंड राउटर्स। तो इंट्रोडक्शन क्या है। Networking plays a vital role in modern computing, enabling computers to communicate with each other and share resources. In this lecture, we will discuss essential network hardware components such as NICs, media access control addresses, internet protocol addresses, and routers. Understanding these components is crucial for students learning about computer networks and their functionality. सबसे पहले हम लेते हैं network interfacing card. A network interfacing card is a hardware component that allows a computer to connect to a network. The NIC serves as the interface between the computer and network, cable और wireless connection. ठीक है ना, तो आपके पास अगर क्या नाम है वाईफाई है तो उसके लिए आपको अलग चाहिए, ब्लूटूथ है उसके लिए अलग चाहिए, अगर आपके पास कोई तार वाला नेटवर्क है तो उसके लिए आपको अलग चाहिए। NICs are either integrated into the motherboard or installed separate expansion card depending on the computer design. सही है। अच्छा, मैक। A MAC address is a unique identifier assigned to NIC at the point of manufacture. This 48 bits address usually represented in hexadecimal format consisting of two parts. The manufacturing code. ठीक है, the first three octets, 6 digits of the MAC address represents
सो ये जो पहले 6 डिजिट्स होते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग का कोड होता है, और जो बाकी के 6 डिजिट्स होते हैं वो उसका सीरियल का कोड होता है। ठीक है, तो लेट्स से अगर हम यहाँ पे लिखते हैं A328 1D। ठीक है, तो ये 2 2 4 2 6 क्या हो गए, ये हमारे हो गए फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स क्या हो गए, ये मैन्युफैक्चरिंग कोड हो गया। अब फिर हमारे पास 00A15C, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा सीरियल हो गया, ये सीरियल हो गया, और ये हमारा हो गया क्या, मैन्युफैक्चरर का। ठीक है, अच्छा अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आता है द पर्पस ऑफ मैक एड्रेस इज टू एंश्योर दैट ईच डिवाइस ऑन द नेटवर्क हैज अ यूनिक आइडेंटिफायर फैसिलिटेटिंग एक्यूरेट डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, अब आ गया हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस। An IP address is a numerical label assigned to device in a computer, enabling the identification of devices and facilitating communication between them. IP addresses can be static, permanently assigned, or dynamic, assigned temporarily by a network, usually via dynamic host configuration protocol server. There are two types of, ये जो है ना, ये सर्वर एक सॉफ्टवेयर होता है, ये जो ऑटोमेटिकली हमारे घरों में जो राउटर्स लगे हुए हैं उनके अंदर ये ऑटोमेटिक ही जो है वो असाइन करता है, आपने कभी भी कोई एफर्ट नहीं करी होगी, तो ये ऑटोमेटिकली असाइन ही करता है। तो जो जो सॉफ्टवेयर है उसको कहते हैं, ये इसके सॉफ्टवेयर का नाम आपको याद करना जरूरी नहीं है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस। आईपी वर्जन 4 एड्रेस 32 बिट एड्रेस टिपिकली रिटन एज 4 डेसिमल नंबर्स, इसको आपके सिलेबस में कहेंगे डेनरी। Denary numbers separated by periods 192, 168, 0.1. All right. So due to the limited number of available IP addresses, a new standard was developed to accommodate growing number of internet addresses. This is called IP version 6, IPv6. IPv6 addresses are 128-bit addresses. अब देखिए ये इतना छोटा सा होता है तो इसमें जगह ऑब्वियसली कम होती है, इसमें आप बहुत सारा नंबर नहीं दिखा सकते, ये दिस इज अ लार्जर वन। IP version 6 is basically represented in hexadecimal, और जो वर्जन 4 है वो डेनरी में हम दिखाते हैं। IP version 6 offers a vastly larger space for IP4, ensuring sufficient unique addresses for the expanding global networks. अब आ जाए राउटर्स के, राउटर्स क्या होते हैं। A router is a networking device that serves multiple roles. सबसे पहले तो डेटा राउट करता है, ये डेटा राउट करने का क्या मतलब है, routers are responsible for sending data packets to their specific destinations within a network. इस पे हमारी बात हुई थी अभी। They achieve this by examining the destination IP addresses of each packet and determining the best route for it, either within the local area network or over the internet. IP address assignment, ये दूसरा काम करता है। Routers can assign IP addresses to devices within a local network, usually through DHCP, Dynamic Host Control Protocol. This enables devices to join network and communicate with other devices. ये काम भी आपके घर वाला राउटर कर रहा होता है। फिर आ गया connecting local network to the internet. Routers acts as a gateway between the local network and the internet, enabling devices on the local network to access online resources. Connecting local devices to internet. अब आपके घर में जो भी सेल फोन होगा, टैब होगा, कंप्यूटर होगा, वो सारे के सारे जो होंगे वो इंटरनेट से अटैच होंगे, और ऑब्वियसली आपको पता है कि जो भी जिस कंपनी से भी आप PTCL से लें, स्टॉप फाइबर से लें या व्हाटएवर, वो आपको एक राउटर तो लगा के देते हैं, वो राउटर जो है वो फिर आपकी डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर देता है।
ठीक हो गया। अब जनाब आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया। अब हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया, अब जरा इसके पास पेपर्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो हम कर चुके थे। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टाइम जाया करेगा, उस पर हम आगे चलते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस पे कर लेते हैं, डेटा स्टोरेज पे। Right. Data storage can be magnetic, solid state, or whatever. No moving parts are used to store the data. This is solid state. This is called solid state. Pits and lands. This is optical. Data is stored on platter. This is magnetic. Flash memory is used. So this is solid state. Parts are rotated to store the data. Magnetic and optical. Data can be stored permanently. Magnetic, solid, and optical. सही है। Give one example of magnetic or storage. तो हमारे पास HDD है और floppy disk drive है। One example of optical, हमारे पास CD है, DVD है, and Blu-ray है। याद रखिए Blu-ray में E नहीं होता। अच्छा, identify which type of storage would be most suitable for the use in web server and justify your choice. Hard disk drive, क्योंकि SSDs are expensive. Hard disk drives are better as because of frequent use, they wear out and need to be changed. So to avoid higher expense, we use HDD. थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। सही हो गया। ये तो हार्ड डिस्क हम यूज करेंगे, क्योंकि सर्वर्स पे क्या होता है कि हार्ड डिस्क ज्यादा इस्तेमाल होती है ना, तो डिस्कें खराब होती हैं। जब डिस्कें ज्यादा इस्तेमाल होती हैं तो फिर SSD लगाना फजूल है। Alright, so what is meant by SSD, solid state drive, and how it operates? It uses transistors to store the data. There are no moving parts in it.
It has limited number of read-write cycles. That is basically hard disk drive. It uses magnetic properties. Hard disk drive, it has moving part. Hard disk drive, non-volatile storage, ये दोनों है. It can be used as an external storage device to back up the data, both. It uses flash memory, SSD. ठीक है? All right. Next part. Network hardware. All right, network hardware. Tammy connects the computer to her home network. The computer has MAC address and an IP address. Paragraph is given about MAC address and IP address. A MAC address is a media access control address. A network device has a -MAC address, unique, that can help dash the device in the network identify. An IP address is an internet protocol address. An IP address can be static or dynamic. All right, dynamic are those every time you get attached to the internet, they get changed. All right, Benedict computer is also assigned media access control. Identify the similarity between IP address and MAC address. Both are used, both are identifying devices. Identify two differences between IP address. IP address can be on local area network or internet. MAC is only on local network. IP address has a different format and things like that. So, आगे चलते हैं. Explain this IPv version 6 would be an invalid IP version 4. Why? This is not required, by the way. You don't have IP version 6 and 4 comparisons in your syllabus now.
but yes, this one is IP version 4 addresses are given. This is invalid because there is no H thing. Invalid address to 299. अच्छा, IP में क्या होता है? एक बाइट, फिर दूसरा बाइट, फिर तीसरा बाइट, फिर चौथा बाइट. तो एक बाइट में 0 से 255 तक आ सकता है. तो 299 भी इनवैलिड होगा. 192.2.1.0 1 2 3 4 दिस इज वैलिड वन. इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास. A program that allows user to view web pages, so that is browser. The main protocol that governs the transmission over the internet is HTTP. The website address that is typed into the address bar called URL. An address given to each device on a network, it is provided by the network. This is called IP address. And a unique address given to device on a network, it provides by the manufacturer, that is MAC address. A company that provides the whole thing, the internet. This is called ISP. So that's it. अब मैं आपको थोड़ा सा IP वर्जन 4 और 6 के बारे में पढ़ा दूं, जो उनकी फॉर्मेशन के ऊपर है, फॉर्मेशन के ऊपर. अच्छा देखिए, अब आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन इसकी बेसिक वर्किंग आपको पूरी पढ़नी है. IP addresses and network addresses translation. IP version 4 is basically public IP address का. इसमें ना दो किस्म के एड्रेसेस होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट. तो जो पब्लिक एड्रेसेस हैं वो इंटरनेट पे किसी को भी नजर आ जाते हैं. प्राइवेट जो है वो आपके इंटरनल होते हैं. ईच लैन कनेक्टेड टू इंटरनेट हैज अ सिंगल IP. दिस एड्रेस इज सीन बाय द अदर नेटवर्क्स और कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट. This IP address is attached to the packets sent across the internet. Public IP addresses are two types, static और dynamic. Means static का मतलब क्या है? जब भी आप कनेक्ट होंगे आपको सेम IP एड्रेस मिलेगा. डायनामिक का मतलब ये है कि जब आप अटैच होंगे तो आपका ISP आपको डिफरेंट IP एड्रेस देगा. प्राइवेट IP एड्रेसेस कंप्यूटर्स विद इन अ लोकल एरिया नेटवर्क. ये हमारे घर के अंदर वाले जो नेटवर्क्स होते हैं ना, जो हमारे सेल फोन का, टैब का, उसको हम कहते हैं प्राइवेट IP एड्रेसेस. This is different from the public IP address. The private IP address is either issued by the router, सही है, or your server, set by the computer or the user themselves. Private IP addresses are usually in 192.168 format. ठीक है, तो अब इसको ध्यान में रखिएगा. अब मैं IP वर्जन 4 की आपको फॉर्मेट करा दूं.
अब देखें आईपी वर्जन 4 जो होता है वो इस तरह होता है कि इसमें 4 बाइट्स होते हैं, इनके बीच में डॉट लगा होता है, लेकिन ये डॉट सेव नहीं होता। ठीक है, तो 1 बाइट का मतलब है कि आप इसमें 0 से 255 तक कोई भी नंबर रख सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा आप इसमें इससे बड़ा नंबर नहीं रख सकते। तो 192.128.168.3, तो ये जो है एक प्रॉपर नेम है। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे जिसमें आपको आपसे ये पूछा जाएगा कि सही है या गलत है, तो उसमें अगर ये 4 नहीं है या 255 से बड़ा नंबर है, तो फिर उस सूरत में जो है वो इसका मतलब है कि वो गलत होगा। इसको बहुत ध्यान से एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है, इसको जहन में रखिएगा। इनको ऑक्टेट बोलते हैं। दस मिनट का ब्रेक लेते हैं हम, ठीक है, अप टू 12:20।
चलो जी, आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 6 जो है वो डेनरी में नहीं बल्कि हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट होता है, और इसमें जो है वो 4 हेक्साडेसिमल के डिजिट्स यानी कि 2 बाइट्स के 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं हेक्सटेट, और इनमें कोलन लगता है, डॉट नहीं लगता। ठीक है, तो the full representation of 8 4 digits groups may be simplified by several techniques to eliminate group parts। इस पहले को हम कहते हैं जीरो कंप्रेशन। जीरो कंप्रेशन में ये होता है कि जो लीडिंग जीरोज हैं, जैसे यहाँ पे ये लीडिंग जीरो है, या ये सारे के सारे जीरोज हैं, ये लीडिंग जीरो है, ये सारे जीरोज हैं, ये सारे जीरोज हैं, ये लीडिंग जीरो, तो लीडिंग जीरो तो गायब कर देंगे और सारे जीरोज को एक सिंगल जीरो से कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे एक नंबर है, ये लीडिंग जीरो हमने खत्म कर दिया, और जो है वो ये जीरोज हो गए, और ये तीनों जीरोज को 1 कर दिया। अब जितने कंसेक्टिव जीरोज होंगे ना, सिर्फ जीरोज कंसेक्टिव होंगे। ये 0003A है, ये जीरो है। 0003A का मतलब हो गया कि आप जो इन 2 जीरोज को गायब कर दें, 3A रह जाएगा, और ये जो कंसेक्टिव है, ये 1 यहाँ पर आ गया। जो कंसेक्टिव जीरोज हैं इनको आप डबल कोलन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो largest sequence of consecutive all zero fields is replaced with double colons. If the address contains multiple runs of all zeros fields, then the leftmost is taken. ठीक हो गया। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर you need to understand कि सारे जीरोस को हम डबल कोलन से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर सारे जीरोस 2-3 जगह पे हो तो नहीं कर सकते, एक जगह पे कर सकते हैं। लीडिंग जीरोस हम खत्म कर देंगे तो अच्छा खासा हमारा बड़ा नंबर जो है वो छोटा हो जाएगा। ओके, so this is basically IP version 6. It has got 4 hexadecimal digit के odd groups. Okay, तकरीबन हमारे पास ये 128 बिट्स बनते हैं। अच्छा जी, अब आ जाएं आप नेक्स्ट पे। हाँ, बस सॉफ्टवेयर आ गया। ये इतना कोई मेजर इसमें वो नहीं है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली हमारे पास दो किस्म के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज वगैरह होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है वो सिस्टम हार्डवेयर चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम हार्डवेयर चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन जो काम करने के लिए आपको चाहिए, जैसे आपको टाइप करने के लिए चाहिए, आपको एक्सेल स्प्रेडशीट बनाने के लिए चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन, कोई गेम खेलना है, तो उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ ईच। System software provide the services that the computer requires, including operating system, utility software. Operating system में आप Windows लिख सकते हैं, Mac OS लिख सकते हैं, utilities में आप जो है वो disk formatter लिख सकते हैं, आप कैलेंडर और वो लिख सकते हैं, फॉर्मेटर और एंटीवायरस और ये सब कुछ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द सर्विसेज दैट द यूजर रिक्वायर्स। इसमें आप वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट लिख सकते हैं, गेम लिख सकते हैं। डिस्क्राइब द रोल एंड बेसिक फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो बेटा, अब इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इसकी हमें डेफिनेशंस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पता होना चाहिए। मैनेजिंग फाइल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें फाइल्स को डिस्क के ऊपर मेंटेन करने में मदद देता है। हैंडलिंग इंटरप्ट्स, अभी हम इंटरप्ट्स आगे चल के पढ़ेंगे। इंटरप्ट्स कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो होती है, जब उसको प्रोसेसर की अटेंशन की जरूरत होती है तो वो इंटरप्ट जनरेट करती है। तो उन इंटरप्ट्स को जनरेट करने वाले सिस्टम को कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोवाइड्स एन इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकें और कंप्यूटर आपसे इंटरेक्ट कर सके, उसके लिए जितनी भी नेसेसिटीज होती हैं सबको ही प्रोवाइड करता है। तो उसमें हमारे पास दो किस्म की हार्डवेयर इंटरफेस है। इसमें मॉनिटर है, स्क्रीन है, कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, कैमरा है, ये सारी
हार्डवेयर इंटरफेस है। और फिर ये जो सॉफ्टवेयर में आपको नजर आते हैं बटन्स आइकन्स, ये सारी सॉफ्टवेयर इंटरफेस है। मैनेजिंग पेरिफेरल डिवाइसेस एंड ड्राइवर्स, हर पेरिफेरल डिवाइस चाहे वो माइक हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, मॉनिटर हो, इन सब के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम कहते हैं ड्राइवर। तो ये सारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस वो सारी डिवाइसेस हैं जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो प्रोसेसर से बाहर है, और इसमें हार्ड डिस्क वगैरह सब आती है, रैम नहीं आती है। रैम तो पार्ट ऑफ द प्रोसेसर होता है, उनको और उनके ड्राइवर्स को मैनेज करता है। मैनेजिंग मेमोरी, मेमोरी में को मैनेज करने का मतलब ये है, अभी आपने वर्चुअल मेमोरी पढ़ा था मेरे साथ, उसमें पेजिंग वगैरह थी, तो वो सारी मैनेजिंग मेमोरी में आता है कि सिस्टम जो है सारे सॉफ्टवेयर को मेमोरी में लोड करता है और लोड करने के बाद उनको मेंटेन करता है। ठीक है, लोड करने के बाद उनको मेंटेन करता है कि वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाएं। मल्टीटास्किंग, 2 मिनट अभी रुकिएगा जरा। अच्छा, मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को एक साथ चलाना है, तो उसको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग हो रही है। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग भी आप कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म, अभी आपने देखा था, आपको याद है कि मल्टीपल कोर्स के साथ मल्टीपल टास्किंग, जो हमने जब कोर्स पढ़े थे चैप्टर 3 में, उस वक्त हमने इसको डिस्कस किया था। Provide a platform for running applications. So when everything is okay, you can load and run multiple applications. System security, username, password, encryption, antivirus, firewall, and other features which are required to secure the system, they all are provided by the operating system. Managing user accounts, if the computer is over the internet or a network where multiple accounts are required, तो यूजर अकाउंट्स मल्टीपल जो है वो हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। अब ये पूछेगा कि फीचर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, तो आपको इनमें से 2-4 लिखने होंगे। इनकी डेफिनेशन नहीं चाहिए, इनके नामों को याद रखना है आपको। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ये सारी की सारी थ्योरी है, इसको बस अब आप जो है वो मेरे साथ पढ़ते चले जाएं। अच्छा जी, अब देखिए आपके पास यहाँ पर 4.1 है। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखें टर्म्स आपके पास क्या क्या आ रही हैं फ्री में। हार्डवेयर, how hardware, firmware and operating system are required to run application software. Applications are running on operating system. Operating system is running on firmware and the bootloader firmware is run on the hardware. ठीक है, so इसको इस तरह देखें आप कि understanding the role of hardware, firmware and operating system in running the application software. To effectively run application software, a combination of hardware, firmware, and operating system is required. Each component plays a crucial role in enabling the computer to function correctly and execute software application. All right. So hardware. Hardware refers to the physical components of the computer
such as the CPU, memory, storage, input output devices. These components work together to process data and perform various tasks. Hardware provides the the foundation layer on which firmware, the operating system, and application software operate. So what is firmware? Firmware is basically the type of software that is stored on non-volatile memory, for example, ROM or flash memory, and it is responsible for low-level hardware control and initialization. One essential type of firmware is bootloader, which initializes the hardware components and starts the operating system. Firmware is critical because it serves as the bridge between the hardware and operating system, ensuring that the hardware is correctly initialized and ready to support the operating system. Second comes operating system. All right. So operating system is a software layer that manages hardware resources and provides an interface for application software to interact with the hardware. The operating system handles tasks such as memory management, process scheduling, file management, etc. The operating system allows application software to run without needing to directly control or manage the hardware. Okay. Then comes application software. Application software comprises programs designed to perform specific tasks or functions for the user, such as word processor, web browser, or video editing software. Applications rely on operating system to access hardware resources and perform their intended functions. So now the relationship between hardware, firmware, and operating system. To summarize, the process of running application software involves the following. The hardware powers on and the bootloader initializes the hardware component. Bootloader is a firmware. It is found in ROM. The bootloader loads the operating system into memory and transfers the control to operating system. Then the operating system manages hardware resources and provides a user-friendly environment for running the applications. Application software is executed on the operating system, which handles the interaction with the hardware. All right. So understanding the role of hardware, firmware, and operating system in running application software is essential for grasping how computers function. Okay. So this is basically not very simple. You would have to actually remember it properly. So yeah, understand hardware, firmware, and operating system. सही है, मैंने आपको भेज दिया। 255 से बड़ा नंबर इसलिए नहीं हो सकता कि बेटा एक बाइट में द लार्जेस्ट नंबर दैट यू कैन अकोमोडेट इज 255। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इंटरप्ट्स के ऊपर। ठीक है, इंटरप्ट्स यहाँ पे आ गए हम। इंटरप्ट्स क्या होते हैं? इंटरप्ट सिग्नल्स होते हैं। सिग्नल्स कैसे सिग्नल्स होते हैं? जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जनरेट करते हैं ताकि आप जो हैं वो आपको पता चल जाए या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाए कि कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो है उसकी जरूरत है। ठीक है, उसकी जरूरत है और वो जो है वो चलना चाह रहा है। प्रिंटर भी, स्कैनर भी, माइक्रोफोन भी, अपना माउस भी, कीबोर्ड, मॉनिटर, टच स्क्रीन, सब। ऑलराइट, ये सारे जो हैं इन सबको जरूरत होती है। ऑलराइट, अच्छा जी। Understanding the role and operation of interrupts. Interrupts play a crucial role in efficient operation of the computer system by allowing the processor to respond to specific events or conditions that require immediate attention. How an interrupt is generated? An interrupt can be generated by both hardware and software.
Hardware interrupts are triggered by external devices such as keyboard or mouse, while software interrupts are generated by the software or the operating system itself, often in response to an error or exception handling. Examples of interrupt sources include hardware interrupts, pressing a key on the keyboard, moving the mouse, or receiving data from a network card. Software interrupts, when division by zero occurs, two processes trying to access the same memory location, or system call initialized by an application. So in that case, software interrupts occur. How interrupts are handled using an interrupt service routine. अब इसको आपको समझना है. When an interrupt occurs, the processor temporarily suspends its current task and jumps to a predefined location in memory. सही है? When an interrupt occurs, the processor temporarily suspends its current task and jumps to the predefined location in the memory where the corresponding ISPR is stored. Interrupt service routine, ISR, is stored. See? So ISR is a special piece of code that handles the specific event or condition that caused the interrupt. The general steps for handling an interrupt are: save the current processor state, including register and program counter and RAM. Determine the source of the interrupt and jump to that corresponding ISR, interrupt service routine. Execute the ISR, which processes the interrupt and takes the necessary action. Stores the saved processor state, restore the saved processor state, and resume the executing of the interrupted task. सही है. So जैसे इंटरप्ट जनरेट हुआ, फौरन सारी दूसरी इंटरप्ट बंद हो गई. ऑपरेटिंग सिस्टम ने आईएसआर को लोड किया, आईएसआर आया, आईएसआर ने उससे रिलेटेड इंटरप्ट से जो भी काम है वो किया. उसके बाद पुराना प्रोग्राम जो इंटरप्ट हुआ था उसको रिस्टोर किया और वहां से आगे काम करना शुरू हो गया. Interrupts allow the processor to quickly respond to event or condition that require immediate attention, improving the overall efficiency and responsiveness of the system. सही है. As a result of interrupt, the processor can handle external events, for example, user inputs or incoming data in timely manner. The operating system can manage system resources more effectively and enforce process isolation. The system can detect and handle exceptional conditions such as errors or resources conflicts. So, understanding the role and operation of the interrupt is essential for understanding of the operating system working. ठीक हो गया? ये है आपका पूरे का पूरा how interrupts are handled by the operating system. Okay, now types of programming languages, translators, and all. So types of programming languages.
होल्ड कीजिएगा अभी जरा। अच्छा, अब देखें हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। तो हमारे पास दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल और लो लेवल। हाई लेवल लैंग्वेजेस के जो ट्रांसलेटर्स हैं वो दो हैं, कंपाइलर और इंटरप्टर। और लो लेवल लैंग्वेजेस के जो ट्रांसलेटर हैं वो हैं असेंबलर। ट्रांसलेटर की जरूरत इसलिए पेश आती है कि जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वो हम हमेशा वो प्रोग्राम जो है वो ऐसी जबान में लिखते हैं जो कंप्यूटर के लिए नहीं होती है, हम ह्यूमंस के लिए होती है। तो वी नीड टू कन्वर्ट दैट टू बाइनरी फॉर्म। सो कंपाइलर इंटरप्टर होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के, और ट्रांसलेटर्स होते हैं असेंबलर लो लेवल लैंग्वेज के। कंपाइलर जो है वो
पूरी फाइल को पढ़ के उससे एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है जो कि इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट होने से मुराद है उसको भी ज़रूरत नहीं होती है उसको किसी और सपोर्ट के साथ चले। ऐसा ही काम ट्रांसलेटर असेंबलर के लिए भी करता है, वो फाइल एग्जीक्यूटेबल हो जाती है। जबकि इंटरप्रेटर जो है वो इम्यूलेटर होता है, वो एक एक लाइन को पढ़ता है, खुद ही एग्जीक्यूट करता है और वो प्रोसेसर पे नहीं चलती। तो जो सिस्टम है वो इस तरह का है कि सोर्स कोड को आपको मशीन कोड में कन्वर्ट करना है और उसके बाद जो है वो मशीन कोड की ये शक्ल आ जाएगी जो कि प्रोसेसर चला सकता है। अब आपका लो लेवल लैंग्वेज है तो आपको पता है वो ऑप कोड और ऑपरेंड्स इसके साथ चलती है। तो लो लेवल लैंग्वेज का कोड इस तरह होता है, इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना होता है। हाई लेवल लैंग्वेज का कोड इस तरह होता है, इसको भी मशीन कोड में कन्वर्ट करना होता है। ये क्यों मशीन कोड में कन्वर्ट करना होता है? उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके पास जो प्रोसेसर है उसको एग्जीक्यूट कर सके। सो लो लेवल लैंग्वेज जो है दे आर कॉल्ड असेंबली लैंग्वेजेस, देयर ट्रांसलेटर्स आर असेंबलर्स। लो लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट, मींस जो भी आप लो लेवल लैंग्वेज में काम करेंगे वो जिस प्रोसेसर के लिए बनाएगा सिर्फ उसी तरह के प्रोसेसर पे वो चलेगा, वो हर प्रोसेसर पे उसका कोड जनरेटेड नहीं चलता। सो एवरी प्रोसेसर हैज इट्स ओन असेंबली लैंग्वेज। तो अब मैं उसी प्रोसेसर की असेंबली लैंग्वेज जिसके लिए आपको कोड जनरेट करना है इस्तेमाल करके ही बनाना पड़ेगा। असेंबली लैंग्वेज कमांड्स इंस्ट्रक्शंस आर सिंपल एंड कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर। ठीक है, दे आर द मोस्ट छोटा छोटा कमांड्स, दे कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन। असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड नेमोनिक्स। अब ये जो ये LDD ADDSTO लिखा हुआ है, दीज आर बेसिकली नेमोनिक्स। ओके, सो इनको नेमोनिक्स कहते हैं, इन कमांड्स को हम कहते हैं नेमोनिक्स, ऑपकोड या सूडो कमांड्स। तो नेमोनिक्स का वर्ड आपके सिलेबस में बार बार आता है, पास पेपर्स में भी कई बार आया है, तो उसको याद रखिएगा। देयर इज अ 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन एंड मशीन कोड। क्या इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक असेंबली लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शन है, जैसे ये LDD 40 लिखा है, इसकी एक मशीन कोड की कन्वर्जन हो जाएगी, एक असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन की एक मशीन कोड की कन्वर्जन हो जाएगी। तो दिस इज बेसिकली 1-to-1। जबकि हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या होता है, जैसे ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इसमें लिखा हुआ x = a +